Hey, hello everyone. Welcome to this stream. क्या हाल चाल? ये चार्ट क्यों नहीं आ रही? ओके, चार्ट नहीं आ रही. एक मिनट रुक जाओ. वो तुम लोग ये चार्ट नहीं दिख रही. All good. Welcome to the stream. Vipul, Spy by, Night Vice, Depressed by. Welcome to the stream. फर्स्ट सेकंड चांदी भाई, कैसा था दिन? बहुत थकान भरा भाई. नूब है चांदी भाई. अरे यार भूल गया था यार, मैं हो जाता है कभी कभी. आर्कॉन को इसने रुला दिया. नो स्पॉयलर्स गाइस, मैंने अभी नहीं किया है, मैं अभी करूंगा. डोंट कॉल मी विपुल, कॉल मी सेंसे. वेलकम टू द स्ट्रीम सेंसे. भाई गलती हो गई यार. क्या क्या मिला? फुरीना. अभी तक 5 फुरीना निकल चुकी है इस चैनल पे. अभी 6 एंड मे बी 7, मे बी 8. अभी और फुरीना निकालेंगे हम, फिर आर्कॉन को इसमें जंप मारेंगे सीधा. ओके, तो पहले तो ये एपिक म्यूजिक रोकते हैं. मन तो नहीं कर रहा पर रोक देते हैं भाई. तो अब हमें एक बहुत ही F2P आईडी में बंदे ने मतलब सुबह से लेके रात कर दिए ग्राइंड करने में आईडी. इसने सुबह से ग्राइंड किया, अब हम इसकी आईडी में पुल करेंगे. केडीपी की हेल्प. केडीपी कौन है? ओह, अभी मैं कोऑप में कैसे स्पॉन हुआ हूं? मैंने बस आईडी लॉगिन करके छोड़ दी. मैं अब देख रहा हूँ ये कोऑप में है. क्रेजी गेमर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हाल चाल? 30 पुल्स हैं, 0 पिटी. डैम, इतनी ज्यादा. हेल्प क्या करनी है वैसे मुझे? यहाँ तो कोई है ही नहीं. ब्रो आई डोंट सी हिम. ओके, मिल गया. कहाँ है बॉस? भाई मेरे 69 पिटी है. शाबाश. पुल कर मेरी आईडी. तुम्हारी आईडी में पुल करना है बंटी भाई. आईडी पासवर्ड भेज दो मुझे, और अगर तुमने भेज रखा है तो डिस्कॉर्ड में ना पिन कर दो उसको इनबॉक्स में. बाय द वे, डिड यू पुल फॉर फुरीना? यस क्रेजी भाई, सुबह की स्ट्रीम में पुल किया था.
40 पुल स्पाई भाई के पास है, क्या बात है। फ्री हुए तो मेरा आरटी चेक कर लेना आफ्टर पुल्स। ओके भाई। पिन क्या बता, तूने कुछ भेजा? ये ट्रेजर होल्डर को इतनी ताकत किससे दे दी भाई? भाई तुम पायरो अप्लाई करते रहो, बाकी मैं देख लूंगा। डायनामिक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। एनिमी का है? ओ नेवर माइंड, न्यूबलेट के साथ देखने की जरूरत नहीं है, बस स्पैम करो चार्ज अटैक। क्या क्या किया मैंने? ये सोल ही नहीं किया हाइड्रो। ऑफ कोर्स ये मारेगा, बहुत तेज मारेगा। लोकल लेजेंड है यहाँ का ये। ओ येलान मेरे आगे आगे थी ना, तो मैं देख नहीं पाया क्या हुआ, इसलिए मर गया मैं। ओ भाई ये क्या, ये बचपन में एक टीवी वीडियो गेम आता था भाई, उसमें ऐसे लड़ते थे, नाम भूल गया हूँ, स्ट्रीट फाइटर कुछ करके। उसका कैरेक्टर यहाँ निकाल लिया इन्होंने। चच्चा मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। तो मेरे पे ही टारगेट करे भाई 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 भाई, ना 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 ना। डीकॉय प्लान भाई, तुम डीकॉय बनो, हम मारेंगे। भाई केडीपी को मैं डीकॉय बनाऊंगा। आजा 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 आजा, बढ़िया, नाइस ट्राई। अब मर जा। रेस्ट इन पीस। यहाँ पानी, रेस्ट इन पानी। हम जीत गए, मजा आया भाई। आज भी नहीं देख रहा बतख, मैसेज नहीं दिख रहा क्या? अरे वो मैं लड़ रहा था तो मेरे यहाँ था। गाइस नो स्पॉयलर्स इन द चैट और यू विल गेट टाइम आउट एंड इफ द सेम एक्शन कंटिन्यूज परमानेंट बैन। रिप्लेस पिन। थैंक्स ब्रो, वेलकम। और क्या चल रहा है यहाँ पे? बाय द वे डिड यू पुल फॉर फुरीना? यस, सुबह किया था। फ्री हुए तो ये तो मैंने पढ़ लिया था यहाँ से। 40 पुल सेव किए हैं, नहीं मिली फुरीना। डैम, मिल जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है। क्या चला है चैट में? मेरा पुल करना है, ठीक है डायनेमिक भाई, आईडी पासवर्ड भेज दो। 2 10 पुल में पिट्टी आ जाएगी होपफुली। ओके, लकी जगह जा, वहां पे पुल कर विदाउट कोऑप। तुम मुझे कह रहे हो मुझे किक करना है कोऑप से? ठीक है भाई, देखो मैं करना नहीं चाहता था, सेंसे ने मुझे मजबूर कर दिया भाई, उसने लिखा है विदाउट कोऑप यार। डीमन वेलकम टू द स्ट्रीम एंड डीमन गॉड तो मे बी कॉन्ट्रा वाला, एग्जैक्टली कॉन्ट्रा वाला कैरेक्टर है। ड्रैगनिल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। बाय द वे कोई फुरीना के रीजनल स्पेशलिटी दे सकता? लकी जगह कौन सी लकी जगह? जहां पे मैंने पुल किया था, तेरे पास और कोई लकी जगह है? चाट पढ़, मेरे को जाना है। हाय बाय। बाय नेज़ुको, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। बाय द वे सेंस, अगर तुझे ऊपर आना है, वाईटी लाइव वीसी में बैठा हुआ हूं, इसको पुल देख कर जा। वो तो निकल गई होगी ओला में। ये बता नहीं रहा भाई लोकेशन। सुबह से 30+ लोग रिक्वेस्ट भेज चुके हैं फुरीना। मतलब तो मुझे बता दो, जब मैं आर्कॉन क्वेस्ट करूं मुझे वो कोऑप का ऑफ कर देना चाहिए। आवाज आ रही है। लाइक तेरे कोई भी अच्छी जगह है ना जहाँ पे तूने पुल किया हो, तो वहाँ पे पुल कर दे। मैंने वहां पुल किया था, वो ओपेरा। हाँ वहाँ पे चला जा। ठीक है, वहां पे एक ही बार में मिल गई यार। कर दिया है। ओके, तो पहले सेंसे का है, फिर स्पाई भाई का है, फिर बंटी भाई का है, मेरे पास फिर डायनामिक भाई का है। ज्यादा पुल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 या 3 पुल है। हाँ, इस बंदे ने सुबह से गेम ग्राइंड किए भाई। हाँ सुबह से ग्राइंड करके सिर्फ 3 पुल है। हाँ एस ब्रो, एस भाई वेलकम टू दिस स्ट्रीम। उसका फार्मिंग रूट दे रखा है, वो मांग रहे हैं क्या?
अच्छा रूट मांग रहा था तू, वो तो डिस्कॉर्ड में ही अपने। तूने मुझे टीम क्या हमेशा ली थी वो टीम अरे लगा दी। गद्दारी नहीं, वो लाइन पहले लगा रखी थी हमने डिस्कॉर्ड पे। हाँ वो भी करूंगा तूने मैंने हाँ न्यूवलेट लगाया था, ट्रैवलर लगाया था, लेनी लगाया था। हाँ जोते को लगाने लगा रही। Squall and fury. Too slow. मैं वहां तक जा सकता हूँ क्या? भाई मेरे को लग रहा है निकालना पड़ेगा एक वॉन्डरर या से कोई कैरेक्टर जो ऐसे उड़ सके। अभी कार्ड भी गिव अवे होगा सोफी का, क्या बात कर रहे हो? मुझे हमेशा गद्दारी मिलती है, तो मैंने पढ़ लिया था। बंटी भाई वो डिस्कॉर्ड में पहले ही वो क्यू लगा रखी थी इन दोनों ने, बंटी ने और क्या नाम है, स्पाई ने और विपुल सेंसे ने। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। नहीं होगा। हो गया ना। नहीं पहुंचा, कोई ना, जोमली का तो हो जाता है यस। स्टेज से करेंगे, टीम बदलता हूँ मैं तेरी। वो क्लाउड रिटेनर उड़ सकती ना, मैंने सुना है क्लाउड रिटेनर से ना वो एक्सप्लोरेशन काफी इजी हो जाएगी। काफी ज्यादा कारा और क्लाउड वैसे तो मैं नहीं निकालने वाला था, पर अब निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक तो उड़न खटोला चाहिए। भाई साहब तूने तो सारे प्रीसेट बना रखे हैं, बता कौन सा प्रीसेट बिगाड़ू तेरा। फर्स्ट वाले को हटा दे, फर्स्ट वाला हटा दे जिसमें अभी टीम में भी पहले रखते हैं हम लोग न्यूविलेट को, क्योंकि इसके अराउंड वो रहती है कंफर्टेबल। तेरा ट्रैवलर कहाँ है? नीचे ही होगा, कौन बिल्ड कर। सबसे पहले लाइक जो 2 या 3 सिंगल है ना वो करियो बाद में। ओके लेनी 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 लेनी, Prepare to be amazed. ये लान गई। टीम तैयार, ऑल राइट। विपुल भाई को बोलो मेरे को अलहेतम एन का भेजना। सौरदीप भाई बोल रहे हैं। अरे मेरे उसमें लगी हुई है, इसको दिखाई देना। ओके अब इसको करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ वैसे मैं दिखा तो सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ। अलहेतम देख लो भाई, जल्दी जल्दी देखना। बाकी कुछ स्पेसिफिक देखना है तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। हम चले विशिंग स्क्रीन पे। तो पहले तो कह रहे मैं एक सिंगल कर दूं जो तूने एक बचा के रखा है। जितने भी दिख रहे हैं ना सिंगल वो मार दे। एक ही है। नहीं प्रीमोस भी तो होंगे ना, वही मार दे सिंगल। ठीक है मेरे को लाइव में उना के बाद, हाँ हाँ जब मैं तुम्हारा पुल करूंगा मैं तुम्हें भी लाइव में ले लूंगा। थोड़ा सा रिएक्शन लेट देना ठीक है, फिर क्या 5 या 6 सेकंड डिले है। रिएक्शन लेट देना। इतना कोऑर्डिनेट कौन करेगा। चलो ठीक है सिंगल पुल्स। भाई देख रहे हो बंदे ने सुबह से इतना ग्राइंड किया है, 400 प्रीमोस और एक पुल जमा किया है इसने। भाई भाई रेवन बो नहीं मिली यार, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैक्स कर दो, मैक्स कर दो मैक्स। हाँ मार दे, रुक जा मैक्स मत मार। मार दिया क्या? नहीं मारा। लाइक 10k कर, 10k कर दे। 10k या फिर 9k कर। गाइस डोंट माइंड दिस, हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। पूरा 10k ये ले, हो गया 10k कर दूं? कर दे कर दे। ओके गाइस तो जैसे तुम देख सकते हो हमने बहुत ही स्ट्रगल करके काफी ज्यादा यार। हाँ प्रीमो जेम्स जमा किए हैं यहाँ पे। हो जाए 10 पुल सीधा। कर दे। इतनी आसानी से आ जाती तो क्या ही मजा आता भाई। पर कैंडिस कैंडिस कह रहे हो, क्या नाम है उसका, शार्लेट भी अच्छी कैरेक्टर है पर वो नहीं मिली हमें। मेंबर्स तुम्हारे लिए मैंने एक नया इमोट डाला है फुरीना वाला। फुरीना स्पैम करो तो फुरीना आएगी। पूरा F2 पे विपुल। अरे ये तो F2 पे यार, अभी तुम्हारे सामने तो ग्राइंड किया है हमने। गाइस चला दो यार, फुरीना फुरीना स्पैम हो जाए भाई। एंड नहीं आई। अरे इमोजी की बात करो तो टाइप कर रहे हैं।
अच्छा फ्रीना की इमोजी डाल मैं मेंबरशिप नहीं हूं भाई। हाँ आज पुल्स के लिए स्पेशली डाला है मैंने ये। बढ़िया, फुरीना फुरीना आ गई चार्ट में, अब फुरीना आएगी अकाउंट पे। एंड नहीं आई, मतलब अगले 10 पुल्स में आ रही है। एंड देयर शी इज नेक्स्ट 10 पुल्स में। अरे तेरे को अभी तक शार्लेट नहीं मिली थी? नहीं। भाई तेरी पहली शार्लेट, क्या बात है। थैंक्स ब्रो। अब 5 स्टार अभी भी नहीं आया। भाई क्या मतलब नहीं आने चाहती हो? आएगी कैसे नहीं भाई। भाई दिल से स्पैम करो फुरीना। और ये फिर से 5 स्टार नहीं हुआ, क्या हो रहा है? भाई फुरीना पे सब हार्ड पेटी तक जा रहे हैं यार। डूड दो दो कॉली। वो सारे बना दे। कितने मार दे? 50 पुल्स हो गए ना? आई गेस। तो वो भी सारे कन्वर्ट कर लेना। क्या convert एफ, मार ले, जितने भी है। वो F2P प्रीमोजम्स ना? हाँ मैक्स से 2900 ही बचे थे। मेरे को लगा इसकी कोई स्किन ले लेता ना। ठीक है भाई, 27 पुल्स है हमारे पास और। 50 60 70 आजा आजा। और ये हुआ गोल्डन। आ गया। एंड डबल डबल डबल। डिबेट क्लब, TTS, शार्प शूटर्स ओथ, ओके, ब्लड स्टेन, और फुरीना आ गई भाई तेरी। मार दे 10 पुल और मार दे अगर हो तो इस पे। ओके, एक फुरीना एक शार्लेट। अनदर 10 पुल, डबल नहीं आई यार। जितने पुल से बने उतने सारे मार दो। ठीक है, अब तेरे पास बस बचे हैं 7 पुल्स, बट वेट, 7 8 8 पुल्स और। अब सिंगल्स कर रहे हैं हम लोग। अर्ली मिली अगर देखा जाए तो 55 के आसपास मिली है। 50 की तूने। अरे बहुत अर्ली है भाई। भाई यहाँ पे पुल्स कराओगे तुम लोग तो इतनी जल्दी निकलते हैं भाई। अरे सुन ना, वो है ना, दोनों को लेवल 20 कर दे और स्टैंडर्ड पे मार दे। आई गेस मैं स्टैंडर्ड के पीटी पे भी हूँ। 5 और पुल्स बचे हैं, लगता है और कुछ नहीं आएगा। इतना लकी नहीं हूँ भाई मैं। केक 4 स्टार आई, अगर ये शार्लेट है तो बहुत अच्छा है। भाड़ में जा कॉली। अच्छा चलो ठीक है, पुल तो मिल रहा है फ्री फालतू का। वो बात भी सही है, रिफंड मिल गया। ये वाला पुल वेपन पे करिए, कॉली वाला। ओके, तो वेपन पे करूं मैं तेरे पुल्स। तेरे पास अब बचे हैं आई गेस कितने, 2 पुल्स और बचे हैं तेरे पास अब। इस पे ही कर दे, रहने दे वेपन तो इस पे ही कर दे। बैनर पे करूं, कैरेक्टर पे या वेपन पे, डिसाइड कर ले एक बारी। तू दोनों बोल रहा है मुझे। बैनर पे ठीक है। बैनर पे बैनर पे। एंड नहीं आया, पर चलो फुरीना तो मिल गई अपने को लास्ट। ठीक है, इट्स लाइक तुझे एक ही फुरीना देंगे ये लोग। क्या मतलब मेरे को 2 में स्प्लिटर मिलने वाली है? हो सकता है मिल जाए 2 में स्प्लिटर तुझे, बट अब सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए तेरे। बट ऑन ब्राइट साइड तेरी शार्लेट क्या कर रही है पार्टी में? शार्लेट को भगाओ। ये थोड़ा थोड़ा मोरा और बुक फार्म कर दे, उससे लाइक कॉइन होंगे ना तेरे पास स्टार्टर सारे। भाई बहुत सही कैरेक्टर है। सिल्वर विन 50-50 फॉर मी विद द प्रीमोज यू गॉट। निदीप भाई सेंड मी और पासवर्ड, और अगर भेज रखे तो एक बार डीएम पे पिंग कर दो मुझे, ताकि तुम्हारी चार्ट ऊपर आ जाए। तूने क्या बोला था मुझे? मोरा कन्वर्ट करने के लिए तेरे ये स्टार ग्लिटर स्टारडस्ट। हां मोरा एंड बुक्स एडवेंचर वाले यहाँ पे। हाँ कर देगा, देखता था।
एंड है ना वो 2 पुल निकाल दे उनको लेवल 20 करके। तूने फार्म भी कर रखा है? हाँ थोड़ा बहुत किया क्या है। बात कर रखा है। मैंने एक फ्रेंड को दी थी ग्राइंड करने के लिए, ना ओटीपी आया ना उसकी फोन में लॉगिन। तुम्हारी आईडी गई? खत्म। खत्म? टाटा बोले। हैक हो गई? चांदनी चौक पे बिकेगी वो आईडी। I'm really not accustomed. ओके, लेवल 20 हो गई और एक स्टैंडर्ड मिल गया अपने को। शार्लेट शार्लेट शार्लेट। एक बार मेरा पूरे ना रिव्यू भी करेंगे डीमन भाई, एक बार सबका पुल कर दे हम लोग जल्दी से, फिर आर्कॉन क्वेस्ट शुरू करते हैं भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्वेस्ट के लिए। आई गेस वन ऑफ द बेस्ट आर्कन क्वेस्ट लगा मेरे को What a अब तक। strange. मुझे सब यही बोल रहे। मैंने भाई पूरा दिन ना इंस्टा चलाया ना यूट्यूब चलाया है। बढ़िया किया तूने, नहीं करा। वैसे भी इंस्टा नहीं चलाता हूँ मैं उतना, बहुत मुश्किल से बच रहा हूँ मैं भाई। आई होप तो कोई Being spoil too नहीं होगा। popular. क्या करूँ, तेरे ये 2 स्टैंडर्ड पे मार दूँ मैं? हाँ मार के मार। मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ बार बार? ओके, क्या मैं पता भाई खुद कितने नहीं हूँ best स्केच ब्रो, मेरा भी करवा दो। ओके 1 एंड 2 एंड इसी के साथ तेरे पुल्स। स्टैंडर्ड बैनर से किसी को कुछ नहीं मिलता भाई। Who knew that people चल, मैं बाहर भाग गया तेरी आईडी से, अब तू मानो। मस्त एंजॉय कर अपनी नई पूरी ना। हाँ, और किट समझ ले, फिर मुझे भी समझा दियो। किड्स तो मैंने समझ ली वैसे अगर देखा जाए रोटेशन वगैरह न्यू विलेट के लिए। डेया पे तो आई गेस काम की नहीं है। तो। नहीं दया पे अच्छी नहीं, वो लाइक वो दया किस पे वो होती है, परसेंटेज पे नहीं होती ना जो ये पफ अब करती किसके है। आईडी में पुल करे तो सिल्वर? दया के लिए यूजलेस है। अरे अरे ऐसे रैंडमली मत घुसो यार वीसी में। अभी इसका पुल किया था मैंने सेंसे का, अब किसका करेगा? अब मैं स्पाई भाई का करूंगा। ऑलराइट। ऑलराइट स्पाई भाई, मैं तुम्हारी आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ। होपफुली ओटीपी नहीं मांगेगा मेरे से। स्पाई पाई, यस स्पाई। पाए को वीसी में लूं? अरे हाँ, उसे मैं ड्रैग कर लूँ, उसने बोला रखा है। चलो तुम लोग नहीं, मैं नीचे जा रहा, ठीक है। चल ठीक है। के स्पाई भाई रेडी हो तुम? अरे गलत स्क्रीन। चैट बंटी भाई की चैट। मेरे को फुरूरू निकाल के दो। बंटी भाई अगला तुम्हारे ही निकाल रहा हूं मैं। मैंने अपना फॉलोवर एक रैंडम दे दिया, बेचारा भीख मांग रहा था। क्या? मैंने अपना फ्लावर्स, अच्छा फ्लावर्स मतलब तुमने अपने फॉलोवर को अपनी आईडी दे दी। मेरी पूरी ना बिल्ड अभी देखूंगा, एक बार सबके पुल्स होने दो फिर देखूंगा मैं सबका। ओके तुम्हारे लिए भी चले वहीं पे दे दो और बता दो क्या करना एस। अच्छा फार्मिंग करवा रहे हो तुम लोग? तुम्हारी पिटी क्या है स्पाई भाई? सिल्वर विपुल की आईडी गिव अवे कर। उसे मना लो, मैं तो कर दूंगा भाई। When I am on the pulling list, निधि ब्रो इट्स लाइक अभी तो नेक्स्ट बंटी भाई है, फिर उसके बाद यार कोई लिस्ट याद रखना, डायनेमिक है, देन उसके बाद यू आर देयर। चलो स्टेज पे चल के पुल करेंगे हम लोग। ओके एक स्लॉट खाली कर देते हम लोग इस टीम का। ये क्या ग्लिच हो रहा है भाई इसमें? ओके डूड अभी तक तुमने बिगिनर्स बैनर्स पे विश नहीं किया, क्या बात है?
आईडीडीएम कर दो। यस 40 पुल्स है तुम्हारे पास और तुम्हारी पिट्टी एक बार देखते हैं क्या है। ओ 5 6 7 8 की पिट्टी है। ओके 8 अब 18 दो दो कॉली। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें कॉन्स्टलेशन मिल गए। 28 बेडो मिली है तुम्हें। नहीं क्या बात है, बेडो बहुत अच्छी कैरेक्टर है। 38 ओके एक और कॉली कॉन्स्टलेशन। यस लास्ट 10 पुल्स। भाई फुरीना सबकी पिट्टी के पास आ रही है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें कुकी शिनोबू मिल गई यार। बहुत अच्छी कैरेक्टर है हाइपर ब्लूम के लिए। अब स्पाई भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास 13 वो है स्टार ग्लिटर, इनको फेट्स में कन्वर्ट करूं या ना करूं मैं? ओके कुकी डैम भाई, कुकी बहुत बंदों को चाहिए भाई, और कुकी बैनर पे भी नहीं है। लक अच्छा है तुम्हारा, बट इट लुक्स लाइक थोड़ा ग्राइंड तुम्हें और करना पड़ेगा इसमें। कितने हो गए तुम्हारे पिल्स? आई गेस 48 50 पीटी पे हो तुम। 50 पीटी पे अब तुम आ चुके हो। काफी इजीली निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ क्या कह रहे हो, तुम्हारी वॉइस इतनी कम क्यों आ रही है? हाँ स्टैंडर्ड की दो है। ओके वहां पे भी ट्राई मार लेते हैं। मुझे भी कुकी कुकी खानी ब्रो, व्हाट द हेल। कुकी शिनोबू की बात हो रही है बंटी भाई। बंटी भाई अगर तुम्हें वीसी में आना है तुम नीचे वाला ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें ऊपर ड्रैग कर लूंगा, नहीं तो मैं लॉगिन करूँ तुम्हारी आईडी में। ओके ब्रो स्टैंडर्ड से भी अभी कुछ नहीं मिला है, थोड़ा और ग्राइंड तुम्हें भी करना पड़ेगा प्रीमोस के लिए, बट यू आर वेरी क्लोज। 30-40 करोगे? कर ले, कर लो, इकट्ठा कर लोगे तो अब तो तुम 50 पे आ गए, मतलब होपफुली नेक्स्ट 30 पुल्स में तुम्हारा आ जाना चाहिए ये। आयुष भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। फुरीना के लिए टीम क्या रखूं? डू टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फुरीना काम कैसे करती है। मैं जाता हूँ। ऑलराइट भाई मैं दूसरी आईडी में चलता हूँ। बंटी भाई ने मुझे मैसेज किया था, ये रही आईडी। सिली बिली भैया पुल करो। ओके यक्ष वेलकम टू द स्ट्रीम। सिल्वर भैया मुझे फुरीना मिल गई अर्ली 39 पे। बाय, मैंने अभी तक किसी की अर्ली फुरीना नहीं देखी है। कोई भी डीपीएस फुरीना काजुआ कोई अच्छा हीलर। एग्जैक्टली तुम देखो तुम्हें किस कैरेक्टर से डैमेज कराना है। फॉन्टेन के कैरेक्टर सेल्फ हीलिंग है तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है, बट अगर तुम किसी और कैरेक्टर के साथ यूज करोगे फुरीना को तो तुम्हें एक और हीलर साथ में रखना पड़ेगा। डायनेमिक के बाद निनी। ऑलराइट चलते हैं साइड में। फिर गलत स्क्रीन लगा दी मैंने। बंटी भाई तो मैं पुल करने जा रहा हूं तुम्हारी आईडी में और मैं तुम्हें वीसी में ला चुका हूं। वेलकम बंटी भाई, चलते अकाउंट में। न्यूवलेट फुरीना प्लस काजुहा शार्लेट और काजुहा बाइशू और जीन फिशल, ये टीम अच्छे हैं। देखो न्यूवलेट अगर C1 है तुम्हारा, C1 नहीं है लेट्स से C0 है, तो न्यूवलेट फुरीना शार्लेट और मे बी डेहिया, नहीं तो डेहिया की जगह तुम पेट्रा पे शोंगली यूज कर सकते हो। C1 है तो यू कैन गेट क्रिएटिव। न्यूवलेट फुरीना शार्लेट रख सकते हो तुम साथ में, ये वाली टीम यूज कर सकते हो जो तुमने लिखी है।
मैं डोमेन में क्यों जा रहा हूं? हम जाएंगे फाउंटेन में। नीचे सबको मिलेगी फुरीना। नाइस, सबको मिलेगी फुरीना। मैं सोचा नीचे कहां पे मिल रही है फुरीना। थैंक यू। चलो, व्हेन यू हैव टाइम चेक माय फुरीना। ओके, इसलिए तो आज मैं जल्दी आया कि पहले पुल करेंगे, फिर देख लेंगे सबकी फुरीना बिल्ड, फिर मस्त बैठ के रिलैक्स करेंगे और देखेंगे नया आर्कॉन क्वेस्ट। जीन भी बहुत अच्छी है फुरीना के साथ। इज गुड हीलर फॉर फुरीना बिकॉज वो ऑफ फील्ड सारे कैरेक्टर्स को हील करते। एग्जैक्टली। मेरा तो C1 है, मुझे क्या आता। वो तो भाई तुम सेट हो यार। खोलो। भाई तुम लोग कलेक्ट नहीं करते हो क्या वी पॉइंट वगैरह? मैं कितने आईडीज में देख चुका, मैं छोड़ता नहीं हुई। I got donut from weapon banner. Shit, man. All right, अब तुम्हारे स्लॉट्स मतलब पार्टी मेंबर्स को थोड़ा सेटअप करते हैं जिससे फुरीना को हम ललचा सके। ओ, फुरीना को ललचाने के लिए यहाँ पे आई गेस हमारे पास खाली ट्रैवलर है अभी। Just what will we come across this time? बाकी सबको निकाल देते हैं। 30 पुल्स। पिटी देखते तुम्हारी क्या है डूड? 0 पिटी, 0 पिटी। एटलीस्ट शार्लेट आ जाए यार। 2 कॉली। भाई कॉली तो पीछे पड़ गई यार मेरे, मैं जहां जा रहा हूं। किसी के भी आईडी में जाऊं कॉली जरूर निकल रही है भाई। 2 फिर आ गई कॉली। इस बार बेडो को लेके आई है। एंड यार एटलीस्ट शार्लेट तो दे दो यार। लेट्स गो शार्लेट किरारा। अब बंटी भाई तुम्हारे पास कितने हैं? 458 और स्टार ग्लिटर भी है तुम्हारे पास। क्या कहते हो, इनको कन्वर्ट करना है तुम्हें इसमें फेट्स में? अगर तुम बोलोगे तो मैं अभी कर दूंगा इनको फेट में कन्वर्ट, फिर सिंगल हम कर सकते हैं 3-4। C6 किरारा, लेट्स गो। बताओ बंटी भाई। कॉली क्रश सिल्वर, आए हाय। कर सब करो। ओके, ग्रीन सिग्नल मिल गया भाई। वी आर गोइंग ऑल आउट। ऑल आउट, मच्छर मारने वाला नहीं। अब हमारे पास 5 पुल्स और हैं। लेट्स सी हम लकी होते हैं कि नहीं होते हैं। C6 किराया एक्चुअली अच्छी है अगर तुम उसे सही से बिल्ड करो तो। ठीक है, ओ वेल, वी ट्राइड। बट तुम्हारी पिटी बिल्ड हो गई है। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड के भी 2 हैं। क्या कहते हो, स्टैंडर्ड पे करने? यहां तो जीत गया। गेम में भी जीत जाओगे, थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा तुम्हें। 30 पिटी तुम्हारी हो गई है। बताओ बंटी भाई, इसमें करना है तुम्हारा? सब करो। ओके, ये लो। ऐसे सुबह से किसी का स्टैंडर्ड बैनर में एक 4 स्टार भी नहीं निकला है भाई। तुम्हारा भी नहीं निकलेगा, कोई इतना लकी नहीं हो सकता भाई। मुझे कल स्टैंडर्ड पे स्काईवर्ड एटलस मिला भाई। स्ट्रीम पे नहीं निकलता किसी का स्टैंडर्ड में कुछ भी। कर्ज है ये। ओके, अब चलते अगली आईडी में। बंटी भाई अब तुम ग्राइंड भाई, चाकू मत निकालो यार। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अर्ली मेरे हाथ में नहीं है। अब डायनामिक का अकाउंट देखते हैं। डायनामिक ये रहा। ओके डायनामिक, अब मैं तेरी आईडी में लॉगिन कर रहा हूं। चैट में तो एक बार बता दे तू मुझे।
हे सिल्वा, हे कवाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई कवाई सुबह की स्ट्रीम में नहीं थी, सुबह हमने ऐसा मस्त काम किया था भाई, बर्गर खाते हुए हमने समन किया है फुरीना को। अच्छा वीसी में ही है। Meta this, meta that. डायनेमिक तेरी I've आईडी में never लॉगिन कर met रहा a हूं मैं। girl before. ठीक है ठीक है। कितनी पिटी कितने पुल्स है भाई? पता नहीं, एक बार देख लो। ओके। डायनेमिक रिप्लाई नहीं दे रहा, गलत बात है डायनेमिक भाई। ठीक है भाई, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। चलो अंदर चलते हैं अब। मैंने स्क्रीन चेंज कर दी ना, हाँ कर दी है। देखते हैं पुल्स कितने हैं। मुझे एक भी शार्लेट नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो भाई? शार्लेट और कॉली तो आराम से आ रहे हैं भाई। Ring cutter. चलो तुझे भी वहीं पहुंचाते हैं अंदर। कर दे रिप्लाई बाय डायनामिक, इंपॉर्टेंट है। हो गया। रिवर कह रहे हैं। कर दिया भाई, Time to और क्या act. करूं? Body and mind. भाई नूट नूट क्यों बजा रहा है यार स्केच? गलत बात है भाई ये। Body and mind. सिल्वर डोनट किसको दूं? आई हैव ओनली कोकोमी। वो कोकोमी पे भी वेपन अच्छा नहीं है। बट तुम चाहो तो बारबरा को दे सकते हो। मैंने गलती कर दी यार, मैंने ना सुबह वेपन बैनर में जोश में 30 पुल कर दिए। मेरे को कैरेक्टर पे करना चाहिए था। मैंने पता नहीं कितने करके, मेरा वेपन मैनर की भी चेक करना। हाँ अभी करता हूँ। शार्लेट नहीं मिली। शार्लेट यार सरप्राइजिंगली काफी अच्छा वर्क कर रही है इसके साथ। Bonjour. तूने भी नहीं लगी ये? तुम लोग व्यू पॉइंट क्यों नहीं लेते ये? अरे मैं गया ही पहली बार हूँ यहाँ पे। तू अभी तक यहाँ पे नहीं आया? नहीं नहीं आया भी हूँगा तो ऊपर नहीं आया हूँगा मैं। पता है क्या जगह है ये? पता है ना मेरे को, वो है। ये पता है सामने क्या है? Time हाँ to हाँ act. पता है मेरे को। इसका नाम है ऑरेट्रस मैकेनिक डानालिस कार्डिनल। ठीक है, कल से हिस्ट्री की किताब लेके आऊंगा। क्या बात है। चलो फाइनली आई गॉट शार्लेट। क्या बात है स्केच, बहुत अच्छा रिप्लाई था। रो रहा है वो। क्या कहे तेरे पास फुरीना को ललचाने के लिए? कुछ भी नहीं है, गरीब वो। ट्रैवलर है पर वो लुमीन है। Just what will we come across this time? ठीक है हमने ट्रैवलर को रखा कोई नहीं है, क्या? बाकी किसी को नहीं रखा है हमने। अरे वो है ना उसकी बहन, क्या नाम है उसका? अच्छा लिनेट भी तो है गेम में, भूल गया था मैं। स्काई बाय वेलकम टू द स्ट्रीम। मैंने काजुहा का EM 980 कर दिया। ER 120 नहीं, बहुत कम है। ER बहुत कम है यार। ER एम करो एटलीस्ट 170 तक तुम चले जाओ। कहाँ है बिल्ली हीरी? Time for afternoon tea. अब देखते हैं तेरी पिटी वगैरह। पहले तेरे वेपन बैनर का देखते हैं। मैं देखो काजुआ का हिसाब सिंपल है। अगर सैंड्स में EM है तो स्वॉर्ड ER की दो, सैंड्स में ER है तो स्वॉर्ड EM की दो। भाई कितना सही कर दिया इन्होंने लुक अपडेट के बाद ना। UI वगैरह, विश स्क्रीन भी काफी कॉम्पैक्ट है। ओ भाई ये क्या, तू प्रैंक कर रहा है मेरे साथ? डायनामिक क्या हो है गया? क्या? 10वें पेज पे गया मैं, नो रिकॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे वो मैंने बहुत पहले करा था, मैंने राइडन आई थी ना जब करा था मैंने। डूड रिकॉर्ड ही नहीं है तेरी उसके बाद पिटी नहीं का। करा मैंने वेपन मैनर 170 कैसे होगा सब स्टार्ट? 10 पुल मार। एक बार पिटी देख लो यार स्केच इसकी, पता तो लगे अर्ली मिली है लेट मिली है। 170 कैसे होगा? उसको स्वॉर्ड दे दो, फवोनियस स्वॉर्ड बहुत अच्छी है उस पे। ठीक है 50 पार हो गया हमारा। 55 61 पिटी पे है तू। ठीक है अब मैं शुरू कर रहा हूं तेरे पुल्स। अबे 4 स्टार शार्लेट पहले ही मिल गई तुझे, क्या बात है। अरे मिल गई क्या? मिल गई। 61 थी, कितनी हुई? 71 हो गई अब तेरी। हे भगवान। 81
81 ओके, गोल्डन हो गया भाई, गोल्डन हो गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मिल गई तुझे पुरीना। मैं तो स्ट्रीम देख रहा हूँ। मिल गई तुझे पुरीना। हाँ स्ट्रीम में थोड़ा सा डिले है, धन्यवाद चिलर भाई, तुम पे भरोसा था, तुमने बट मे बी इट कैन बिकम डबल, मे बी। करो करो देखते हैं। एक और शार्लेट भी C1 हो गई भाई। चलो भाई तेरा अभी सब आराम से निकलेगा और तूने इसको बिल्ड कर लिया तो। अब तेरे पास बचे 21 पुल्स। कुछ करना है तुझे या मैं लॉग आउट कर दूं अब? नहीं भाई, मेरे को डर है इसमें। राइडन? हाँ, राइडन के वेपन पे जाऊंगा। चल ठीक है, ये आ गई तेरी कैरेक्टर, पूरी टीम भर गई तेरी। थैंक यू सिल्वर भाई, थैंक यू। वेलकम भाई, मजा आया यार। वेपन भाई वो तुम लोग नहीं डिसाइड करोगे ना, वो ये डिसाइड करेगा। अगर हाँ मेरा मन हुआ वेपन में तो मैं दे दूंगा। मत जाइए यार, वेपन के लिए मत जाइए, बहुत बेकार बैनर, तो डर है भाई, अगर बहुत गलती से बेकार निकल बैनर है गया वेपन का। अनलेस एंड गेम, मैं बोल रहा हूँ भाई, जो एंड गेम में नहीं हो ना, मत करो वेपन बैनर, फिर रिग्रेट करोगे। उससे अच्छा C1 के लिए चले जाओ। हाँ, ओके भाई, अगला अकाउंट किसका है? चलो गेस सिल्वर नहीं भाई, गए। मैं जाता। बाय। चलो ठीक है। थैंक यू। डीमन रैकलो, अरे सुशांत भाई वेलकम। अभी VC में हम खाली उनको ले रहे हैं जिनकी आईडी है, नहीं तो काफी केओस मच जाएगा यार VC में। नीनी ब्रो, अब मैं तुम्हारी आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ। ओ भाई कब DM किया था तुमने मुझे? काफी नीचे चली गई चार्ट शायद, या फिर काफी, अरे ऊपर है। पिटी एट समवॉट नियर 70, डैम। Bro, Nideep, I was searching for Nini, but your name is blank. I forgot it. Please win 50-50. I'll try my best to give all my luck to you, man. अभी तक तो इट्स लाइक रेशियो काफी अच्छा चल रहा है अपने 50-50 विनिंग का। सुबह से इट्स लाइक बस 2 ही 50-50 हमारे, बट कितने जीत गए हम लोग? डायनेमिक का मिला के आई गेस 6 50-50 विन्स है हमारे। In what VC? Nideep, if you want to join VC, you can join general VC. I'll drag you up to the YouTube VC. आपने अपना कर लिया यक्ष भाई, मैं अपना क्यों नहीं करूंगा यार? सबका कर रहा हूं, मैं अपना क्यों नहीं करूंगा भाई? मैं 1 साल से 50-50 पे हूं, फ्री कंटेंट। अरे क्या भाई, क्या हो गया? आईडी लॉगिन क्यों नहीं हो रही भाई? ना ब्रो, आई ओनली हैव 1 डिवाइस। कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो ना छोटा सा बफर आएगा 2 मिनट के लिए। हम पे 2 प्रीमो है ही 9 भाई साहब। भाई हिंदी में बात कर लो, इंग्लिश में बात कर लो, गणित में मत बात करो भाई, मैं मुक्का मार दूंगा। ऑल राइट निधि ब्रो, सिल्वर गो फॉर पुल्स। यक्ष उस पर है तो कंट्रोवर्सी हुई। कल प्रीमो टू रेजिन, सबका लग ले लिया और कुछ जीत गया। भाई मैंने सबको जिताया यार, तेरी 50-50 भी जिताई है मैंने तुझे यार VC में आके। चलो अब सो जा सिल्वर भाई। अभी कैसे मैं आर्कॉन क्वेस्ट करूंगा यार? अभी ये हम कहाँ पे हैं भाई? स्पाइरल अबिस में क्यों खड़ा हूं मैं? ब्रो डोंट टेल मी तुमने उसके बाद नो कमेंट्स ऑन दैट। सबको जिताया, ज्यादातर बंदों को जिताया है बतख अभी तक तो। अभी तक बस 2 50-50 लूज हुई है अपनी। बेचारे बतख को धोखा दिया के। भाई इट इज जस्ट लक की बात होती है यार। सॉरी, कोई नहीं। हम यहाँ पे रखेंगे ट्रैवलर को बिकॉज वो रीना फट्टू है, उसे एक फैमिलियर There's फेस still a चाहिए। long road ahead.
ओके लेट्स ट्राई। पहले पिटी देखेंगे। 10 पुल्स हैं डूड। अगर 70 पुल और 10 पुल में फुरीना आ गई तो मजा आएगा। तब भी मिल गया सो मैं खुश। यस एग्जैक्टली। बतख को फुरीना मिली पर ऑफ स्ट्रीम मिली और बहुत अर्ली मिली उसको 30 पिटी पे। ओके 60 डूड। कर रहे हम लोग यार। गाइस हो जाए फुरीना स्पैम। बस एक ही 10 पुल है और प्रोबेबली ये 80 पुल होगा हमारा 80 के आसपास। तो 5 स्टार आनी चाहिए हमारी। 3 2 1। Oh well, never mind. Dude, एक भी कैरेक्टर नहीं आया। बट नहीं, वी गॉट 1 फेट। डू यू वांट मी टू कन्वर्ट इट और डबल, ओ सॉरी नहीं, गलत डायलॉग, और सेव इट फॉर फ्यूचर कैरेक्टर? डैम 80 पिटी नहीं होगी। 80 पिटी नहीं होगी। वो 13 पे रुक गया था। टेल मी नहीं ब्रो, डू यू वांट टू कन्वर्ट इट? कर दो भाई, वो निदीप को बताने दो यार। यूज एम। ओके न्यू इवेंट का अभी मुझे आइडिया नहीं है कब आएगा। मैंने अभी तक उतना देखा नहीं है ध्यान से। एक ही बोले डबल इट एंड गिव इट टू। ज्यादा फॉरेन रील्स देख ली। नहीं ब्रो, इफ यू कैन ग्राइंड योर गेम, पुरीना इज जस्ट एट योर डोर स्टेप मैन। दरवाजा खोल के खींच लो अंदर। कल आ रहा है इवेंट, क्या बात है। तब तो मुझे जल्दी आर्कॉन को निपटा देनी चाहिए। ऑलराइट, सो आई गेस विद दैट आज स्टार ग्लिटर देखो। सही कह रहे हो, स्टार ग्लिटर भी देख लेते हैं। स्टार ग्लिटर खत्म। स्टार्ड नो वे। ये भी बचा हुआ है, क्या बात है यार। हर्षद भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। Oh. Last 2 pulls. Last 2 pulls. I meant to see last 2 pulls. Come on. आजा फुरीना। भाई क्या पिटी है ये, मेरे को नहीं समझ रहा। अब तक तो आ जानी चाहिए यार। आई गेस हम लोग ना 80 पिटी पार कर चुके हैं। 80 पिटी पार कर चुके हैं। सो निनी ब्रो, इफ यू कैन ग्राइंड द गेम एंड सेव अप टू 10 पुल्स, इट इज गारंटीड। इवन इफ यू आर ऑन 50-50 ब्रो, इट इज गारंटीड। बहुत आगे आ चुके हम लोग पुल्स करते करते। सैड इट हैपेंस टू मी टू। आई रिमेंबर गेटिंग ayato at 89 पिटी। शेट। कमीशन करो एक। ओ हाँ, देयर इज स्टिल होप। देयर इज स्टिल होप। आई होप तुमने अपने कमीशंस ना किए हो। ओके ओके, कमीशंस करके निकालते हैं भाई। रुको। डू डेलीज इन दिस पिटी। यस स्मार्ट स्काई भाई, क्या बात है स्काई भाई। लास्ट मिनट थिंकिंग भाई। फुरीना जो नॉर्मल अटैक के बाद बाव मारती। एग्जैक्टली भाई, काफी सही कैरेक्टर बने हैं भाई। जॉली एलिगेंस एकदम पूरी वही भाई। क्या कहते हैं उसको, फैशनिस्टा जो भी होता है वो। ये जो हैशटैग चलाते हैं फर्जी, आई मीन वो जो हैशटैग चलते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं ट्रैवलर से सोलो क्यों कर रहा हूं? आई फॉरगॉट कमीशंस इवन एग्जिस्टेड। या ब्रो आई नो। तुम्हारा मैप ओपन भी नहीं है अभी। पीछे जाओ, भागो यहां से, मैं बहुत मारूंगा। कोई ना कोई टीम तो बनी होगी, ये लेके चलते हैं।
हाँ भाई अब आओ जरा, कहाँ पे हो तुम? देखो कैसे दुम दबा के भाग रहे हैं भाई ये। Out of my way! As one with wind and cloud. Kamisato Arc. Suiyu. One with nature. Our bond is strong. Propagate. Germinate. अब यार मुझे इसकी अल्ट वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, आगे काम आ जाती है अल्ट। और काम मटेरियल गिरी है। एक यहाँ पे मटेरियल है अपने पास। सिल्वर भाई मैं बाइजू के लिए पुल करूं या फिर नाविया के लिए? देखो बाइजू इज अ गुड कैरेक्टर टू यूज विद फुरीना, बट आई गेस नाविया इज अ डीपीएस, बाइजू हीलर। अब देख लो तुम्हें किसकी नीड है। बाइजू हीलिंग काफी अच्छी देता है, बट नाविया डीपीएस होने वाली है और काफी यूनिक जियो डीपीएस होने वाली है वो। आया तो ओपी, यस। अरे कवाई, आई गेस यू आर नॉट पुलिंग फॉर हाइड्रो आर्कॉन। क्या करना है? लाइट। विनीत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। और बताओ कैसी है तुम्हारी फुरीना? खोपड़ी मत तोड़ियो भाई, मैं जमाने के बाद यहाँ के कमीशंस कर रहा हूँ। बहुत ही पीसफुल म्यूजिक है भाई यहाँ का। ये भी हो गया। ऑन टू द नेक्स्ट वन। सागर भाई ने न्यूबी 50-50 पे निकाली और सिल्वर भाई ने फुरीना। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। यो वेलकम हर्षद भाई। भाई इतनी 50-50 मैंने जिंदगी में नहीं जीती है, सुबह से जितनी हम लोग जीत चुके हैं। वो पायरो वाली हीलर और डैमेज देती है। डैम मतलब डेहिया का करियर खत्म। अबे चिच्चा, एक मिनट डिस्कॉर्ड बंद कर देता हूँ पीछे यार, प्रोसेसिंग ज्यादा ले रहा है ये। ओके हमको मिली ना, मिलेगी तुम्हें भी मिलेगी। गिव कुकिंग इंग्रेडिएंट टू जाफर। लो भाई जाफर। एक शार्लेट मिले तक पिटी बिल्ड करनी है। पिटी बिल्ड करने के लिए अच्छा बैनर है। ब्रो इमेजिन इफ अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता। एक शार्लेट मिला, ये तो मैंने पढ़ लिया था। सागर ने दोनों अकाउंट में 50-50 हार गए, एक F2P एक PTW। डैम भाई 50-50 हारना बहुत दर्द देता है भाई। मैं पता नहीं कैसे भाई, एक साल से मैं 50-50 पे अटका हुआ हूं। कुकी या बेडो? हाइपर ब्लू में तो कुकी इज अ हीलर, काफी अच्छी है। टेजर टीम बनानी है तो बाइडो बहुत अच्छी है। या ओवरलोड अगर तुम्हें टीम बनानी है, बाइडो बहुत ही अच्छी ओवरलोड टीम बनवा सकती है तुम्हारी। डीपीएस चाहिए तो तुम बेडो बिल्ड कर सकते हो। सब डीपीएस, आई मीन डीपीएस, प्योर डीपीएस नहीं है वो। बट मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं कुकी को पहले बिल्ड करता। क्यों? क्योंकि गेम में काफी कंटेंट है जो कि अर्ली गेम प्लेयर्स के लिए ना टफ है। हाइपर ब्लूम बहुत इजी बना देगा, तो फर्स्ट गो फॉर हाइपर ब्लूम। वॉर फेस वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या है वॉर फेस की चार्ट भाई? भाई वॉर फेस पागल बना रहा है भाई, गलत बात है। मेरे कैरेक्टर्स के लिए वही करो। गाइस वर्ल्ड ज्वाइन मत करो। ओके मेरी आईडी नहीं है तो मुझे नहीं देखना चाहिए कौन है वो। अगर पुल परमिट्स करें तो क्लाउड रिटेनर भी निकाल लूंगा। ओके ऑल द बेस्ट टू यू टू। वॉरफेस क्या चार्ट लिखी भाई तूने? वो चाकू निकाला भाई, चार्ट दिखी नहीं रही है भाई तेरी यार। वॉरफेस यक्ष की चार्ट देख लेते हैं हम लोग एक बारी। श्याओ की स्टोरी क्वेस्ट कितनी बड़ी है? याद नहीं यार, बहुत जमाने हो गए किए हुए। इतने टाइम तक कौन याद रखता है? वॉरफेस तेरी चार्ट यहाँ पे नहीं दिख रही, या तो यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली उड़ा दी है या तो तू उल्लू बना रहा है मेरे को। अगर तूने कुछ लिखा था दोबारा लिख दे।
भाग जा। उधर गया, इधर आया। मुझे भी शायद मेरे भी कमीशंस करने हैं। छुप जा। डूड मुझे 1 साल पहले याद आ गया यार। जब 1 साल पहले मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया था भाई, ये दिखता नहीं था, इतनी लैग होती थी मेरी गेम लैपटॉप पे। डैम। ये किसका अकाउंट है? निधीप। उसकी स्टोरी क्वेस्ट की वजह से मैं कोऑप नहीं कर। शिट। स्पीड रन मार दे भाई। ये बहुत गंदा लॉक लगाते हैं यार। ये ऑप्शन देना चाहिए यार कोऑप चालू करने का। Thank you for ना ना, मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा। दोबारा लिख दे यार, नहीं मिल रही तेरी चार्ट। 1 आवर 30 मिनट जैसा ही होता है स्टोरी क्वेस्ट। ओके, बहुत मेहनत करने के बाद एक पुल मिला है। डूड 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 बहुत ही ज्यादा हार्ट पिटी पे गया है भाई निधि, बहुत ही ज्यादा हार्ट पिटी पे। मेरी पुरीना बिल्ड देखो अब। यस, गुड वेपन। भाई मी F2P है, सेंसे F2P है भाई। आई फील यू ब्रो निधीप भाई। But Nidhi bro, it is just day 1. If you can grind the game and you can collect 10 pulls, it is guaranteed Furina now man. देखो मैं तो बोलूंगा have patience, don't do singles. एक बार मैं डिस्कॉर्ड को एक लिए चेक कर लूँ, अगर और किसी ने आईडी पासवर्ड भेज रखी हो तो। नहीं, आई गेस मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबके पुल्स हो गए तो फाइनली चलते हैं मेरी आईडी में और मजा आएगा। मैं 22 पुल कर रहा। भाई सेंसे तो अलग ही लेवल पे जा रहा है यार। करो यार, गेम एंजॉय करने के लिए भाई, जो कैरेक्टर पसंद है करो उसको। आई गॉट डबल 5 स्टार अगेन। फुरीना C3 जीन डूड, कॉन्ग्रेचुलेशंस नैश ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके गाइस, छोटा सा बफर आएगा तुम्हें क्योंकि ये गेम मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। ओके गाइस, अब जिसको भी अपनी फुरीना दिखानी है, यहाँ कोई भी बिल्ड दिखाना है, यूआईडी लिख सकते हो तुम लोग। पहले मैं स्केच का देख लेता हूँ। इफ यू आर जनरस इनफ टू गिव योर कार्ड आई विल पुल C6 फुरीना। अकाउंट में 100 रुपए पड़े थे वो फुरीना। हाँ मैं उसी के लिए बोल रहा यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 5 स्टार मिल गए इसको, जीन और फुरीना एक साथ। के सिल्वर करना है, के सिल्वर करना है सिया। डिनर करना है, ओके करो, मिलते हैं बाद में। इफ यू आर, ये तो मैंने पढ़ लिया था। मेरा फुरीना देख लो फ्रेंड्स। पहले स्केच का देखते हैं हम लोग। अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं। आ जाएगा C6, बहुत जल्दी आएगा C6। कहाँ है तुम्हारा स्केच? किधर गया भाई? ये रहा। डूड लेवल 90 हो भी गई, क्या बात है यार। स्केच एनर्जी रिचार्ज, एनर्जी रिचार्ज का क्या करेगा तू? रेशियोज तो बहुत अच्छे हैं पर एनर्जी रिचार्ज, एचपी भी तूने पहुंचा दी है। एनर्जी रिचार्ज भाई, मैं तो कह रहा हूँ पाइप पकड़ा दे, फिर डबल हाइड्रो में तुझे दिक्कत नहीं आएगी। डबल हाइड्रो में भी दिक्कत आएगी भाई 111 में। डबल हाइड्रो में तुझे चाहिए कम से कम यार 120 से 140 के बीच में। बाकी अगर राइडन भी उस टीम में तो नेवर माइंड मी। अटैक डैमेज, एनर्जी रिचार्ज भाई, क्रिट के मामले में बहुत अच्छे रोल्स गए तेरे। थोड़ा ER आ जाता तो काफी सही होता है। रोल्स तो सही है। ट्रिपल हाइड्रो,
सही है। आई मीन डबल हाइड्रो। टैलेंट भी कर लिया तूने, मतलब इनफ मटेरियल है अभी गेम में करने को। 47k HP। HP सर्कुलेट नहीं करे डैमेज का यार। HP इसका देखो ना, इसका रोल कैसे गए हैं। पहले तो ये तो फ्लावर है अपना, HP फिर यहाँ पे 14% चला रहा है, ये HP का ये है, और ये और HP का ये, और HP 418। ER में दिक्कत आई है थोड़ी सी, बस एक बार शार्लेट मिल जाए फिर मेरे पे उसका बेस्ट वेपन है स्काईवर्ड एटलस। उसका बेस्ट वेपन है स्काईवर्ड एटलस, मुझे तो उसका बिल्ड भी नहीं पता। व्हाई डज जेट कटर वर्क विद एवरी सिंगल कैरेक्टर? नो क्लू यार। अगर और किसी को अपने कोई कैरेक्टर दिखाना है, अभी यूआईडी दे दो, नहीं तो एक बार मैं आर्कॉन क्वेस्ट शुरू करूंगा तो बीच में नहीं करेंगे अकाउंट रिव्यू, फिर पूरा आर्कॉन क्वेस्ट करके ही उठूंगा मैं यहाँ से। मेरा देखो, ओके डिप्रेस भाई। तुम आई गेस हो मेरी आईडी में ना, किस नाम से हो तुम? आई वॉज रॉन्ग, यू वर राइट, HP इज द ओनली BIS गॉबलेट। इट्स लाइक ना, मैंने मल्टीपल गाइड्स देखी थी, सब में उसी पे फोर्स कर रहे कि HP पे जाओ, 40 के पहुंचो। फैनफेयर पॉइंट्स की जनरेशन बहुत ईजी है अगर तुम्हारे पास फाउंटेन का कैरेक्टर है या कोई अच्छी रील कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, हीलर है। चैट में क्या कह रहे हैं? आई थिंक यार सैंड्स दे सकता हूँ। हाँ तेरा काफी है, तेरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 40 के पे कैप हो जाती है वो। ठीक है, एनिमे बॉय वी हैव UID 872026 एंड गाइस, अगर अभी तक तुमने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। 67 225। ओके, तुम्हारी CR पे एसेंट होगी, HP 33, एनर्जी 145, इंटरेस्टिंग बिल्ड। 12-3 एनर्जी रिचार्ज में गए, बहुत अच्छा फ्लावर है फुरीना के लिए। 25-3 HP नाइस। 21 एनर्जी रिचार्ज 10। डूड ऐसे आर्टिफैक्ट्स चाहिए यार मुझे। तुम्हारे रोल्स और आर्टिफैक्ट लग काफी अच्छा गया यार। ऊपर से तुम्हारे पास ये वेपन है, वो भी तुमने 90 नहीं किया, गलत बात है, 90 करो यार इसको। एनर्जी रिचार्ज भी मेंटेन हो रहा है तुम्हारा। HP क्रिट HP डैम भाई, काफी प्रॉमिसिंग है ये, काफी अच्छी फुरीना बिल्ड है यार। Yes, Nidhi bro, the HP substat makes them a bit more defensive type, helps in survival in the game. लाइक भी करना है क्या रे हर्षद भाई यार? ठीक है यार। आपने क्यों 5 पुल नहीं किए? एक्स्ट्रा थे 4 स्टार मिली। अरे क्या बात है, मेरी सेकंड आईडी से ले सकता है लेकिन बहुत भागना पड़ेगा, अनलॉक नहीं है। अच्छा सिल्वर, चेक माई प्योर F2P फुरीना नो कैप। ओके, आई ड्रॉप योर UID। जीन अच्छी है क्या? बहुत अच्छी है फुरीना के साथ। VV सेट दे दूं जीन को? VV पे ही चलेगी वो फुरीना के साथ। भाई अभी तक जीन डेड थी, एकदम से उठ के आ गई है भाई वो। फाउंटेन के कैरेक्टर्स लिटरली डेड कैरेक्टर्स को रिवाइव कर दे रहे हैं। अभी रायसली आया था, उसने थोमा को कैसे रिवाइव कर दिया। ठीक है, आई हैव द UID 8487803131। देखते हैं आई की फुरीना। इसके बाद क्या खेलेगा? आर्कॉन क्वेस्ट खत्म करूंगा मैं इसके बाद। 67 177 164 गुड, लुक्स गुड डूड। बेस्ट वेपन है यार आई के पास तो। HP increase by 20% when an elemental skill hits opponent. इसको HP की दिक्कत आएगी नहीं। कितनी HP है? हो गया भाई, इसकी HP तो हो गई आराम से। एनर्जी रिचार्ज देने के बाद भी इसकी HP मैनेज हो रही है इतने अच्छे से। वेल डन ब्रो। बस यहां पे भी HP की नीड नहीं है।
डूड भाई ये बहुत ही अनफेयर है भाई। ये बहुत ही अनफेयर है भाई। तुम लोग अगर समझ नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फुरीना के लिए ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं। लाइक उसकी एचपी 40 की होनी चाहिए। उसका एनर्जी रिचार्ज अगर तुम इसको अकेले यूज कर रहे हो 160 से 1 मतलब 200 तक तुम रख सकते हो। डबल हाइड्रो में तो 120 से 140 तो चाहिए, तो 164 इज लाइक अ सेफ जोन। ईआर की दिक्कत नहीं है। क्रिट रेशियोज तुम्हें दिख रहे हैं, क्रिट रेशियोज भी काफी डिसेंटली मेंटेन है। और 40 के एचपी लगाने के लिए ना तुम्हें फुरीना को देना पड़ता है गॉबलेट में एचपी, सैंड्स में एचपी, और इस बंदी ने दोनों ही पे नहीं दिए हैं। यहाँ पे इसने हाइड्रो दिया है, यहाँ पे इसने ये दिया है। एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस। नीलो का वेपन इस पे इतना क्रैक्ड है कि तुम ऐसा बिल्ड बना सकते हो। शिट, मुझे भी आर्कॉन क्वेस्ट करना है, अभी याद आया। RVC क्राई क्रेजी एक्जैक्टली बता। माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग ब्रो, दिस इज इलीगल यार। स्टोन फेस बना रही है चैट में। 60 पिटी अब 20 पुल जमा, सिर्फ नहीं तो 25 करूंगा। कर लो स्पाई भाई, तुम्हारी भी कंफर्म निकल जाएगी अब। चैट तुम्हारी पड़ी अभी मैंने। और यार इसकी पता है अभी एचपी तुम्हें लग रही होगी 40 के नहीं, पर इसका पैसिव पहुंचा देगा वहां तक इसको। भाई ये फुरीना बिल्ड काफी क्रैक्ड है। आप केक खाइए। मैं इसका आइडल कभी नहीं कर सकता यार स्किप। भाई मैं तो टूट गया यार। काफी कुछ ज्यादा ही क्रैक्ड फुरीना है भाई ये। आप ही करोगे पुल। ओके ब्रो, डन। सब फुरीना निकाल रहे हैं, मैं तो राइडन सेव करूंगा। पता है इसलिए ना जो लेटेस्ट कैरेक्टर आते हैं भगता उनके पीछे। एक टाइम के बाद अगर पुराने हो जाए तब मजा नहीं आता। ओके आई गेस और किसी को नहीं करानी है। हाइड्रो रेजोनेंस से मिल जाएगी। वही तो यार हर्षित भाई, इतनी क्रैक्ड फुरीना है यार। अब नीलो का बैनर आने दो यार, निकालना पड़ेगा ये। जैसे ये वेपन मेरा निकालने का बहुत मन कर रहा है फुरीना का, पर नॉट द आइडल चॉइस मैन। टीम बनाते हैं आर्कॉन क्वेस्ट के लिए। आई गेस ये ठीक है। टीम एक मैं सोच रहा हूँ कोई हीलर रख लेते हैं, लाइक What they do this time? कोई फाउंटेन का हीलर नहीं है जो हील कर दे अच्छे से। वो वेट फुरीना हील भी करती है, पर ठीक है ये लेके चलते हैं। मेरा 5 मिनट बाद देखना बिल्ड अपडेट नहीं हुआ। चलो ठीक है डिप्रेस भाई, तुम्हारा लास्ट होगा गाइस। अब मैं आर्कॉन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज नो स्पॉयलर्स इन द चैट। स्पॉइलर देने वाले के साथ मॉड भाई तुम्हें टाइम आउट देंगे बड़ा वाला। मुझे कुछ भी नहीं पता है आर्कॉन क्वेस्ट का, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं। तो अब शुरू करते हैं। और हाँ, इसके बीच में हम ये क्या है, नया वर्ल्ड क्वेस्ट, या फिर 5 मिनट तक वेट कर लेते हैं। अगर मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर लूँ तो ये ऑटोमेट नहीं यार, वेट नहीं करते, कर लेते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे। न्यूबी ही ड्रैगन है, स्पॉइलर उप्स। पहले न्यूबी टैलेंट फार्म, उसके बाद फुरीना। क्या हुआ? अच्छा कुकी मरी हुई थी। ले भाई पूरी हील हो जाए यार, देखा ही नहीं मैंने। शक्तिमान ही गंगाधर है। अब बोलोगे टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, या ब्रूस बैनर ही हल्क है। बैटमैन का नाम भी ब्रूस से ही कुछ था ना, ब्रूस वेन आई गेस। मैं डीसी फॉलो नहीं करता हूं यार, ग्रूट ही नाहिदा है। ब्रूस वेन यस। डबल हाइड्रो में फुरीना को कितना ईआर चाहिए? डबल हाइड्रो में तुम्हारा काम ना 120 से 140 तक चल जाएगा।
बस मेक श्योर तुम्हारा जो भी सेकंड कैरेक्टर उस पे फवोनियस सीरीज हो। लाइक येलान है तो फवोनियस वॉर्बो हो, शिंगचो है तो फवोनियस का वो दे दो। क्या करना मुझे? चेज अवे द सीगल अगेन। जाओ मेरे सिपाहियों, भाड़ में जाओ तुम। भाई आर्कॉन से काम करा रहा है ये बंदा, गीगा चार्ड है ये। हाय, अच्छा चाइल्ड ही हाइड्रो आर्कॉन है, क्या बात है। प्रीमो ग्राइंड कैसे करते हो? मैं एक वेल्किन ले लेता हूँ, बाकी डेली स्ट्रीम में करता हूँ तो कंटेंट ग्राइंड होते रहते हैं। वर्ल्ड क्वेस्ट, स्टैचू लेवल अप, ट्रेजर चेस्ट, रोज थोड़ा थोड़ा करके बैनर वाले दिन तक जमा हो जाता है। इट्स लाइक वेल्किन से बस कितने पुल्स मिलते हैं? मैं आई गेस 18 के अराउंड। बाकी पूरा इन गेम कंटेंट से आता है। अरे गलत ये वैसे कोई भी कैरेक्टर बिल्ड नहीं है। डूडी ऐसी 30 के पहुंच गया। मेरा न्यूविलेट नहीं मारता यार 30 के, 20 के मारता है। पर आई गेस ठीक है, थोड़ा तो बफ मिला ही है मेरे को। पर इसका ना डीपीएस सैक्रिफाइस हो गया। न्यूविलेट को क्या चाहिए? सारे कैरेक्टर्स अलग अपनी टीम में। इट्स लाइक 3 कैरेक्टर रहते तो मैक्सिमम डैमेज करते हैं, ये 2 कैरेक्टर पे थोड़ा सा डीपीएस सैक्रिफाइस हो जाता है। 18 पुल ओनली, क्या बात है। स्टिल 30 के हिट करना विद मतलब लेवल 44 ही ना यार। C1 यूवी कर लेना। करूंगा यार, मैं तो करूंगा उसको। भाई जब फुरीना अभी से इतना बफ दे रही है, जबकि अभी मैंने बिल्ड नहीं किया है। ओह ये क्या था? ये क्या हुआ अभी? ये जंप स्कैर सा है भाई। मैं अभी जंप कर देता अपनी चेयर पे, नीचे से एकदम स्क्रीन के आया। लॉल चेक करना अपडेट हुआ कि नहीं। ओके डिप्रेस भाई, अभी देखता हूँ। ओराटिक मैकेनिक, अच्छा ओराट्रस मैकेनिक डानालिस कार्डिनल, ऐसे ही बोलूंगा मैं। और करो स्पैम। आई एम हैप्पी विद माई C0 कैरेक्टर्स। मेन बात है भाई, गेम एंजॉय करो। ऊपर की यार स्पाई भाई, कौन सी चार्ट तुम्हारी? मेरे पास कुकी, न्यूविलेट, फुरीना, न्यू 4 स्टार मिला है। न्यू टीम कुकी, न्यूविलेट, फुरीना। कुकी को न्यूविलेट के साथ मत यूज करो। न्यूविलेट के साथ अगर यूज करना है बेडो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। न्यूविलेट है, फुरीना है तुम्हारे पास, बेडो हो जाएगी और एक शार्लेट रख लो, ज्यादा बेटर टीम है। बेटर क्यों कह रहा हूं? कुकी को फ्री रखो हाइपर ब्लूम के लिए, क्योंकि जितनी वैल्यू वो देती है हाइपर ब्लूम में कोई कैरेक्टर नहीं दे सकता। अच्छा ऊपर उठना है मुझे। वाई आर यू क्राइंग ब्रो? क्या हो गया? स्पाई डिक्टेटर एडिट हुआ तेरा? भाई बहुत एडिटर्स है अपने सर्वर में। डोको बड़े दिनों बाद मैं कर रहा हूं चैट। कौन सी चैट? एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट कुरोसाकी। अच्छा तुम मुझे कह रहे थे, मुझे लगा चैट में कोई कुरोसाकी हो, तुम उसको कह रहे हो कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर। अभी यार मैंने ना देखा था यार कल परसों में, ज्यादा लोग इनएक्टिव नहीं है। बाकी अभी देख लूंगा मैं थोड़ी देर में। आजा आजा
आजा कम ऑन। मेरे को एक बो कैरेक्टर लेके आना चाहिए था भाई। यार तुम लोग कुछ कर सकते हो? कुछ तो काम कर लो यार। मैं बिना बो कैरेक्टर के कैसे करूं यार? मेरे को नहीं निकालना वो कैरेक्टर। छी यार, कहाँ है वो कैरेक्टर? Oh, it's an honor to be देखो मेरे को here. तसल्ली मिलेगा। ओके अभी देख लेता हूँ मैं। अच्छा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट के लिए मुझे बोल रहा हूँ, ठीक है। वो लेवल 5 कर दो तो मैं हेल्प करने आ सकता हूँ। डिमोन गेम ओपन कर, फार्मिंग करनी है भाई को। Add Astra. Thank you आर्कॉन for करोगे? यस अब मैं आर्कॉन करने जा रहा हूँ। एक बार डिप्रेस भाई को डिप्रेस आई मीन वो डिप्रेस भाई का बिल्ड देखते हैं। मेरी चैट इग्नोर। अरे नहीं बीस भाई, मैंने ये देखा नहीं होगा। कहाँ है तुम्हारी चैट? अरे हेलो तो बोलो मेरे को। वेलकम टू द स्ट्रीम बीस्ट भाई। स्पॉइलर दे दूंगा अगर हेलो नहीं बोले। भाई स्पॉइलर मजाक में मत देना, मैंने मॉड्स को बोल रखा है कोई हल्का सा भी स्पॉइलर देता है तो भाई 24 घंटे का टाइम आउट है। तुम सीधा कल की स्ट्रीम में टाइप कर पाओगे। तो प्लीज गाइस नो स्पॉइलर्स। मैं नहीं चाहता यार मेरी चैट में कोई मतलब लिख ही ना पाए पूरी चैट में। क्रिट रेट नो वे, नो वे। कुछ तो गड़बड़ की होगी यार तुमने। रुको 42 है तुम्हारा, 79 मतलब 80 मान लेते हैं, 196 और 169 एनर्जी रिचार्ज। क्रिट रेट यहां से आ रहा है। लेवल क्या है इसका? लेवल 98, ठीक है। भाई कैसे इतनी क्रैक्ड बिल्ड हो रही है तुम्हारी यार? एचपी का गॉबलेट है, एचपी का सर्कुलेट है। ओ भाई साहब वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छी फुरीना है, बहुत अच्छी फुरीना है भाई, बहुत अच्छी फुरीना है। बहुत ब्रोकन फुरीना है, बहुत ब्रोकन फुरीना है। एक बार देख लेते अगर मेरी लिस्ट में कोई इनएक्टिव है तो। नीचे से देखते हैं। वन डे 23 डेज। वोल्डेमॉर्ट भाई सो सॉरी टू रिमूव यू मैन, बट तुम गेम में भी इनएक्टिव हो, चैट में भी इनएक्टिव हो। चैट मिस 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 आप दो मुझे स्पॉइलर, मैंने नहीं किया एक्ट 5, आपको बंद देना चाहिए दिलबर भाई। तुम्हारी मर्जी है। देखो मैंने ना टाइटल में लिख दिया है कि मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तभी रात को कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कर चुके हो तब मैं करूँ, ठीक है? टाइम दिया मैंने सबको क्वेस्ट करने का। 5 डेज 31 डेज। स्टैन मून ने भी आई गेस क्विट कर दिया ये। स्टैन मून को वैसे मैं जानता हूँ बट 31 डेज का नहीं है तो आनोस भाई भी लास्ट 13 दिन से ऑनलाइन नहीं आए हैं तो हमने नहीं किया। गलत बात है भाई, करके आना था। और देखते हैं और कौन नहीं है। बाकी तो आई गेस सब है एक्टिव, या बाकी तो सब एक्टिव है। बाकी सब चैट पे भी आते हैं, ठीक है। तो एक तो कुरोसाकी को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये क्लिप होगा है? क्या क्लिप कर रहे हो? सिल्वर एम आई इवन इन योर फ्रेंड लिस्ट? ब्लैंक, लेट मी चेक ब्रो। ब्लैंक 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 ब्लैंक। ब्रो देयर यू आर टुडे। वो बात अलग है, मैंने खेला है तुम्हारी आईडी से।
किक पीपल अरे उसमें क्लिप वाली क्या बात है, मैंने वो सबको पहले डे वन से बोल रखा है, अगर तुम इनएक्टिव हो गेम में और यूट्यूब चैट में तो मुझे तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, इट इज क्लियर। मेरी रिक्वेस्ट ले लो रुडिक्स। ओके भाई, फर्स्ट बेसिस पे तय तो हम तुमको ले लेते हैं अभी के लिए, I wonder what ठीक my है? dear sister अब Lynette is doing right now. अब Missing me to death, I'm sure. वाओ सरप्राइजिंग, आई एम स्टिल देयर प्राउड फेस, क्या बात है। ओके गाइस, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्कॉन क्वेस्ट। Witness my magnificence. और जितना मुझे बताया है लोगों ने, काफी तोड़ आर्कॉन क्वेस्ट है। मैं टूटने को तैयार हूं भाई, शुरू करो, लेट द फन बिगिन। मैं बारबरा क्यों बन रहा हूं? डूड, मैंने कब स्टार्ट की थी? 9:15 के आसपास स्टार्ट किया था, 10:30 हो गया, मतलब 1.5 घंटा हमने बस टीपी किया है पर मजा आया। सिल्वर भैया, मैं 10 पुल इकट्ठा करते करते आपको अकाउंट दूंगा तो पुल कर देना शार्लेट के लिए। ओके ब्रो, एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। विनीत भाई थोड़ा सा लेट हो गए यार आप। इट्स लाइक 2 स्लॉट्स मैंने ओपन किए थे। एक मिनट, ये देखना जरूरी है। ओके, मैं इसका आइडल कभी स्किप नहीं करने वाला यार। अरे एक स्लॉट और ओपन है, मैंने 3 रिमूव किया। तुम्हारा क्या नाम है विनीत भाई इसमें? सुमित ना? एक्सेप्ट मेरा भाई, ठीक है भाई, नाम बताओ यार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तुमने बोल दिया है, लक है यार तुम्हारा, मैं भूल गया, मुझे लगा मैंने 2 रिमूव किए हैं। 3 आवर ऑलमोस्ट लगेगा, मैं तैयार हूं 3 घंटे देने के लिए। विनीत भाई तुम्हारा क्या था? सेटन जीता या फिर तुम्हारा वो था सुमित? मुझे इन दोनों में से याद, तुम्हारा इन दोनों में से कोई एक है। आई क्राइड ड्यूरिंग द क्वेस्ट। ठीक है भाई, बस इतना काफी, इतना काफी, इससे ज्यादा मत बताओ। विनीत भाई तुम्हारी आईडी कौन सी बता दो यार जल्दी से एक बारी। माइन भाई, यस, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। तुमने ही तो भी बोला था, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर तुम्हें नहीं करनी तो मैं फिर स्पाई भाई की एक्सेप्ट कर लूंगा। What happened bro? Why this awkward silence? Total GB Genshin impact in PC. मैं तुम्हें कल बता दूंगा देख के। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था 80 GB था लास्ट अपडेट, जब मैंने किया था 4.1। विनीत भाई, why this awkward silence man? चार्ट मिस? कौन सी चार्ट मिस? मैंने कौन सी चार्ट मिस की? माइन भाई, मेरा भाई, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट मेरा भाई। इसके ऊपर कोई चार्ट है तुम्हारी? मैं नहीं समझ रहा हूँ। I mean, you also need to accept my request. Okay, bro, but what is your name? Bro, but what is your name in game? सेटन जी, हाँ तो यही तो पूछ रहा इतनी देर से मैं। अब शुरू करते हैं। स्पाई बाय प्रॉमिस, अगर और भी कोई इनएक्टिव होते ना नेक्स्ट में तुम्हें ऐड कर लूंगा सीधा। तुम्हारा यहाँ पे है ना ब्रो? तुम तो यहाँ हो भी नहीं। जैसे क्यों लग रहा है तुम ऑलरेडी इसमें हो स्पाई भाई? आई गेस तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी नहीं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? कोई नहीं, तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दो यूआईडी लेके, आई विल एक्सेप्ट इट। आई एम एटॉमिक डाल नहीं यार, मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिला। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेटन जी यस, मैं याद रखूंगा। हैं? इस गंदी सी जगह में वापस जाना है मुझे?
पहली बार हुआ है डे 1 कैरेक्टर मिला, वही 5 स्टार। ये अलग ही खुशी होती है डे 1 पे नया कैरेक्टर मिल जाए तो। हर बार सेम ही रश मिलता है यार मुझे। इट्स लाइक 4th आर्कॉन। बस वेपन क्रिंज लग रहा है अजीब सा यार। मेरा मन कर रहा है मैं वेपन बैनर पे जाऊं, पर इसका वेपन बेकार है यार। इसको की मैं कॉन्सलेशन के लिए जाऊंगा यार। आईडी देख लो यार, तुम मुझे भेज दो, तुम यूआईडी ले लो, रिक्वेस्ट भेज दो। अब मैं सीधा आर्कॉन क्वेस्ट करूंगा अभी। आलेचिनो गो गो। मैं वर्ल्ड क्वेस्ट करते करते स्ट्रीम देख रहा हूँ। ओके ओके, अब देखते Now हैं। for a little rest after breakfast. Wait a sec. मैं भी जेल में हूँ। Isn't something important supposed? Oh, today's our big day. We're supposed to leave the fortress of Mirapede. Come on, we've got to go complete. अच्छा, तो मेरी 45 डेज की सेंटेंस अब खत्म हो रही है। मैं तो ऐਵੇਂ ही घूम रहा था। Bro, I was watching your stream. अरे पीछे का देख रहे थे तुम। बहुत ही awkward moment क्रिएट हो गया था अभी। Bro, Attack on Titan sword better damage above all 4 star. मेरे पास नहीं है ना यार, वो होती मैं दे देता, मुझे चाहिए वो। वेपन बैनर पे 4 स्टार वेपन के एक बार मैं देख लूं जल्दी से, पीक ले लेते हैं। छी यार, बकवास वेपन बैनर है। आज छूटूंगा मैं भाई यहां से। क्या हो गया सेंसे, ऐसे क्यों देख रहे हैं? वैसे बेस्ट 4 स्टार वेपन ये है, पाइप। लिफ्ट से कौन जाता है भाई? मैं हर बार ही बोलता हूं ना, यहाँ पे काफी अच्छा है अर्थक्वेक। क्या मतलब अर्थक्वेक? आई डोंट फील इट। Boring. अरे चलो चलो, चल रहा हूं। Something else more interesting to do. खड़े नखड़े इसके। एओटी स्वॉर्ड कौन सी है? वो जो पिछले वेपन बैनर में नए 3 वेपन आए थे ना, उसकी बात कर रहे हैं वो। Please sign here. This document will be effective immediately. It's been so long since चलो, we've been to the surface. अब हम आजाद हैं। गाइस अगर सीरियसली अर्थक्वेक है तो बता देना मुझे चैट में, क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ है। ब्रो नो स्पॉयलर्स इन द चैट यार। What's happening? नो स्पॉयलर्स इन द चैट। मत बताओ मुझे आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं जानना है। I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. छोटा हो बड़ा हो स्पॉइलर हो, मुझे कुछ भी मत बताओ भाई। छोटी सी छोटी चीजें मुझे नहीं जाननी है, आगे क्या होने वाला है। A new life's beginning। चलो मेरे को लेटर मिल गया, अब ऑफिस में चलते हैं। अब हम निकलेंगे यहां से। इसको टाइमर तो कोई नहीं, एक वार्निंग दे देते हैं यार, दोबारा मत लिखना यार 20 भाई। ओके रायसली भाई। Your Grace? Ah, good to see you. Yeah, what was with that earthquake? Ah, that. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what Okay. occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. सो न्यूविलेट ने जो लास्ट आर्कॉन क्वेस्ट में किया था ना, पानी को रोक के सील कर दिया था, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अभी भी खतरा है पानी The लीकेज का। fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of चैट inmates in a panic right कौन सी? now. बैन सिल्वर सॉइलर Huh, you've got a फॉर point. सॉइलर। Okay. I believe today is this month's pipe cleaning day. अरे मैंने पाइप निकाल लिया यार, 5 कर लिए। एक्चुअली टुडे इज द डे वी से गुड बाय टू फोर्ट्रेस। Ah, yes. Have you completed your release papers? यस, Yep. बाहर जाने दो You मुझे। too. Are you leaving now? ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now.
Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to चलो see us चलते हैं. off? मैंने आज नहीं बोला let me complete the You'd ritual. ask. Okay. All right, sure. Let's go. ब्रो बेटे को कैसे बिल्ड करूं फॉर न्यूबलेट? Well, you actually टू पीस did. अटैक दे दो, टू पीस इलेक्ट्रो डैमेज बोनस का दे दो You कुछ. must be busy. Paimon was just joking. नहीं तो इलेक्ट्रो के आर्टिफैक्ट भी ये में तुम वो दे सकते हो. So you do have a polite नहीं side, तो I see. एम्बलम बेस्ट. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? तू पहले फुर्सत में निकल यहाँ से. No, that's all right. It's not like we'll never visit again. Yeah, don't worry. We'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. Chichi sis twist blue Chichi. I, Fossalors, welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the importance of your travel. Now you may rejoice in this. Yes, Furina के emote के साथ. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. शील्ड के अलावा, मैं शील्ड के अलावा ही बता रहा हूँ, 4 पीस उसमें बिल्ड कर दो तुम. We'll do our best. काफी अच्छी सपोर्ट है टेजर टीम के लिए वो. Seems are working. We should probably. You're going to see Monsieur Nervylette? Yes. Please pass on our kind regards. Simp. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite. You're right. I've heard the palais has been terribly busy. चलो न्यूविलेट से मिल के आते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है भाई. चाइल्ड का कुछ पता लगा नहीं लगा? चाइल्ड को सब भूल गए हैं भाई. Go to Paladus Memonia. Let me do one thing. अभी के लिए ये मैं इस सेटिंग पे कर देता हूँ ताकि आर्कॉन क्वेस्ट हो जाए भाई एक ही बारी में. अब ये जगह कहाँ पे है? अच्छा निकल गया मैं यहाँ से. नाइस. नो स्पॉयलर्स यार. यस नो स्पॉयलर्स. अरे बुर्रार बनी ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हालचाल? चाइल्ड तो चाइल्ड है, घूम गया बेचारा. ओके. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Nervylette did say you'd be welcome at any time. बड़ी अजीब कैरेक्टर है. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? ओके. I'll be right there. क्या चल रहा है यहाँ पे? सेंसे ने 10 AM से 4 PM कर दिया. Everyone's so busy. सब अच्छा. अगेन बिजी शेड्यूल. क्या बात है, बिजी रहना चाहिए भाई. ओके फाइनली ओरेट्रेस वाले बाबा इज हियर. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. ओके क्या अर्जेंट In मैटर्स the है भाई? meantime, please have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. आई सी. मेलिसिन यहाँ की प्यून है. Very well then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. क्या म्यूजिक है भाई, क्या रूम है ये. मजा आ रहा है देख के. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? भाई Yes, ड्रैगन sorry इंसानों to के keep बीच you में waiting. आया, पढ़ा लिखा जज बन गया. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. क्या बात है. That's right. And we came here to see you right away. You and Paimon tell Nervylette everything that happened primordial sea incident. A massive whale. Do you have any idea what that might be? काजुआ पे 15 CR है. फवोनेस काजुआ क्रिट का कुछ नहीं करता यार, बस Judging एनर्जी from your रिचार्ज और EM. description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tivat.
Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? Is he okay? He is not from Fontaine, so he won't dissolve. क्या कर रहा है चांदी? अंधकार भाई. Archon quest. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. There's something we'd like to ask you about. Yes. What is it? What was the tremor we felt earlier? Oh, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. Okay. मैं पॉपकॉर्न लेके बैठ गया पिक्चर देखने. Okay. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking Poisson. stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Shit. Prophecy fulfill हो रही है भाई. Fontaine का पानी बढ़ रहा है. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? ठीक है, मेरे को स्पॉइलर नहीं चाहिए. कोई बात नहीं भाई. Thanks for joining the stream, man. Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. चलो भाई. स्पेनादी रसगुल्ला हेडक्वार्टर्स. यस, स्पेनादी रसगुल्ला. रसगुल्ला नहीं बोलेंगे हम इसको. स्पेनादी रसगुल्ला. स्पेनादी रसगुल्ला. There's no time to lose. Let's get going. नाविया मिष्ठान भंडार. चलो भाई. उसकी मिठाई, आई मीन उसकी डिटेक्टिव एजेंसी में. कमान कौन, जल्दी लोडो, जल्दी लोडो. ओके, कुछ तो हो रहा है. Oh no! What happened here? कुछ चेंज है क्या पिछली बार से? पानी टपकता दिख रहा है बस, और लोग नहीं है यहाँ पे. डोंट टेल मी. डिसॉल्व हो गए क्या? वेल दे ऑल डिसॉल्व. नो, लेट्स नॉट अज्यूम दैट फर्स्ट Navia येट. should be around here, right? We need to make sure she's still. Paimon means we need to check on her. मैं एक पेपर में सब स्पॉइलर लिख रखा था, लेकिन अभी डर में हूँ. भाई मत लिखना यार, मुंह बंद. प्लीज यार, स्पॉइलर्स मत देना यार अभी. लुक फॉर नाविया इन पॉइजन. ये घर की छत पे क्या कर रहा है बंदा? We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. Dude. What will I ever do now? टुडे अर्ली स्ट्रीमिंग लॉस्टी. यस, थोड़े से अकाउंट्स में पुल करना था, कमीशंस करने थे, तो वो सब हमने पहले किया. नाउ इट्स आवर कॉन्क्वेस्ट. Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. ये कौन है? नाविया का वो लग रहा है एजेंट. I'm not young anymore. How will I survive on my own? Sad life. My Desiree. Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel न्यूट्री better. ऐड हो शायद, पता नहीं, अभी देखा नहीं मैंने. क्या चल रहा है यहाँ पे भाई? बड़ा ही सैड सीन है. कंटिन्यू लुकिंग फॉर नाविया. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia. फाइनली नाविया जिंदा है भाई. हमको तो लगा घुल गई है पानी में.
फिर रोएगी ये। You're here. ये शक्ल मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ रोने वाली इसकी। So we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a भाई wounded सैड veteran next to म्यूजिक a brook मत in बजाओ southeast भाई of here. बैकग्राउंड में। We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. भाई बहुत ही सैड वाइब्स आ रही हैं इस You'll be in म्यूजिक से। charge. I'm sorry. Where were we? The situation. Right. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. Okay. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Shit. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. Shit. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Dude. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of poisson are still hazardous. To ensure no one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened हर वॉइस was कोई a ना यार bad dream. वॉइस एक्टर ने कितना सही काम किया यार। Is there any way we लिटरली can लग रहा है मैं मूवी देख रहा हूँ। ऊपर से म्यूजिक। We are here to help. You can put us to work. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. Genshin नहीं यार। I really इतना इमोशनल म्यूजिक मत बजाओ यार can't इस सीन पे। express how grateful I am. नहीं भाई। Wait, we are missing some people, aren't? Oh shit. Shit. इसके दो bodyguards. Don't say that, Navia. That's what friends are for. By the way, where is Milius and Silver? नहीं भाई इसकी आइस नो वे Demoiselle, we've got a situation here. नो वे I'll be right there. Sorry, I need to go for now. नो वे And now she goes. Seems it might be a while before she can take a break. वैसे देखा जाए तो एक ही सिल्वर एग्जिस्ट कर सकता है एक टाइम पे। सिल्वर गो टू गेम। भाई मैं ओरिजिनल हूँ भाई, फर्जी गया। पर भाई वो चिच्चा को नहीं जाना चाहिए था यार। Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Shit. Of course,
we should remain ready for anything and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. भाई ये इमोशनल म्यूजिक कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं होता जा रहा है? Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? भाई grave scene. Huh? Right now? I understand. भाई बहुत मस्त है ये, करो करो कर रहा हो यार. भाई फाउंटेन का म्यूजिक अब मेरे लिए सेम नहीं रहने वाला है भाई. इट्स लाइक भाई तो म्यूजिक में भी एक एक चीज फील कर सकते हो ध्यान से सुनोगे तो. सनसेट और ग्रेवयार्ड A नहीं. lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be... Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any भाई वो words सीन for बड़ा the मस्त है dead. सनसेट वाला. Navia? There's no need to push yourself so hard. रोना ही था भाई. भाई कुछ भी रोने में एक्सपर्ट है भाई. Navia, what's wrong? मैं कुछ क्वेस्ट यूट्यूब से ढूंढ के आ रहा हूँ थोड़ी देर में. ओके बाय पग भाई, दूसरी बार देख के भी दुख हो रहा. डूड इसका रोना बहुत खतरनाक है. मैं ट्रोल कर रहा हूँ इसको तब से. Sorry. I just... Malus and Silver, they won't ever come back here again. Shit. Looks like I'm dead, man. Oh wait, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. मैं इधर ही हूँ. What should I do, Papa? भाई वो वॉइस लाइन यहाँ से थी जो हमने देखी थी टीजर में. सिल्वर ब्रो. Huh? What happened to them? I am so sorry for your loss. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. Shit, man. And they were caught in the seawater. डूड इसके वॉइस में कितने इमोशंस है भाई इस बारी. ये पापा वाला लाइन से कॉलीबेर की याद आती. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. शिट. सिल क्या हुआ भाई, कहाँ गए? स्ट्रीम का क्या होगा? आईडी बाय कर दो यार. नहीं भाई, अभी नहीं चाहिए था फ्लैशबैक. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. ये नकली है भाई, असली में हूँ. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? सिल्वर है उनके चश्मे. How could Master ever be upset with you, demoiselle? वैसे पता है जिस भी दिन मैं नाविया के लिए पुल करूंगा भाई, मैंने लगाना है काला चश्मा और टोपी.
मजा आएगा, टाइटल में डालेंगे सिल्वर पुलिंग फॉर नाविया। आगे देखते हैं। Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Shit, नहीं 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 भाई, ये पानी में डिजोल्व हो गया, बॉडी भी नहीं है, बरी क्या करेंगे ये नहीं जानना था मुझे, इसलिए व्हाट्सअप वेलकम बैक का भाई। नहीं भाई, चलो पुलिंग फॉर इज लेट इन आवे बेटा ना भाई, इतना क्रिंज नहीं लिखेंगे यार, ये कुछ ज्यादा ही सैड हो गया यार। Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. क्रिंज व्यूज भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है, ये हरकतें नहीं करनी मुझे। In that case, could I be buried on his other side? अबे भाई, After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? डिसॉल्व हो गए भाई ये दोनों, ये क्या बरी होंगे। Personally, I believe we fill those shoes just fine. भाई गेंशिन वालों, ये सैड म्यूजिक बंद करो। Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. कुछ ज्यादा ही सैड नहीं, अब रोक दो म्यूजिक। जियो इक्वल रॉन्गली माइनस इतो, बाकी बेकार। अभी एक और डीपीएस आ रही है तगड़ी। I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. झूठ बोल रही है ये भाई, कोई भी क्वेस्ट हो ये रोए बिना नहीं रह सकती भाई। भाई ये सीन देख रहे हो तुम, सनसेट का और नाविया का, इन्होंने जान की है ये हरकत। Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. ये देखने के बाद इसका विश्वास कौन करेगा भाई, सारी सीरियसनेस चली गई उस एक डायलॉग की वजह से। Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. भाई चलो, गेम में कोई तो कैरेक्टर है जो मेरा नाम बोल रहा है भाई, नहीं तो सब ट्रैवलर करते रहते हैं। I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. कौन बोला नाविया शिट है आपको कवाई? अरे कवाई वो सारे डीपीएस को शिट बोलती है। Yeah, we're here for you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny. So, everyone else is safe. It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. सिल्वर ब्रो, आपकी ग्रेव पे आऊंगा मैं। What do you mean by that? भाई वो अलग सिल्वर है, वो डिसॉल्व हो गया है भाई, वो ग्रेव में क्या डालेंगे, हवा डालेंगे। कौन सी चैट में?
Cell detective here. Why go? Okay. The overall outcome indicates that the cost was worth it. No one sacrifice is truly necessary. Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but पानी डाल देंगे ये भी something सही we है. should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. Yes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing. ये सूरज अभी तक क्यों नहीं डूबा भाई? I'll remember your मैं words. नॉर्मल चलता हूँ 2-2 सेकंड में, दिन होती रहती है, रात होती रहती है. Really? सिल्वर ब्रो पे आपको रोज भाई बहुत गलत साउंड कर रही है लाइक. Seems you've become more eloquent in the time since Oh, we last met. ये कहाँ से आ गई भाई आउट ऑफ नोवेयर? ये कहाँ से आ गई? ये किधर से आ गई भाई? The knave? What are you doing here? ओह वेल ठीक है भाई. नाविया भी है, नेव भी है. गुड गुड Is क्वेस्ट. everything going well on your side? है ये इससे भी काम करवा रही है. Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. नाइस. अच्छा दोनों फॉन्टेन के हैं ना, तो मिलके काम कर रहे हैं. गुड, ये देख के अच्छा लगा. डोंट से साइनो रेजर कॉपी नहीं यार, उसे बेकार. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? ये सेम स्कूल में पढ़ती थी. We just met recently. Right, Miss Navia? Well, there goes my theory crafting. Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Spina di Rosagulla. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. Okay, Sia. Thanks for joining this stream का भाई. भाई इन दोनों की वॉइस में मतलब तुम देख रहे हो कितना परफेक्टली काम किया. नाव्या की वॉइस अलग इमोशनल है, इसकी वॉइस अलग ही भाई. नेफ की वॉइस अलग ही है भाई. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. मैं कंफ्यूज हूँ, ये विलन है कि नहीं है अब नेव? डिजाइन तो पूरा प्योर विलन वाइब्स दे रही है As यार. I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Okay, maybe she is honest to her motherland. Oratress, mechanic, journalist, cardinal. There it is again. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Dude, इन दोनों की conversation सुनना ना, it's like क्या बोलूँ मैं? काफी सही लग रहा है भाई. दोनों वॉइस एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your और kindness. दोनों का डिजाइन भी कितना डिफरेंट है. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Bro, R.I.P. Silver bro. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. ये लोग कितनी बार मेरा नाम बोलेंगे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for बस any करो specific बे. person.
And they weren't the price paid for others' salvation. They chose to become heroes themselves. भाई सनसेट ही नहीं हुआ इनका अभी तक. I've never liked hearing people put it Welcome that way. back, David. It's Eyes like अच्छे हैं, trying cross to relieve eyes. pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. PFP profile picture. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. क्या नाम है होटल का? Buffets dete. बोला भी नहीं जा रहा भाई, छोड़ो. By the way, traveler, Paimon, one more thing. अभी भी नहीं पता मुझे कहाँ है चाइल्ड तेरा. All right, then we'll just. Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Okay, she trusts Navia, या फिर उसका ट्रस्ट जीत रही है, फिर बाद में जाके उसको assassinate करेगी. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. भाई इसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं काम करने की हमारे साथ. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. So the time for jolly cooperation has come. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. Bro, ये मैंने अभी नोटिस किया, इसकी ईयरिंग भी लगी हुई है. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. भाई मैं दोनों के डायलॉग स्किप नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी मतलब सही काम किए वॉइस एक्टर्स ने. पुरीना पुल की. डेविड भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. हाँ मैंने सुबह की बहुतों के अकाउंट में निकाले आज हमने. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person I trust most is you. Which is why I want to give you this task. Are you sure this will be okay? Can you trust an outsider like me? The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. Okay. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. तभी 60 FPS में उड़ रही है अब तू. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Bro, आज मैं लुट गया. अरे क्या हुआ जीरो भाई? Welcome to the stream. Got it. So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? बस रोइयो मत. You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Sad life. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. Bro, she replied. अभी just sad life बोला. Well, I am sad, yes. Damn.
There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Yes. आज पता चला क्यों सभी चीची को हेट करते हैं. 85 पिटी में चीची आ गई. Shit man. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. मेरा नाम बार बार लेना जरूरी है क्या भाई? कितने अच्छे गए थे भाई पिछले 5 मिनट जब किसी ने नाम नहीं लिया था. Navya strong but needs company now. We can be that company if she goes to explore the ruins with us. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? We'll go to the ruins together. Yes. All right. The ruins are to the south of Poisson. Okay. चलो Poisson. Let's just hope Navya पानी में गिर के डिसॉल्व ना हो जाए. नहीं तो काफी हार्ट ब्रेकिंग होगा भाई वो. अबे यार वे पॉइंट्स खोल लेने चाहिए. मैंने सोचा था कि मैं दिन में मेरे को ना आधा घंटा मिला. मैं सोचा लाइव आके बस वे पॉइंट्स खोल के जाता हूँ पर मैं नहीं आया. क्योंकि मुझे स्पॉइलर से डर लगता है भाई. पूरी ना अपने वो डुग्गर निकाल. हाँ चल अब चलो सिपाहियों. ओ उप्स आई मीन चलो सिपाहियों. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. पहले सारे वे पॉइंट खोल लो. आर्कॉन को इसके साथ करते हैं. रास्ते में जाएगा खोलते चलेंगे. तो बेटा वो साथ में नहीं आ रहे. बाल छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं. चलो इसके साथ तो अकेले चलने का मन ही नहीं करता भाई. तो कैसे पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे. हम लोग आ गए. कहाँ रह गए? So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. ओह डोमेन. देखता ब्रो अनइंस्टॉल कर दिया भाई. They seem to be pretty ancient. अभी बहुत already. टाइम है यार. इट्स लाइक तुम्हें ना फर्स्ट डे में चीची मिल गई है. तुम्हारे पास अभी भी कितने 20 दिन का बैनर है. पूरे 20 दिन है यार. Let's go in and have a look. मेजर इवेंट भी आएगा फर्स्ट हाफ में. एंटर द रुइंस. इमेजिन अगर नाविया ट्रायल के लिए मिले अपने को. ये कैरेक्टर काफी है. न्यूविलेट अकेला संभाल लेगा. बतख को देखता कर दिया ट्रांस ने. क्या समझा नहीं मैं. एंट्रेंस तो बड़ी प्यारी है. गूगल ऑटो करेक्टर. अच्छा ऑटो करेक्ट. तेरे को सिर्फ चीची मिले. चलो लड़ते हैं अब. आ जाओ. Be sanctified. भाई ये जो नीचे से आता है स्प्लैश उसका क्या मतलब है? ये जो नीचे से आता है. बत्तख कोको के पास
क्या है पता है? Watch it! The floor here isn't safe! ये बढ़िया था, अनएक्सपेक्टेड एकदम। मेरे पे भी है। ठीक है। This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it too. ये भाई नाविया को बांध के रखो Most यार। likely dissolved the moment they fell in. You should go back safely, नाविया। You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just... don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... शाबाश पाइमन, शाबाश। No, you're right. मेरी फुरी ने देखियो, कट सीन से बाहर आने तो देखता हूँ। I'll leave this to you. From the look of things here, maybe there's no way back. Hello मरभाई, welcome to this stream. क्या हाल चाल? Complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. सही बात है, फुरी ने नहीं मिली तो अकाउंट बेच दूंगा। ये भी सही है। I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Seems like there isn't any other option. All right. Come with us for now then, but please be careful. मैं कहा अभी धक्का मार देते हैं इसको। क्या होता है, लेवल 90 तुम लोगों ने एक ही दिन में कर दी। 71 164 भाई कहां से लाए तू इतना एनर्जी रिचार्ज इसमें? क्या दिया तूने इसको? पवोनियस स्वॉर्ड, नाइस। थर्टीन 10 एचपी कितनी थी तेरी यार? एचपी कम रह गई यार तेरी। पवोनियस कितना दे रहा है? 51 दे रहा है। वेपन कितना दे रहा है? 61 दे रहा है। 51 अगर तेरा चला गया तो 150 एनर्जी रिचार्ज चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुझे। यहाँ पे ना एचपी गॉबलेट देके देखियो। 18-3 ठीक है, बिल्ड अच्छा है, पर मुझे लग रहा है तू एनर्जी रिचार्ज का सैंड से हटा के अगर एचपी का लगा दे, तेरा ना ये पूरा पहुंच जाएगा 40k तक। और न्यूबलेट के साथ फैनफेयर पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएंगे। और अगर तू C1 के लिए जा रहा है, C1 में तुझे पता ही है भाई 100 फैनफेयर पॉइंट्स ऐसे ही मिल रहे हैं और वो बढ़ जाएगा 400 तक। बिल्ड काफी सही है। पानी में चलते हैं। Let's try climbing over from the side. पानी में नहीं कूद सकता मैं। डोंट टेल मी, मुझे काजुआ लगाना पड़ेगा यार। शिट, अब मैं चेंज भी नहीं कर सकता। एलेक्स लैपिस, वेलकम टू दिस स्ट्रीम। क्या हाल चाल? सेंसे कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला अभी तो। मुझे जाना कहाँ एग्जैक्टली? अच्छा ऊपर जाना है। क्या कर रहा हूँ मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे जगह ही नहीं है। रुको, कुछ होगा यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया।
हाँ वो बैरिकेड्स बने हुए हैं ना। मैं यार भूल गया हूँ, गेम के बेसिक्स ही भूल गया हूँ मैं भाई। ये स्टार्टिंग में बताते हैं वो लोग भाई, जब मॉन्स्टार्ड में होते हो तुम लोग, स्टार्टिंग के डोमेन में आती है ये चीज। चलो अब किधर जाना है? अब अपने को जाना है उधर। टूट जा, आई मीन टूट जा। कोई ट्रेजर चेस्ट है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। लाडर्स हैं, लाडर्स, ओके। फुरीना में पानी को चला के दिखाओ भाई। इस पानी में फुरीना गई तो डिजोल्व हो जाएगी यार। प्राइमोर्डियल सी वाटर है नीचे। डोमेन के बाहर आके दिखा दूंगा। ये इतनी छोटी क्यों हो गई? There's something wrong with this bridge. Run for it. Shit. मैं क्रैक में फंस गया था भाई दोबारा। इस बार मैं रुकूंगा ही नहीं भाई, मैं रुकूंगा ही नहीं। चलते हैं। नाविया बे बोला 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 बोला। विजन बदल, विजन बदल, उड़ा के ले जा भाई। गिर गई। डोंट टेल मी वो गिर गई। RIP नाविया। ओ वेल शिट, जिंदा है। आई मीन अच्छा हुआ जिंदा है। Demoiselle. वेट, क्या ये? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Oh, was I sleeping? To don't tell me ये आफ्टर लाइफ है। Yes, it would appear so. अबे ये तुम लोग कैसे सुन रहे हो मेरे क्वेश्चंस? I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. सर फर्जी सिल्वर भाई। Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. This is a familiar feeling, yet something's a little strange. कोई बता सकता है क्या कि ईयरबड्स में क्लॉक जैसी साउंड टिक टिक आवाज क्यों आ रही है? फटने वाला है वो। मजाक करो, मुझे नहीं पता। Is something the matter, demoiselle? Oh, Meta no. this, meta No, that. I'm fine. Have you ever met a girl before? समझाओ I was भाई। just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Okay. Right. Yes. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये वो जो पानी लीक हुआ था यहाँ पे उसके पहले का सीन है? How have you been? फ्लैशबैक है ये? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. भाई मेरे को I wasn't इनका even the डेथ सीन guarantor नहीं for that देखना है। person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down. That's right. ऐसा लग रहा है इसकी आंखें किसी ने पकड़ के नीचे What खींच was दी it that है। you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. खुद वर्क करके खुद स्टोरी भूल गया सिल्वर। ये भी ठीक है भाई। तुम्हारा हेडफोन। Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared.
Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. मैंने सुना है इसकी किट में ना रोजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुछ एनिमेशन आएगा Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is some... No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I've heard this name before. Sometime recently, I'm Shit. sure of it. मुझे लग रहा है मैं सही हूँ Why are there so few people around here? We must mind the time, demoiselle. We still have important... Huh? Well, now, did you... Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the opera? ना या फिर ये शायद खाली डेड लोगों को देख रही है रिग्रेट कर रही है Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? इतनी बड़ी आँख खुलती हैं इसकी इंटरेस्टिंग प्लेबल नाविया दे रहे हैं ये लोग Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. ओके पर ट्रायल किस चीज का चल रहा है भाई Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Where's... And as for the judge... न्यूविलेट Huh? हाँ नहीं है Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't... All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor. ये क्या हो रहा है Head of the Spina ये वॉबल क्यों हो रहा है सब Someone held in high regard by every soul in Poisson. Okay. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. ये इसका गिल्ट है भाई उसको विजन्स आ रहे हैं अब जितने लोग मरे सब इसको ब्लेम करेंगे भाई PTSD है इसका Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. Guilt. Yo guys, yo River, welcome to the stream. So many difficulties. You are one with us. We are inseparable. ये कैसा केस है We भाई are one big family. All of us who are from सब वॉबल कर रहे हैं भाई not a good inextricably sign linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Okay. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct.
I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Hey Lazy Goku, welcome to the stream. Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. ये डूब गई क्या? सब आफ्टर लाइफ में एक साथ जा रहे हैं? How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? इससे क्या हुआ भाई? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! ओके कुछ तो हुआ भाई. मतलब चार्टनेस. मेरी 4.8 का 10 वर्ल्ड क्वेस्ट मेरे से साथ हो गया. क्या बात है? Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty. अगर ये गिल्टी प्रूफ हो गई भाई मर जाएगी. अगर ये गिल्टी प्रूफ नहीं हुई तो बच जाएगी. वो दोनों समझ गए इसके सबऑर्डिनेट. आफ्टर लाइफ का कोई सीन है भाई. ये आफ्टर लाइफ का कोई सीन है भाई. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help. Please do not mistake her actions as being otherwise. क्या चल रहा है भाई इधर? Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Ioratress भी है भाई यहाँ पे. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kind. Everything is measured here in the nation. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. गलत टाइमिंग भाई. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? ओह डूड ये क्या हुआ एकदम से? ओ वेट मैं भी ऐसी आइज बना सकता हूँ. ये देखो. If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also skip this भाई. ये skip करने वाली चीज नहीं है. And that is how we will enforce justice. My head. It hurts. याद आ रहा है इसको. माँ कसम खिलाओ पता लग जाएगा. Demoiselle. जग जा. It hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. कोई कुछ नहीं बोलेगा. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but... Yes, finally. All dead. याद आ गया इसको. अब ये जिंदा रहेगी. पर फिर फेस बना रही है रोने वाला है. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd. भाई जितने एक्सप्रेशंस नाविया की शक्ल पे है ना मैंने आज तक किसी प्लेबल कैरेक्टर की शक्ल पे नहीं देखा है. भाई जितने एक्सप्रेशन नाविया के पास है ना और किसी के पास नहीं है. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn?
मैं मुक्का मार दूंगा उठा के मेरे से कुछ बोला तो. How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Ignorant. Oceanoid? Maria belongs to us. अभी क्या है एकदम स्प्लिट सेकंड में? ओशनोइड था क्या वो? After all that happened, she should not be left alone in Poisson. सही था मैं. What are you saying? No more excuses. सब ओशनोइड बन गए. He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? जो भी डिसॉल्व होते हैं उन सबकी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है और सब वो बन जाते हैं भाई. ओए सिल्वर स्केच वेलकम टू द स्ट्रीम. स्केच स्पॉइलर मत गिराइयो, बता रहा हूँ. पहले पिछली बार गिरा दिया तूने. इफ शी विल बी प्लेबल. हाँ प्लेबल तो होगी भाई. मैंने चेंज किया बिल्ड. जरा देख भाई आर्कॉन क्वेस्ट के बाद देखो यार. अब मैं बहुत अच्छे पॉइंट पे हूं मैं. यहाँ रुक जा, मुझे सीन से बाहर आने दे. Silence. Oh. Elemental burst. That's... Monsieur Neuvillette. ये क्या हो रहा है? Bye no spoiler needed. Bye River. Such commotion is prohibited in the court. The accusations you Take a just sketch. presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, monsieur. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance क्या to है leave ये? this place. Court of the Dead. What's got loose? My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. ये रोए बिना नहीं रह सकती भाई. यो सिल्वर, यो डिशम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. स्काईवर्ड आर्टलेस अच्छा है, मैंने सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया. सुना है कि बेस्ट वेपन है. Malus. Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. R.I.P. सिल्वर भाई. ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है. सोच रहा शार्लेट कर ले यार, काफी अच्छी है न्यूविलेट के लिए और फुरीना के साथ चलाने के लिए. डूड क्या क्रेजी सीन था यार, मजा आ गया यार. No, wait! Just a second! बचा लिया इसने, ट्रैवलर ने. You're awake. Good. ओह, न्यूविलेट ने बचाया है. सेल बैन फॉर क्यों गए यार, समझा नहीं मैं. पता है अभी अभी कॉल ऑफ ड्यूटी डिलीट की है गेंशिन की अपडेट के लिए. डैम. मेरी शार्लेट C2 क्या बात है. Malus and Silver were still alive and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I think I saw 2 oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. अच्छा गिर गई थी पानी में ये. ओशियनिड बोलते हम लोग. ओशियनिड्स बोल रहा है. ओशियनिड्स ओशियनिड ही बोलेंगे भाई, ये नहीं बोला जा रहा मेरे Were से. it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. डैम, मतलब ये प्राइमोर्डियल सी से बच के बाहर आ गई. Wait, did you say oceanids? You mean like what happened with Vache? So people that are dissolved become oceanoids. Perhaps those 2 oceanids were the people you saw in your dream. शिट डोमेन में है तो हाँ नहीं देख लूंगा मैं. टेंशन क्यों ले रहा है? I always told... जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में उनका तो मैं देख सकता हूँ कहीं से भी. As long as chat exists. फ्रॉस्टी भाई, बर्फ भाई, वेलकम टू द स्ट्रीट. Are you okay? Oh, I am quite all right.
Perhaps there's something we could chat about? ये इतना नर्वस क्यों लग रहा है भाई? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. बतख उसको बोला हूं गेम खेलूंगा. डैम डैम, क्या बात है फ्रॉस्टी? Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Melopede has not been too much for her, has it? बाय सरपेंट, वेलकम टू द स्ट्रीम. ये बंदर रह ही नहीं सकता है मेलुसीन्स के बिना. ये निवलेट एकदम मुझे उसकी याद दिलाता है. वो अरे रहने दो, नहीं मुझे लगा ये चार्ट में नहीं है सेंस है. भाई लोली सिम पे भाई निवलेट. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. एफ मेरे को डेया मिली सुबह, फिर ग्राइंड किया 30. भाई बतख काफी लकी पुल्स गए तेरे. तू भी देखे तो तेरे को कितने पुल्स में 2 5 स्टार मिल गए. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that, he hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. क्या बात है. डेंड्रोगल C4 बिल्ड करूं? कौन सी डेंड्रोगल, याओ या कॉली? सही है भाई फोर्ट्रेस. क्या मतलब तू मुझे तूने कुछ गलत सुन लिया, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गया तू. मैं बस निवलेट की तारीफ कर रहा था. कितनी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन लग रही है भाई. बतख मेरे को इससे कम में मिले थे. Yes, of course. This isn't going anywhere. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. Good. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Maybe Arlecchino villain नहीं है भाई. पुरीना उतनी खास भी नहीं लगी मुझे. नाविया भाई, नाविया और नेव दोनों निकालने यार. Amid my astonishment, I ran into the Knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't. I hope Navia can get back on her feet. भाई मैं नहीं निकालता नाविया. मेरे मन में पता है क्या था, मैं जा रहा था साइनो के लिए सेकंड हाफ में, क्योंकि मेरे पास C2 नाहिद है और कैरेक्टर्स भी, आर्टिफैक्ट भी रेडी है. अब तो भाई मैं जा रहा हूँ फुल ऑन सेविंग मोड में. पुरीना के लिए ट्राई करूंगा, कौन से निकलते हैं. तो नेक्स्ट ये निकल रही है भाई इस आईडी पे. क्लिप देखी बाय द वे? नहीं सरपेंट यार, जब तक मैं आर्कॉन को इस नहीं कर रहा मैं और कहीं नहीं जा रहा. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. रुक जा नाविया. Guess we should get going again. 37 40 नहीं हुआ अभी तक तेरा. 99 207 151 ठीक है. वैसे 37 तक आ गया है तू. इतना भी क्या नंबर्स में घुसे, ऑलमोस्ट तो पहुंच ही गए. काफी सही बिल्ड लग रहा है देख के. तेरा एनर्जी रिचार्ज कितना है? 150. उसके साथ चांस नहीं ले सकता तू, क्योंकि तू ER का वेपन दे ही नहीं रहा है. ठीक है, बट आई गेस अगर तू जेड कटर की जगह पाइप दे दे इसको और यहाँ पे HP दे दे, ज्यादा अच्छा बिल्ड हो जाएगी तेरी. जस्ट सजेशन दे रहा हूं मैं छोटा सा. एनर्जी रिचार्ज बढ़ जाएगा तेरा पहले से. क्रिट रेट थोड़ा सा कम होगा, पर कितना कम होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तेरे क्रिट रेट पे. 44 ही जाएगा. 50 के ऊपर रहेगा, सही है. डैमेज गिर जाएगा. अभी देख, यहां से तुझे 20% HP मिल रही है ना. अगर तू यहाँ पे HP का परसेंटेज लगाएगा वो उससे तो ज्यादा ही होगा.
40,000 पहुंच जाएगा तू, तेरा एनर्जी रिचार्ज भी बढ़ जाएगा। आई गेस 160 के आसपास हो जाएगा ये स्किल करने के बाद। तेरा क्रिट रेट थोड़ा सा कम होगा, बट आई गेस 50 के ऊपर रहेगा। दैट इज मोर देन एनफ। ट्राई करके देखियो एक बार, दोनों ये बिल्ड को ट्राई कर, बेस्ट वन के साथ जा। The Steambird is an excellent publication. Yes, if you wouldn't mind my company. Another one joins the party. Let's get going then. क्या मस्त डायलॉग बन गया भाई ये। चलो, वैसे तुमने नाविया को धोखा क्यों दिया? मैंने धोखा नहीं दिया भाई। भाई बहुत अच्छा भी फ्रॉस्टी नहीं था थोड़ी देर पहले, बड़े खतरनाक सीन आया था अभी। साइनो विद वेपन है मेरे पे, क्या बात है। चार्ट स्किप? कौन सी चार्ट स्किप? मेरी देख, तेरी तो भी देखी थी। और द फक भाई, साइनो बहुत टट्टी है, मत लेना। अरे भाई मैं फन के लिए पुल करता हूँ, मेरे पास इनफ कैरेक्टर है भाई अब इसके लिए। अब मुझे जिसमें मजा आ रहा है मैं उसको पुल कर रहा हूँ, पर अब नहीं करूंगा क्योंकि नाविया को मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ अब। ओके, और किसी की चार्ट तो नहीं गई ना? कब देखा था? अभी तो दिखा के गया था भाई तू। आई हेलो, तूने सुना नहीं था? मैं पूछ भी रहा था तेरे से कुछ। वेलकम बैक। आए, ये हंसी क्लिप होगी भाई। कौन सी हंसी? मेरी देख या तेरी देखी तो थी यार अभी। मैंने तेरे को क्या पूछा था, मैं भूल गया। कुछ तो क्वेश्चन पूछा था। तेरी एचपी कम थी ना, मैंने बोला था कि इतना एनर्जी रिचार्ज किधर लेके जाएगा। इसकी जगह एचपी का देके देख इसको, मैंने बस ये बोला था तेरे को। तेरी ये 40 के हो जाएगी, एनर्जी रिचार्ज भी काफ़ी मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुझे एनर्जी रिचार्ज में, क्योंकि चलाएगा तो न्यूवलेट के साथ ही। न्यूवलेट के साथ 160 तक डिसेंट रहेगा तेरा, उतना बच जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बस ये बोला था, बाकी तेरे आर्टिफैक्ट्स मैंने देखे थे। क्योंकि पता है न्यूवलेट के साथ फैन फेयर हाई चाहिए इसको। 160 ना फेयर, ट्राई करके देखियो एक बार। ये फोटो खींच रही है भाई, ट्राई करके देखियो एक बारी, फिर बताइए। मैंने जो गाइड देखी उनके हिसाब से बता रहा हूं मैं। Settle down. Breaking news! Our bond is strong. Lightning. Let the world collide. मैं न्यूवलेट को निकालूंगा ही नहीं बाहर, देखना तुम लोग। Smile. ना पूरी ना बिल्ड है ना वो बिल्ड है, बस ये एक हीलर ढंग की बिल्ड है मेरी ना। न्यूवलेट तू जा यहाँ से। अरे 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 हीलिंग चाहिए, नो प्रॉब्लम। अटैक चाहिए, कोई बात नहीं, ये लोग अटैक भी कर लेंगे। मजा आया यार, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया। ओके, क्योंकि ना मैंने उसकी गाइड देखी थी। एक तो वो है टीसीएस जो मैंने बताया था, द गेंशिन साइंटिस्ट कुछ कुछ कर था, टीजीएस। फिर से टूटने वाला टूटने वाली सीढ़ियां। इस बार नहीं गिरेंगे हम। ओ नहीं 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 गिरेंगे हम। ये टीम कैसी है? कोपियम भाई, शार्लेट लेवल 1 है मेरी, पुरीना लेवल 40 है मेरी। मैं नहीं दोनों को यूज करने वाला हूं अब। इसके लिए कोई विंड ग्लाइडर नहीं है क्या मेरे पास? यही सही है। जब तक विंड ग्लाइडर ना लगो मेरे को मजा नहीं आता खेलने में यार। ट्रेजर चेस्ट तो नहीं ना बाहर को? एक मिनट रुको। स्माइल। Take these photos to the Steambird. Watch out! Garabat's falling over
How dare you! How brilliant! मेरे सिपाही कहाँ गए? ओह वेट, आ जाओ। Stand with me. ठीक है, मुझे पता है मैन्युपुलेट यूज करूंगा तो जल्दी हो जाएगा यार, पर ऐसे खेलने में मजा आ रहा है। Shower me with praise. Let my name echo in song. हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। चार्ज अटैक, हील हो गया मैं, बढ़िया। अब अटैक चाहिए। अरे मिल गई यार हीलिंग। चेंज चेंज, ये क्या ग्लिच है यार? मजा आया यार, ये बबल्स मस्त लगते हैं यार। ये नीचे से क्या आते हैं देखो, आएगा आएगा आएगा, अभी आएगा। नीचे देखना, नहीं आया इस बारी। फिर टूटेगा। It seems we're almost at the top. Keep it up. अरे ट्रेजर चेस्ट फाइनली एक तो मिला, बहुत टाइम से नहीं मिला था। कुछ ग्लिच होने वाला, नीचे से ऑडियंस आती। ओ आधा क्वेस्ट भी नहीं हुआ। बेस्ट पार्ट है, अभी बहुत कंटेंट है यार। मैं तो सेट हूँ भाई। शार्लेट थोड़ी लेवल अप कर लेनी चाहिए। लेवल 1 पे खेलना कुछ ज्यादा ही डेयरिंग चीज कर रहा हूँ मैं। Time to shine. I'll settle this. Our bond is strong. Hold that pose. Take these photos. कर लेना चाहिए लेवल अप थोड़ा, मरे जा रही है बेचारी। अबे यार मुझे न्यूलेट यूज नहीं करना यार, बट लाइक और कोई चॉइस नहीं है अभी। ठीक है खत्म करते हैं। The tides beckon. ये थोड़ा हार्ड हो गया भाई लेवल 1 कैरेक्टर के लिए। An oversight on my part. इसलिए C1 चाहिए होता है भाई। सैड लाइफ, अब ये मरी रहेगी यार। आज रात तक स्ट्रीम एक्ट 5 कंप्लीट करना है आज। यस आज ही खत्म करूंगा मैं इसको, क्योंकि कल अपने को फुरीना क्वेस्ट भी करनी है। जिंदा हो जाए यार फुरीना। ओह ये क्या है? लोकेशन तगड़ी है भाई। Looks like we've reached the end. Yes. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the... The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big.
stone slates. It seems like they were put here as an offering. Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that The surrounding walls also. There's something written below. Let Paimon see. पानी की bottle, yes. That would fit the There's a person. Buy bottle, बत्तख, bottle bot, अच्छा. The people will all विक्रम be and dissolved बत्तख. into the waters. अलग ही level जा रही है chat. Archon will remain, weeping on her throne. हाँ prophecy, yes याद आ गया prophecy. को थोड़ा serious mode on करते. सीरियस सीन चल रहा है भाई. तो एकदम ही फुरीना ड्रॉ कर रखी है. प्राइमोर्डियल सी More मत पीना. information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. देख फ्रॉस्टी सिल्वर की नहीं हो रही स्ट्रीम, बफर तेरी होती है बफर. भाई वो यूट्यूब का ग्लिच है यार, फोन वालों पे ना बहुत ही बफर मारती है. एक तो वो भी है, मे बी पिंक का इशू कभी कभी होता है इंटरनेट Don't में. blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. The history of the future. ब्रो टाइटल कितना सही है यार, द हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर. लोकी की याद आ गई भाई, लोकी का सीजन 2 बहुत फायर जा रहा है. सर मैंने ठीक कर दी थी बाद में. फुरीना हार्ट एजेस पता नहीं यार. 120 पिंग के साथ बफर. ये वाला पिंग नहीं कह रहा मैं. जब तो इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करता हो ना, वहां पे आती होगी तेरी पिंग. उस वाली ही बात कर रहा हूँ. एंड कभी कभी ना बफर मैंने वो भी देखा, अगर जैसे तूने ओबीएस में बिट रेट ज़्यादा कर रखा है नेट स्पीड से, तो भी होती है बफर. इट्स लाइक अभी मेरी स्पीड 100 Mbps है, मैंने ना उसमें बिट रेट डाल रखी है 8000. वहाँ पे 4 पिंग तो सही है तेरी. आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स. सॉरी आई जस्ट केम बैक. विनीत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. कोई बात नहीं, स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो कल आ जाना दोबारा. अभी देखो इसमें खत्म कर दूंगा आज पूरी. I really hope it doesn't mean that. एक गया है सिल, दूसरा नहीं. एक सिल्वर गया भाई. ओजी सिल्वर में भी जिंदा है भाई. Feels like these images are kind of weird when you look at them together. वाइट ही नूब है, ठीक है. वो तो है भाई, फोन में वैसे ही बफर होता है वो. कितनी भी सही सेटिंग रखूं मैं, मेरी 300 Mbps पे हो रही थी यार. That's right. If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the water's drowning fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? Images are in chronological order, shouldn't be fourth. The water's drowning fontaine come before third when the okay. And yet the order is reversed here. टीजर में फुरीना पानी के अंदर थी. The second image is also quite concerning. Watson, are the people in the images confessing to shit? If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Yes. क्या नाम था उसका? इजीरिया क्या था उसका नाम? जीरा. इजीरिया. I had never met her, but her appearance here does match the records. इजीरिया है वो. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if Celestia. sin. ऐसा क्या किया इजीरिया तूने? Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? मतलब प्रीवियस हाइड्रो आर्कॉन इजीरिया ने कुछ ऐसे किया, उसको सेलेस्टिया से बाउ डाउन करके माफी मांगनी पड़ी. Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? ना फ्रेंडली कोई वाटी नहीं होता, इतना बोला तो ट्रिगर्ड हो जाते हैं सिल्वरो. अरे थैंक्स यार. But who would have created these slates and left these words here?
seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. अरे फुरीना बनी कैसे आर्कॉन यार, वो तो थोड़ा बताओ। चैट तुमसे नहीं बोल रहा, मैं गेम वालों से बोल रहा हूँ, स्पॉइलर मत देना कोई। Honestly, who created the slates doesn't matter now. The real question is whether things will truly play out as the prophecy foretell or not. Yo, Yones, welcome back. Just came. अच्छा तो वापस आ भी गई। Damn, इतना टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। फास्टर हीलिंग स्लो है यार फुरीना की। चलो डोमेन का काम तो हो गया, अब चलते हैं बाहर। लेट्स गो अगेन। फ्रॉस्टी किधर थी? लॉल। Check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Yes, Spina di Rosogula. You still haven't. Navya Mishtan Bhandar. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Okay. Frosty good उधर ही रहे। About this directly. Will that be a problem? दुख में हूँ वही। डैम, Getting a little scared now that it's come to this. इसीलिए आता हूँ आप फ्रेंडली हो। अरे थैंक्स यार। She has long been Means a lot, man. secrets and will not give them up easily. There we go again. वही कह रहा था, मतलब किसी ने लिखा नहीं है इतनी देर से। Understands the present situation. Oratress, mechanic, tunnelist, cardinal. Cardinal क्या होता है? Cardinal. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best Chat bro. person to talk to. इसके अलावा भी कोई चाट है तुम्हारी? नहीं है, गेस यही थी। हाँ यही थी। I will be carefully considering my words tonight. Oratress नहीं है, Oratress, mechanic। हाँ तोड़ के लिखेगी अब। Tunnelist, cardinal। All right. I'll be on my way then. Bye. Navia Nivlet would depart you and Paimon heard the Spina de Rasgulla be sat। वो नहीं पढ़ा गया मेरे से भाई, जबान कट जाती मेरे दांतों से मेरी। अरे सुपर से या नहीं है। We've got a special menu prepared for you two tonight. एक बार और देखियो, अभी देखता हूँ। और एड्रेस सोलोज, अच्छा। And there's good food too. Navia, no, the boss is the best. You did great as well, Paimon. बिल्ड चेंज किया, अभी देखता हूँ। और एड्रेस असली टेस्ट तो तब हो गया जब टैलेंट लेवल 8 पे पहुंचेगी, 8 9 पे वो ई और क्यू। क्या ये मोना है? अरे मोना यहाँ पे क्या कर रही है भाई? Oh, that voice. Is that who I think it is? Oh, मॉन्स्टार्ड के कैरेक्टर फॉन्टेन में। It's you two. What are you doing in Fontaine? मैंने उसका डायलॉग स्किप कर दिया क्या? शिट। मेरा 60K तो ऐसे ही हिट करता है फुरीना के साथ। आज रात भर स्ट्रीम देखते हैं यार, वो तो मजा आ रहा है यार। लेडी मैजेस्टिस, डिड द स्टार्स नॉट टेल यू दैट वी माइट बी। ओह भाई दूसरी लाइन क्या रोस्ट मार रहा है ये बंदा, मैं यही चूज करूंगा। Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. डूड इसने तो रोस्ट कर दिया मिलते ही। Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? मोना इज द ट्रू हाइड्रो आर्कॉन। फ्रॉस्टी को बोलो। फ्रॉस्टी देख मोना आ गई। मोना ये तो सुबह ही आ गई थी मेरे अकाउंट में। कब 3 बजे खत्म? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। जब तक क्वेस्ट चलेगी यार। मुझे मजा आ रहा है इस क्वेस्ट में। पिछले का फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग था यार। I was just out for a stroll when I bumped into you.
Quite unexpectedly, if I might add. अमीर है भाई मोना, होटल बुक किया है इसने. Why did you think I was from Fontaine? Same lol. Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadt surname? मैंने तो बोला ही नहीं मैजिस्टस तेरे को. Yeah, let's go with that. Well, I By used the to way, have my own नहीं तो मैंने surname, which was ट्रेलर के टाइम में बोल दिया था ये some लास्ट other क्वेस्ट है. thing. वो तो By पता है the सबको. way, the old hag told me when she took me as her disciple अब that बस the first इवेंट step आएंगे, to वर्ल्ड being a क्वेस्ट great आएंगे. astrologist's pupil was to change that name. और लियोए का वो नया आइलैंड आएगा लैंटर्न राइट में. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her अरे wishes. डेनस्लिप का क्वेस्ट अगर वो आएगा तो एक और आर्कॉन क्वेस्ट है, Magistus इंटरल्यूड. is not the name of some ancient house or clan. मतलब इंटरल्यूड चैप्टर बचा होगा ना अब तो, जो एक हर रीजन के बाद आता है. जब भी डेनस्लिप आता है वो आर्कॉन क्वेस्ट से हट के होती है, पार्ट होती है, पर इट्स लाइक स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए इंटरल्यूड. It isn't? या एक्ट 4 आज ही खत्म किया यार. क्या बात है. Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. कोई नहीं स्पाई भाई, अगर तुम स्पॉइल हो गए हो, मतलब स्ट्रीम देखते देखते तुम नहीं रख पाए हो, मतलब स्ट्रीम बंद नहीं कर पाए हो, तुम अपनी क्वेस्ट अब स्पीड रन मार सकते हो टैप करते करते, क्योंकि तुम्हें स्टोरी पता है. अभी भी यही हो. यस, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, मैं एंजॉय करने वाला हूँ. बहुत ही टाइम बाद ऐसी आर्कॉन क्वेस्ट आई है भाई. I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. And may I ask what's your master name is? Astromancer Barbaloth Trismegistus. हाँ? क्या बोल गई ये? एस्ट्रोमांसर बारबेलॉथ ट्रिस. आगे चलते हैं यार, छोड़ो यार. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Understandably ऐसा बिहेव क्यों करती है? Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but once she took me in, she changed her name to Trismegistus. ट्रिस से मुझे बस एक टेट याद आता है. फॉन्टेन के नाम इतने ऐसे क्यों हैं पता नहीं यार. वो हमारे नामों को ऐसा बोलते होंगे, उनका कल्चर. आई क्राइड सो मच. अच्छा, चिप्स मांग रही. क्या यार को दीदी. अक्ष भाई चाट तो देखो. देखी तेरी तो चाट पढ़ रहा था यार मैं. फुरीना इज एसएसएस टियर. गुड नाइट आई गेस नाउ. ठीक है फ्रॉस्टी, गुड नाइट. हमारा बताओ मोना, फुरीना मिलेगी या नहीं? ऐसे कैसे बता दो भाई, जो चीज अभी तक हुई नहीं है. पुल करो तब पता लगेगा वो तो. Talk about excessive. मेरी आदतें चेंज नहीं हो रही, क्यों करनी है यार? Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Bye, जो मिल जाए. All the best, bye. How about the triple strength traveler or triple appetite paimon? Terrible! But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? 60 पिटी. क्या बात है. आई सी ए फुरीना इन अकाउंट स्पाई भाई आ जाएगी यार. स्पाई भाई की फुरीना. In Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while. Dorman Port. Mondstadt City. Dorman Port. मॉन्स्टार्ड में भी एक नया एरिया आना है भाई. डैंडलाइन सी और डोरमैन पोर्ट. मे बी वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट इनकमिंग सून. और ये उसका हिंट गिरा रहे हैं यहाँ पे. ईस्टर एग. That's a good thing then. At least we know you won't be dissolved. मैं स्ट्रीम देखते देखते वर्ल्ड क्वेस्ट करने जा रही. ओके. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same.
There's something ominous about it. The water, I mean. Did you come to Fontaine because the prophecy, Mona? That was the main reason, yes. Just a while back, the steam bird 25 पुल invited जमा me to take करूंगा, part in a आपको panel करना है. and speak about Okay, the bro. circulation of the prophecy as an astrologist. वैसे किस किस को उड़ाया आज? भाई अपनी चाट बड़ी प्यारी है. कोई स्पॉइलर नहीं आया. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. मेरा फेवरेट रीजन है Fontaine. क्या बात है? Auto clicker connected. I am watching stream silently now. Okay. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading. I'm afraid that ये this बोर is कर not रही है यार. something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astro. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must. कुछ काम का बता यार. Of course. The old hag could Hello do Pranav it. bhai, welcome to the And I stream. bet there क्या are हाल चाल? others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. I need to ascertain the accuracy of the prophecy. Could you help me get in touch with your master? Are you sure? All right, I'll help you. हाँ? It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Dude. मोना अपनी मास्टर से मिला रही है हमें, जो कि क्ली की मम्मी की दोस्त है. This is huge. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this सब is पढ़ गए, something सब only पढ़ I रहा can हूँ. do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the star's the best. Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. मुझे लगा न्यूवलेट आया यार. Do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Yes, Spina di Rasgulla. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business. I have now. some theories on If that. I receive any Okay. news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Well, we were making a ruckus. Try to keep it down next time, Paimon. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. Huh. The thing's... that's more. Decide good night sleep to replenish your energy. Yes. अरे मैं तो पुराना. अरे PM भाई, अच्छा तुमने नाम बदल लिया है. Okay, अब मैं याद रखूंगा. It's time to get up, traveler. We agreed to go see Novelette, so let's pack it up and get going. भाई सुमेरु और फॉन्टेन की आर्कॉन को इसमें जितना हम लोग सोए हैं ना, आई डोंट थिंक सो किसी आर्कॉन को इसमें हमने झपकी भी ली होगी. मतलब इन गेम बोरिंग नहीं कह रहा मैं क्वेस्ट को, बट इट कंटेन सम स्पॉइल इफ यू वांट टू. अभी मत बता फिर. गो टू न्यूविलेट्स ऑफिस. चलो न्यूविलेट के ऑफिस. ऑमलेट खाएंगे बैठ के कांच की प्लेट में. ओराट्रेस मैकेनिक नहीं क्या था. ओराट्रेस कार्डिनल मैकेनिक डानालिस नहीं क्या था. ओराट्रेस मैकेनिक डानालिस कार्डिनल के आगे जो भी है अरेंज कर लो तुम लोग खुद से. मैं ऑर्डर भूल चुका हूँ. ऐसा लगा उसकी स्किल से हुआ है. अब देख फुरीना. अबे यार शिट मैं भूल गया था यार. Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. मुझे लगा तूने ना अब देख क्वेस्ट के लिए लिखा है कुछ आने वाला है मेजर सीन. मैं खुश हो गया. ऑरेट्रेस मैकेनिक डानालिस कार्डिनल. यस क्लिप बोर्ड पे कॉपी करके रखा है सब लोगों ने. Like I said, I've already explained everything. Okay. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. Shit. You mean
We're all... Sad Did not life. arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about the... Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. भाई इन दोनों का झगड़ा कितना वो heated argument लग रही है. Good night, bro. Ayush, bro. Thanks for joining the stream. Spoiler of speedrun. All the best. You found them in some ancient ruins, you say? That's correct. Which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but Chart one of देखो, them was देख लिया? missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the Furina. sky, as if confessing. I don't. I've never seen such slates. Okay, guys, no spoilers in the chat. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? भाई साहब ये तो धमका रहा है यार. My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. मेरी फ्रीना ज्यादा ही broken हो गई है. I guess अब देखते हैं अभी. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? True. I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. ना मैं चार्ट में लिख के कैब में बैठ गई. There are several Okay. indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. मतलब निवलेट अब डिस्कवर कर रहे हैं इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. इसका क्या मतलब है दैट टाइप से? You. Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. कल कर लेना ग्राइंड. कल हूँ वो निकालेगी नहीं तब तक फ्रीना रुकेगी नहीं वो. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eunuchs, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me. You're Archon and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not... Oh! The opera's about to start. Toodles! टूडल्स कौन बोलता है भाई? आखिरी बार मैंने पता नहीं जब छोटा बच्चा था ना, मैं टीवी पे एक शो आता था भाई, मिक्की माउस क्लब हाउस, उसमें कोई तो बोलता था टूडल्स. आखिरी बार वहां सुना है मैंने मिक्की माउस कहीं की. 3 साल से पढ़ रहा लॉस्टी. क्या बात है. ये स्लोमो क्यों दिया इन्होंने यहाँ पे? Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. She seems deeply troubled. She seems to be deliberately hiding something. Doodles होता है वो. Outside for a while now. Noradress mechanic Danalis Cardinal. शाबाश. मैं भी जल्दी सोएगा आज. 12:30 बजे तो ये बोल रहा था जल्दी सोएगा. You are already late, bro. Recently started reading manga and etc. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? I'm afraid questions alone might not suffice. भाई ये चीज अगर एनिमेट हो गई ना, जो ये क्वेस्ट है,
नेक्स्ट लेवल चीज होगी भाई. We need to make her understand how dire the situation actually is. और जब भी फॉन्टेन का एपिसोड एनीमे बन के आएगा ना एपिसोड में भाई, बहुत ही खतरनाक मोमेंट होगा, बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा भाई. जस्ट लाइक इसे ड्रैगन बॉल जी में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आया था उस टाइप का. Everyone in her अलग ही inner लेवल सेट circle कर has रहा है ये noticed that क्वेस्ट. she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. Oreo, Mechanical, Pencil, they Mart, Shopee, Cadbury. ये क्या हो गया भाई? क्या बना दिया तुमने हॉरर का? हो गए भाई 1868 लिली फ्लावर्स. फाइनली आई कैन लेवल माय फूड अप. क्या बात है? If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. सही बात है. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. In that case, we will need help. But who will lend us their aid to do such a thing? Oh, I think I know who. Oh, Mona. Yeah, Mona ki master. Few days later, a boat somewhere in quiet Poisson. On a boat. छोटे डायलॉग दिखाते रहो, बड़े डायलॉग स्किप मार दो तुम लोग. That's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Furina is worth pulling, definitely. कल आता मैं भाई सेंसे मैं गलती से स्टार्ट कर दिया यार. Just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. Oh wait, आर्ली चीनो को बुला रहे हम लोग क्योंकि उसके आगे फटती है इसकी. Like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. आज तो नहीं होगा. It's nice to enjoy tea here, you know. Care for a cup? हाँ अभी नेव आएगी इधर पे, मेरे को पता है. Lend me your ears, everyone. दो सब काट के इसके हाथ में. Perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? ओह हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है, इसको मैं भूल ही जाता हूँ. ये भी एग्जिस्ट करता है. No. Then how about you, good sir? मेरा दिन निकल गया आर्कन क्वेस्ट में, मेरी रात निकलेगी. I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, बोट ये लोग वन पीस ढूंढने जा रहे got हैं. a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. That was a little ओके क्लोरेंट भी है यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us आज together to कंप्लीट discuss ना something. होने वाला आर्क. तू मुझे बता रहे अभी भी इतना कंटेंट है भाई, मजा आएगा यार. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. भाई आधा होगा भाई. Please. आई डोंट वांट ये क्वेस्ट खत्म हो जाए यार. बहुत टाइम तक कोई आर्कन क्वेस्ट नहीं आएगा. बहुत अच्छा क्वेस्ट जा रहा है भाई. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even Good pick night. up Good some night, fancy depressed oratory vibe. tricks to impress your boss with in the future. मैं बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि मैं बहुत देर से इसको रोते हुए देख रहा हूँ. हंसती बहुत कम है ये. ऑरेट्रेस मैकेनिक डानालिस कार्डिनल. मैं पानी पीऊंगा. 40% तक हुआ होगा मेरे हिसाब से. बहुत अच्छा है यार.
I can smell it. ये रोने वाली, फिर से रोने वाली है. कुछ होगा. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. अच्छा, उसकी बात हो रही है. राइसली की. क्या चल रहा है यहाँ पे भाई? टी पार्टी 30 पुल्स कर लिए तुमने. क्या बात है स्पाई भाई? Do any of you have experience Wait for Act 2. Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, rabbits. Right. You were sick that day, weren't you? Rabbits. Zero. Storm. I've also gone diving to catch some fish. बड़ा खतरनाक सीन है भाई वो. Does that count? सुशांत भाई, वेलकम टू दिस स्ट्रीम. क्या हालचाल? You may or may not have अच्छा, heard. 30% कह रहे हो तुम. Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. अबे ये तो आर्टिफैक्ट का नाम है. Though that was their name, they did not hunt animals. Okay. But rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. King Remus? Rimaru? Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society. Zero का rabbit. मैं कहीं भी सुनता हूँ मुझे वही याद आता है. A unique methodology of hunting in their wake. Furina. To you too, bro. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. मैंने कोई चार्ट Sometimes a lethal मिस की क्या? implement will also be necessary to deal with the prey. I got at 75. अरे congratulations. I was like भाई बस फुरीना क्यों लिखा है? Congratulations. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? मैं बेड बनाएगा सो जाएगा. For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Okay. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry. सभी को मिल गई you फुरीना. can count on our techniques. भाई सब काफी टाइम से सेव कर रहे हैं, उसके लिए मिलनी भी चाहिए. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the ball. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. Nice, I'm bro. quite the multitasker, if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. अबे चल यार. इसकी वॉइस नहीं सुननी मुझे. Kind of person who would catch loads of fish. Gave 2-piece VV and new artifact of Fontaine. तुमने फुरीना को VV क्यों दिया है? और आई जस्ट अब तुम 2 न्यू पीस से गोल्डन वाले आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हो, हंटर की नहीं. नो मेरे को नहीं 60. अरे मिल जाएगी यार. अगर नहीं भी मिली तो 50-50 हार जाए तो इनफ टाइम है. तुम ग्राइंड करके सेव करके दोबारा निकाल सकते हो उसको. सुशांत भाई थोड़ा और यस ठीक है भाई. हम आगे चलते हैं फिर. मुझे नहीं पता था फुरीना एनिमो कैरेक्टर है यार. And I can be their assistant. With Okay. discretion, I'm sure. अभी करने आर्टिफैक्ट्स फिर ठीक है. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract other. I remember that you liked those too, didn't you? ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है क्या दोनों ये? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? मेरी आईडी से आर्टिफैक्ट ग्राइंड्स कर. अभी तो मैं खुद की आईडी में यार इतना ग्राइंड करना है यार. I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind as always.
However, our intention doesn't necessarily हम लोग यहाँ पे change the ट्रैप की बात containment क्यों कर device रहे and हैं? the type of implement we need. वो भी इतने डेडिकेशन से. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes. Wait, why is that? ये जोकर फेस मुझे राइडर की याद. Only a hunter who's a true expert Lol. at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. जुत्सु काइज़न का 13-14 मैं तो मस्त किसी दिन बैठ के देखूंगा जुत्सु काइज़न भाई. So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. पुरीना को फंसाने वाले हैं लोग. But we shall require बातों ही much बातों more में. courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. भाई लंका लगने वाली है पुरीना की. अच्छे से देख. अरे मेरा पूरा ध्यान यहीं पे है. टेंशन ना ले. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. पुरीना को बुलाओ. Chlorine hunting metaphor was just that, a metaphor. You will call this hunt because you should do at present. समझ गया था. What you need is simply secret she is keeping. Attempting to take her secret is an act of sacrilegious disrespect be done to prevent fountain from sinking. जबरदस्ती उगलवाएंगे मुझसे. This is neither hunter nor prey, but there must be a trap. Dude, मुझे बुरा लग रहा है यार पुरीना के लिए. थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया ये? Go to स्पीना दी रसगुल्ला बेस. चलो भाई स्पीना दी रसगुल्ला बेस. ब्रो तुम लोगों को अभी भी जमीन के अंदर रहना है. पुरीना भी लाइक आई एम अ जोक. अब देख अभी देखता हूँ आगे. जस्ट किडिंग. भाई एक मिनट मेरी आईडी पे कितनी पुरीना की डीपीयां हैं देखो एक बार. नॉर में टीसी क्या बात है. पुरीना 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 ही पुरीना है भाई. $42,000 71 72 160. सही लग रही है अब तो देखने में. अब तेरे पास की है. सही है भाई. की लेके बैठा है यार. सही लग रहा है बिल्ड. की थी तो यूज क्यों नहीं कर रहा था? की यूज करेगा तेरे को नहीं हटाना पड़ेगा एनर्जी रिचार्ज का. वो सही है तू तो फिर यार. सेट है पुरीना तेरी. नीलो का वेपन सीरियसली सही में बहुत रेयर वेपन है यार. मैं निकालूंगा यार इस बार नीलो का वेपन. नीलो नहीं निकालूंगा. नीलो से मेरा इंटरेस्ट चला गया है. He deserves to be my Nilo. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. भाई मेरे पैर सो गए भाई. मेरे पैर बहुत देर से फोल्ड करके बैठा था भाई मैं. चार्ट कौन सी चार्ट्स पाए भाई? जे के. अरे तुम्हारी चार्ट ही पढ़ ली थी मैंने जुत्सु काइज़न वाली. रिप्लाई भी दिया था यार मैंने. उसके अलावा कुछ मेरे को चाहिए. पूरी ना आ जाएगी यार. Orators mechanical tunnelist cardinal. Paimon thought they'd be at least a little frightened. चलो लेके आओ पुरीना को. Now that Paimon thinks about it, it's hard to say. After all, you're the most reliable person. Did you just pour some? Paimon's never seen. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. ये कौन बोल रहा है? मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ पर. Who's that voice? But there's no one here. Ah, have you forgotten me already?
familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Dude. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. तो मतलब जिसने हमारे सिर में बोला था सुमेरु में वो मोना की मास्टर थी. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Who are you and what do you want with us? Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Friend's disciple on a whim. Friend's disciple. मोना की मास्टर की कोई फ्रेंड. ओके नहीं समझा मुझे. या फिर ये क्ली की मम्मी है. Friend disciple, so this means friends of Mona's master, the... ये कौन है? Allow me to ask you, will Fontaine prophecy come true? Prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. Wait. You may view such things as the history of the future. या फिर ये अलग विच है भाई. ये हो सकता है कि ये अलग विच हो. मोना की मास्टर नहीं है ये, क्ली की मम्मी नहीं है, अलग है कोई. एन लिखा भी आ रहा है इवेंट से. I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? There it is again, fate. Can there really be no exceptions? Ah, so you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. The tea in the teacup is about to be gone as well. भाई किटी पार्टी की टी है. शिट, ये रेफरेंस मैं अब कैच कर रहा हूँ. I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. डैम भाई बहुत तगड़ी तगड़ी थ्योरी क्राफ्टिंग आने वाली है इसके बाद. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's... Mage N, is this the clue you are leaving for us? वो which cult की member? Gotcha. What, कौन है ये soul here? अगर तुमने वो इवेंट किया होगा टी पार्टी का, उनकी एक मेंबर है ये. I want to hear someone talking. All right, coming. You're getting more diligent, Paimon. Hey, it's you. Silver hitting emote on dialogue. What do you mean? मैं कोई बटन नहीं दबा रहा भाई. Well, I see I've walked in on some lively banter. नहीं किया टी पॉट. एक इवेंट था जिसमें सारे विचेस ना लेट्स से टी पार्टी के नाम पे मिलती है, मीटिंग करती हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचेस हैं. उनमें से एक क्ली की मम्मी है, एक मोना ये जो खड़ी है इसकी मास्टर है, एंड और भी विचेस थी अलग अलग नाम से, लाइक मेज एंड ऐसे कर करके. तो ये उन दो के अलावा भी तीसरी मेज थी. मेज या फिर विच जो कहना है तुम कह सकते हो. Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting. आज पूरा इवेंट खत्म करिए, पूरा आर्कॉन को खत्म करके सोऊंगा मैं. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. Charlotte होगी. Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte.
You remember her, right? That daredevil journalist. सीधा पूछ लेते वो यानफे जैसी जो दिखती है. I'm in full support of her view. Mona Master Prophecies are playable very when. important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a... देखिए कहाँ भी उसकी मास्टर. Glad to hear something sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes Wait, up. तो इसने बात भी नहीं की उससे और काम हो गया. Nice. Actually, someone already came over. Huh? You tell Mona about your mysterious guest. 50-50 जीत गया. Congratulations, Ace भाई. बत्तख मिल गई finally. क्या बात है? I believe she came to pass a message to us. Even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? Maybe वो हमें कह रही थी अबिस में जाओ. The Hexen Circle members बेल are से लड़ो. certainly anything but स्कर्क से ordinary. मिलो. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. अलग ही member है. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Whoa. The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Makes sense. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... पता उसने एक बात और कही थी कि जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उन्हें हम टाल नहीं सकते हैं फॉन्टेन में, मतलब फॉन्टेन में, पूरे टेवात में. बट ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो गॉड्स भी नहीं देख सकते. डूड बहुत बड़ा हिंट है. Perhaps it is something that you cannot know right now. True, her words were meant as helpful hint, but when will we realize their value and meaning? Was that the best answer that my question could have gotten? Paimon? Are you two alright? I got Charlotte, but Furina नहीं आई. अरे वो भी आ जाएगी यार, अभी तो 20 दिन है. Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? जय भाई का लक था, साथ में मिल गई. क्या बात है? I feel that same sense of desperation too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I got Charlotte, but Furina नहीं आई. जी तो मैंने पढ़ लिया था. 60 पेटी पर हूँ. I did आ originally जाएगी. think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we... Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. Don't worry about it, and thank you. It was worth trying to निकल comfort इधर you, से अब. even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what Mona said. But hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. आप आओगे प्रीमो ग्राइंड, समझा नहीं मैं. ओके देन मैं चलता. गुड नाइट सिल्वर भाई, सुबह से ग्राइंड कर रहा था. गुड नाइट एस भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस स्ट्रीम. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. गो टू द न्यू स्टैंड. अच्छा नहीं, वो तो ऊपर जाना पड़ेगा ना जमीन के.
वो कोई वर्ल्ड क्वेस्ट है, मैं अभी नहीं जा रहा वहाँ पे. यहाँ एक्ट 5 करो. एक्ट 5 में टाइम देख लो तुम कितना लग रहा है मुझे. टाइम तो लगेगा सभी चीजों में. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Lol. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never... She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? That sure seems to be the case. Seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Continue moving forward. Traveler, traveler only, yes. We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! It hasn't already sold out for the day. So delicious the last time we tried it, despite the tense situation. One slice of cake, please. कौन आ गया? Someone showed up after all. Oh, wait, you're ये तो मेल्यूसिन है भाई. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee. Do you come here often? Usually every day. Hoi, I'm back. Welcome back, Crazy Bhai. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that Buy wouldn't keep cake me from OMG. having some क्या हो गया today. यार? No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Huh. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being... Oh, you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. Okay. शिज़ुन के बारे में थोड़ी कुछ चीजें पता लग रही Humans हैं. are creatures that are saddened easily. Yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. Windows 10 की चाहिए कोई देगा. Beautiful. Are you 16 years? Yes. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. And there she goes. All right, let's dig in. Paimon. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could always eat delicious food here.
216 आवर्स हुआ। डैम, जीएफ नहीं है, बना काम आएगी। क्या चल रहा है भाई? You're in full mood today. क्या चल रहा है भाई चैट में? We're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. Yes, शार्लेट से शार्लेट की बात कराएंगे। Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? You've got some nerve. You just used us to make some quick Mora. Can we negotiate a profit split? You needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you... It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? ये तो पहले से ही prepared है भाई। You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like... Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil. Nice. In which case, can this... Huh? So your article in the... Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to... Yeah, are we? Why not? If... Oh, and that... Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief that... Ooh, so much to get done now. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do किस today? के लिए नहीं भाई, अभी मैं खाली आर्कॉन क्वेस्ट करूंगा। That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. Okay. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, so in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. Lag. That sounds a bit sad. but I've always believed तुम्हारा that it's best to इंटरनेट do होगा what you वो, enjoy. मेरा तो सही चल रहा है। Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be time. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. मिस क्या मिस? तुम्हारी चैट पढ़ी तो थी भी मैंने। I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist, but anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall ये we? फालतू की कॉन्वर्सेशन क्यों की भाई हम लोगों ने? The Finally. sights and scenery can be a pretty soothing. अभी और टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। Thinking, if it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, 26 likes. Let's and go. what would we do? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? It's just like Charlotte to say it. Suddenly trying to consider what to do is pointless. Moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We बात तो didn't सही have है. to either, with us always being on the road and whatnot. Until that moment comes, I think I'll keep journeying on. I mean, still traveling? Yes, cherishing every single moment that I have looked upon this world. Wait, isn't that what we've... Okay, okay. ठीक है, फोटो हो गया. Finally. अब कुछ एक्शन मिलेगा भाई? Feels like he'll grow mold
cold if you stay here. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. Ah, so the two of you are still here. Oh, you're from the Palais Mermont? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervilla. Not at all. Yes, inside. A riot? Well, that's. Lady Farina was loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon. How long is the quest? I have no idea, but मैं खत्म करके ही उठूंगा यहाँ से. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. Then stream would at least take 3:30 am. I have no problem with that. So, you mean she's still missing? That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. सही बात Even है. if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation. Don't worry, this is more than enough to go on. Is that so? Well, all right then. भाई ये क्या look दे रहे हैं एक दूसरे को? We should hurry over to Poisson then. You sure caught on quickly. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. 5 बजेंगे गेम खेली थी सारी 7 बजने वाले थे. डैम इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है. मजा आएगा भाई. मैं भी चल अब क्वेस्ट करें. ओके प्रणव भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस स्ट्रीम. एंजॉय करो यार क्वेस्ट. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. अब तो बताना पड़ेगा इसको फरीना को. Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? In that case... This place looks deserted. Teyvat has their own laws. Yes. Will Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. भाई ये पियानो नहीं बजाना था भाई. वो जिंदा है मर गई. 69 पुट्टी नो फरीना. मैं भी जा रहा अब ग्राइंड करने. ओके करो. फिर से लिख दिया भाई. ऑरेटर्स मैकेनिक डैनियल्स कार्डिनल. कब जाएगा तुम्हारे क्लिपबोर्ड से? That's Farina right over there. Hello. She really is here all alone. Emma is meaning Stay quiet for now. अच्छा रो रही है ये भी. Should I just give up? This is all. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. ग्राइंड करने नहीं जा रहा. गुड नाइट बोला. कल मिलते. ओके. I'm sorry. गुड नाइट. I'm so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry, but what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Don't worry, Farina. It's just us. So it is you.
you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Furina, give up on your dreams and I became a JS spirit. Damn. Farina, you were crying just now, weren't you? What do you mean, tear stains? I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process. Focus. Who did that Okay. uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marish Dose Phantom are freaking out right next to them too. Chat ignore कर दे, quest पे focus कर. Okay. Stop trying to act tough, Furina. You're actually beyond devastated right now, aren't you? Good night, Final. Good night. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Lol. ढूंढ लिया. Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to. That's against the rules. I can't let them. भाग गई. Farina just ran off. Quick, we have to catch up with. डर के भाग गई भाई. बच गए. Yay. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the... What is this place? Hurry, they're almost here! Fine. I suppose haste is warranted. Okay. Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. This place is not what I call soundproof. चिल्ला रही है भाई. You might want to lower your voice. You're right. Yep, that's a good girl. ये क्या हुआ? What's happening? The ground's shaking. Is it Another disaster's just struck, I suspect. Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this... Yeah, I hope you're right. ये क्या हो रहा है यार? इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि फुरीना ना इग्नोर ना कर पाए कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इनको चाहिए आंसर्स. फुरीना भग जाती है हर बारी. But the people of Poisson, they've already... Has Furina finally reached her limit? Now that she's talking about her actual feelings, she's starting to look far less stiff. You begin to talk. Furina slowly calms down. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. Oh. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways, too, to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing, but all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way.
and the prophecy shall be fulfilled. Heavenly principles. You still haven't given up, right? Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. But that would mean that all hope would disappear. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. हाँ आ गई अपने फॉर्म में Play वापस. the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. ये नहीं सुधरेगी. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. We're running out of time. We can't just go back to square one like this. I have to get more information out of her. You might not have shouldered this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose confide someone. Just share it with me. I am what you'd call a witness. A witness? Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. Dots connect कर लिए इसने. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... There's no time left, please, Furina. Just spit it out. Okay. ये बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा. Shit! अभी आना था भूकंप. ये वो No. भाई वो बताने वाली थी. ये क्या भाई? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. The hell? Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. No way. भाई नहीं. पुरीना पे केस चलेगा. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stake. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice. Yeah. The embodiment of justice आ गई itself. फॉर्म में. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. क्लोरेंट भी रेडी रखी है इन्होंने कि आ लड़ रहे मेरे से. You would draw your blade against a god? इसकी हर बारी पड़ जाती है जब भी कोई तलवार लेके आता है इसके आगे. I see. It seems like you have made up your mind.
ये क्यों लड़ेगी भाई? She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Let's go भाई, start करो. बहुत वेट किया भाई. Will protect you. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eye. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! भाई ये हर चीज को ग्रैंड बना सकती है भाई. Now we're making history. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crime? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? नाविया होगी. The court asks the prosecutor to please take the stand. हैं? हैं? ओ, ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? हम लोग लड़ रहे हैं केस. Like literally. भाई इसका क्या मस्त पागल बना है भाई. ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगी. इसके तगड़े वाले ट्रस्ट इश्यूज होने वाले इस क्वेस्ट के बाद. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. नाविया क्यों? मुझे लगा नाविया होगी यार. एस्ब्रो मिल जाएगी. फुरीना फोसलॉस मिल जाएगी भाई. आई फोसलॉस मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा ये. चले यार सॉन्ग कैसा पता नहीं, सुनना पड़ेगा. We were so close to getting her to tell us the truth and it still turned out like this in the end. Sad bhai, sad. As long as we can defeat Furina in court, we'll still have a chance to figure everything out. True. उसको रोने के अलावा कुछ आता? Damn. अब आएगा मजा. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins, just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. I see. They changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we need. Moreover, according to our understanding and analysis of you, Although ये तो मैं पहले ही पता था कि you would likely प्लान का ही नतीजा है पूरा. and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right.
That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the opera भाई Epiclese, ये सीन एपिक था भाई पिछले आर्कॉन क्वेस्ट का. the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Araneas. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Damn. You're welcome. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. Damn. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for— So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of— That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Sorry about that, we deceived you back there. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Iron Sting. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. You guessed wrong. My mission was to give you one last chance. We hope that you'd share your secret with us before the magic box arrive onto the stage. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. Farina is god of justice or god of drama? It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Bro, इसने literally पूरा take over कर लिया इनका plan. The only thing we can do is now judge the Hydro Archon. Still, I can't help but be a little bothered by that conversation earlier. What did Farina wanted to say? Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. Okay. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paiman see. Isn't this the exclusive interview that... Wait, then that means this document Farina. is a perfect timeline of everything that's happened ever since we... So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. See, why it's a super practical gift. I never would have thought using it this way. Confirm the information in it. Why Charlotte to Devmanus निकली भाई? All right? You defeated the Hydro Archon in the very first नहीं. duel you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right? नहीं, ये मैं दोबारा से नहीं करना चाहता यार. ये बहुत बोरिंग है यार. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy... This is the first time Monsieur Nervilette had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure... A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervilette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest,
That still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Damn. और नहीं है अबे खत्म हो गया ये The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervilette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true. But my charge अबे here is बोला unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Whoa. Whoa. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? भाई अब आ रहा है ना मजाक Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? Charge accepted. एक्सेप्ट भी कर लिया भाई Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? भाई ये थोड़ा सा हिचकिचाए कुछ तो गड़बड़ है There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. अभी भी बचने के रास्ते कैसे ढूंढ रहे भाई ये? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. The people only see you as their Archon because that's their long-held belief. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? I've got to think carefully. What do we know to be special about Farina exactly? Okay. आर्ले चीनों से मिलते ही फट गई थी इसकी भाई You may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Such as occurs. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. It doesn't matter who gave us information. What matters is the... Okay. A curse.
I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervalet? So Furina, instead of an Archon, could you just be a cursed human? Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Oh shit. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. दिखाओ फिर कुछ करके भाई. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Wait, the one trial proved the opposite. Furina actually has no control over the Oratrice at all. फंसा लिया खुद को इसने. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought फंस गई you'd भाई. use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Sure, we can put the Oratrice aside for now, but then Miss Furina, would you give us a brief demonstration of your power as an Archon? Dude. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. भाई मतलब 4 hours और बतक. क्या बात है. A brief demonstration of your power over Hydro should be quite harmless. Surely an Archon can at least match the capabilities of a human with a vision. Dude. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Damn. Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! हैं? कुछ भी. Thus
did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives? Have you ever seen a more magnanimous god? Damn. Isn't that a huge stretch? Audience भी believe नहीं कर रही है lol. Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. भाई ये तो डरी हुई है यार. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? Obviously, Jiria. If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Furina is a self-proclaimed god like me. I see. If we can't prove that she isn't Archon, we can try to prove that she is just a human. Become Lenny's attorney. No. The entrance of Primordial Sea is sealed beneath Forbidden Zone. It was temporarily pushed back, Nivellet power. While exploring River Poison, it became collapsed. Navia fell into water. Normal human being. That doesn't sound right. Shit, click on second. भाई मैं help नहीं लेना चाह रहा था भाई. पर ठीक है. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. फंस गई भाई. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. Super sorry. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is... If Lady Furina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really... Okay.
कहाँ से नीचे है भाई? मेरे को तो रास्ता नहीं मिला था ऊपर चढ़ने का। Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified. What's going on? Is she really planning to... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... ओ हाथ डाल दिया इसने पानी में। अभी तक तो नहीं हुई डिसॉल्व। क्लिक करके देखते हैं भाई। Hey! She actually... I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! मतलब ये फाउंटेन से नहीं है? Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? यहाँ तो ये प्राइमोर्डियल वाटर नहीं है और इसने पकड़ लिया है कि ये असली प्राइमोर्डियल वाटर नहीं, और ये गैम्बल कर गई है और जीत गई है। Miss Siegwien, if you are present, Miss Siegwien, please come forward and attend to the defendant. अच्छा वो भी आई है। Siegwien? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegwien. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegwien. Okay. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. तो इसमें concentration कम है primordial sea water की। Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? क्या गंदा वाला ट्रिक किया इन्होंने फुरीना को। उन्होंने उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन का मामला भाई। Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. Damn, मैं जा रहा भाई। Bye Spy भाई, thanks for joining this stream। मिलते हैं कल। It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe you... But what's really going on here? Farina can't have known the consequences of touching that water as a human. This is too unlike how she really acts, unless it's actually more important for her to keep her okay than save her own life. But hadn't she given up on everything a long time ago? Listen to me, everyone! Please don't give me such cold and disdainful looks! What happened just now didn't prove a single thing! Think about it! How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Damn. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? अब कोई बिलीव नहीं करेगा भाई इस पे। रो पड़ी भाई। Listen to me! I swear, I really am your Archon! भाई और एड्रेस की आवाज आ रही है भाई। डूड मेरा इग्नोर कर रहे हैं कि मिस करे यार। मेरा पूरा कंसंट्रेशन क्वेस्ट में है यार।
तुम्हें भी राम राम भाई। I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Dude. Anything she says at this point will sway anyone who's too stacked against her now. केस की दूसरी In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. डैम, मैं कुछ तो बोल रहा था, मैं भूल गया भाई। क्या चल रहा है क्वेस्ट में भाई? यस, मैं कह रहा था लग रहा है इसकी ब्लैक वाली पर्सनालिटी बाहर आने वाली, कुछ ऐसा। बट We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict? it can't be. Did Oratrice just declare Farina to be innocent? No. The oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilt to be punished via the death sentence. Dude. Death sentence. म्यूजिक कहाँ से आ रहा है इतना इंटेंस एकदम से? भाई तुम लोग कोर्ट के लोगों की आवाज भी सुन सकते हो। मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, सुनो। Dude. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to death by the oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. मैं जस्ट तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने चार्ट अभी के लिए बंद कर दिया। मतलब मुझे नहीं दिखेगी चार्ट, क्योंकि भाई मैं चोरी चुपके थोड़ा बहुत देख ले रहा हूँ, मुझे कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए। तो हाँ, अब जब तक कोई ऐसा सीन नहीं आता जिसमें कोई स्पॉइल होने का डर ना हो, मुझे तुम लोगों के चार्ट्स नहीं दिखेंगे। This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Dude. Yeah, even Fache wasn't sentenced to death by the oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. What's more strange is instead of Farina, the oratrice rendered judgment as Hydro Archon. True भाई, मतलब वो acknowledge भी कर रहा है कि Hydro Archon है ये, और death sentence भी दे रहा है। Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. But वो तो prove हो गया भाई। But now, the oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? अबे तू कहाँ से आ गई वेल्किन वाली औरत?
यही टाइम मिला तो जाने के लिए? Excuse me if I may interrupt. हाँ बोल ले, तू भी बोल ले अब. Is the trial still going? Fremine! Good morning. You finally made it. I assume this means... Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top. With some help from the Fatui. Okay. Is that the first prophecy slate? Dude. Huh. So the ये name क्या है? perfectly arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Don't worry, the mystery hasn't been resolved yet. It's still not too late. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Huh? So what do you see? What is it? This looks like the previous Hydro Archon releasing her divine power, turning oceanoids into human beings. What the hell? मुझे लग रहा था human beings oceanoid बनते हैं उस पानी में जाके. मतलब यहाँ के सारे human oceanoid थे, उनको human बना दिया. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kinda In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. An association between content of slates and the events in real life. Let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Select to check and descriptions on the stone slates to extract key information to them. Okay, कितना tough होगा. You can find scenarios related to the stone slates content and direct recorded. ठीक है. As the verification process continues, the fontaine water level in the menu will rise. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Okay. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater, and this might be the reason that Fontanians can dissolve.
Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. The stone slates in the ruin showing it shows Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. इसको किससे कनेक्ट करें? No. It's Navia. not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Shows scene that is basically prophecy. अबे कुछ भी कहीं भी जा रहा है भाई. Slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontainians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true if we... Easy. They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. ओरिजिनल सिन ये तो नहीं था कि ओशनॉइड को ह्यूमंस बना दिया और ये अलाउड नहीं था इस वर्ल्ड में. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. Wait, मतलब नाविया भी ओशनॉइड है? The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. What the heck? ये तो prophecy past future के events, okay? Huh? Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real human. All Fontainians were originally created by the late previous Shit, Hydro तभी Archon, with Oceanids as their basis. तभी फोरिना भी human proof नहीं हुई. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vache dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. The second slate reveals that the crime of Hydro Archon was her creation of Fontainians from Oceanids. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all.
मुझे पता नहीं था इतना लंबा ड्रैग हो जाएगा, मुझे लगा बस कुछ तगड़ा सीन आने वाला है। स्पाइसी वाले ही लेना, बिल्कुल स्पाइसी। ठीक है, गाइस कैरी ऑन, कैश करता हूँ। Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? The fourth slate depicts the fulfillment of prophecy and it's already widely known. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information used. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon game की as one of the आवाज 7 did not possess the authority क्या to हुआ? create a new गेम की form आवाज of नहीं आ रही? human life. चल तो रही है गेम, आवाज भी जा रही है, कुछ भी। Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power आ of रही this है यार गेम planet's की आवाज। primordial sea. तेरे ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, आ रही है, ठीक है। creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. ये बड़ा कूल था भाई, कैसे आइडल दिखाया है यहाँ पे। And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. Shit. मतलब पहले आर्कॉन ने बिना बताए प्राइमोर्डियल की पावर यूज कर दी और ह्यूमन बना दिया ओशनॉइड से। फिर हेवनली प्रिंसिपल गुस्सा हो गए, तूने मेरा सामान यूज कैसे कर लिया मेरी परमिशन के बिना, और जजमेंट बरसा दिया, मतलब जेनोसाइड कर दिया उनका। तो ऐसे गई थी पहली हाइड्रो आर्कॉन, मुझे लगा आर्कॉन वॉर में गई है वो। So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. भाई कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा। But if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the 3rd and 4th stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. So they are in the right order. What is the 3rd slate supposed to represent then? Dude. मतलब नाविया ओशनॉइड है,
राइसली ओशनॉइड है, लिनी लेनेट ओशनॉइड है, शार्लेट ओशनॉइड है. I guess Archon was में गई थी. I heard कि she was aiding रुख देवता. क्लोरिन भी ओशनॉइड है. Damn. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. It can't Yes, be. It refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now it seems we're the ones making sure it comes true. Dude. इजीरिया कैटेक्लिज्म के टाइम मरी तुनिगी हॉलो में उसके एग्जिस्टेंस से अमृता पूल बना. इफ यू हाँ वही तो जजमेंट क्या यार, हेवनली जजमेंट. पत्थर बरसा दे जोंगली की तरह. इट फील्स लाइक देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? ये भी ओशनॉइड है. If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. तो prophecy का part नहीं था वो. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Wait, could it be? Oh, वो उस बड़े वेल की बात कर रहा है जो अपने चाइल्ड के विजन से देखा था लास्ट आर्कॉन क्वेस्ट में. This eruption was just a small अभी warning भी of बचा है. things to come. We must find the root cause of the disaster. Child, 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 child. That doesn't sound... Humans turn into oceanid. बस ये बचा है. अच्छा चेंज हो गए ऑप्शंस, मुझे लगा वही है. And reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. प्राइमोर्डियल वेल है. अब ये क्या हुआ? ओके क्या हो रहा है भाई? ये वेल कहां से आया भाई? ये न्यूबिलेट से स्ट्रॉन्ग है भाई. शिट
चाइल्ड आ गया भाई, चाइल्ड आ गया भाई। क्या एंट्री है यार। ठीक है, निवलेट ने किया। मार खा के चले गया ये वेल। कोर्ट के बीच में कहां से आया? चाइल्ड भी उसमें गिर गया भाई, चाइल्ड भी उसी में गिर गया। ओके That's right. I'd wager that it's also the one that child saw when he was So young. we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Shit, वो whale इनको खाना चाहती है. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land You far smart, sooner. वो तो मैं भाई. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. What do you mean? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. भाई अब फुरीना कुछ करने वाली है. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Don't tell me मुझे फिर से वो चीज करनी The पड़ेगी. prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. After everything, it still turned out like this. We couldn't fight against fate. Wait, but if it's about fate, Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. hint. Could it be that even if the prophecy will be fulfilled, there will still be a way to save everyone? Did I miss something?
Wait, I forgot about Furina. What was it that she wanted to say to me to that last moment in the giant magic box? Oh shit. What's happening with the aura trees? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Farina! No, I still need answers. ओ भाई साहब, एक मिनट, इसकी ड्रेस कैसे चेंज हो गई? मैंने कभी किसी प्लेबल कैरेक्टर की स्किन ऐसे चेंज होते हुए नहीं देखी भाई. ई You. मतलब जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, फुरीना की कॉन्शियसनेस असली वाली वहां है और ड्रेस के अंदर Sorry. वो ये थी. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor. Nice. Why did क्या you इंट्रोड्यूस deceive किया us? इसने? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Okay. Deceiving the heavenly principles. तो मतलब ये फुरीना का प्लान था कि डेथ सेंटेंस मिल जाए. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up.
But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Okay. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. ये तलवार कितनी सही लग रही है भाई. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity, and the human counterpart I left behind, I named Farina. Exactly वैसी हो रहा है भाई जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable. As her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy, under the curse I placed on her. So long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. Bro, यार फुरीना की ये स्किन आने वाली है. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Damn. I came into contact with Furina's tear. If I remember correctly, tears often contain a being's strongest emotion. With sufficiently strong hydrosensitivity, I can form an emotional connection. Just like I did with the Oceanid at the Fountain of Lucine. Wait, could this be Furina's inner world? Ah, just like Raiden Shogun, जैसे Plane of Ithymia थी. Fossa lost Furina. I feel so bad for Furina. सही में यार, स्टोरी तो एकदम ही अलग है. What is she doing on stage? Wait a moment. That prophecy isn't Furina. That's likely a reflection of her inner self. If I can directly speak to that self, I might be able to easily get what I wanted to know.
Came here for answers. Either way, this opportunity is not to be missed. Let me try talking to her. Okay. क्या मैं पार्टी सेटअप नहीं चेंज कर सकता भाई? मुझे लग रहा है फाइट आने वाली है आगे, लंका लग जाएगी. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rule. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Do not look at me. क्यों? Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. पर जो ऊपर लिखा है वो नीचे से एकदम ही अलग है. Dude. Something of there's no getting through to her. Even in her heart of hearts, she's still playing the role of Archon. What sort of resolve must she have that even in her self-consciousness would have such an defense? What if मैं कैमरा तोड़ दूं? Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Headline still needs a headline. क्या टीम लेके आ गया हूँ भाई मैं? Let the mighty be humble. Bow your head. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! That's all. The spotlight is turned off. Is Farina hard? They must have symbolized eyes of the people on her. Speaking of which, I think I just received some sort of signal. A ticket. When did it end up here? वहाँ पे कौन है? Looks like show's about to begin. In that case, show me how truly you feel. Okay. Scene 1. Before a mirror, Furina. ये क्या हो रहा है? मैं वहां पीछे बैठा था. मैं कहाँ गया? जस्ट एक मिरर है. व्हाट इफ मैं नीचे कूद जाऊं यहाँ से?
Farina. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're... mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's... the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as... a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against... I'm still not sure I understand, but I'll try. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you,
all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial? Huh. How exciting. I'll be looking forward to it. Scene 2, Ascension speech. Okay. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Verena. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Damn. तभी ऐसे एक्ट करती है. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house. Would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be That laugh, exactly why. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose
suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Damn. अभी और एक क्या बात है ओपेरा हाउस फुरीना है ये क्या हुआ Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Nervillet. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. सो जाओ भाई क्वेस्ट खत्म करके सोएंगे If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Arch. No need for fright. And do not take what I said before too seriously. Go now. Do your duties. Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? स्काईवर्ड ब्लेड का क्या करूं लेवल अप करो यार पकड़ा दो किसी कैरेक्टर को उसको चाहिए एनर्जी रिचार्ज आई रियली लाइक्ड फ्रूट पंच डायनामिक बेच दो I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deuteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again. स्काईवर्ड ब्लेड किसको दो डिपेंड अपॉन
क्या कैरेक्टर क्या टीम्स है तेरे पास? मैंने तो बेनेट को दे रखा है अभी। सोच रहा हूँ फुरीना को दे दूँ। Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but all manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. बेचारी 500 साल से यही कर रही है, बेनेट और फुरीना। Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so... Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. पेरा हाउस फुरीना। ईआरकमस वेपन का बस बेस अटैक ज्यादा है तो बेनेट वाइज चॉइस। अभी पैसिव भी कंपेयर करूंगा मैं इसके बाद। खत्म? यस, सीन ओपेरा हाउस फुरीन। ओ डैम, इतने ज्यादा सीन्स हो गए। It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioter. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer. A descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. What is it, good citizen? Are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I?
No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. Damn. Practically, bro, she was forced to act like this. So interminable. Oh. So lonely. Just how much longer? ये हमें वहां पे सुनाई देता है भाई, ओपेरा के बाहर वाले फाउंटेन पे. Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. Sad भाई, कुछ ज़्यादा ही sad हो गए तो. I always thought she's waste of an Archon, but after seeing this, I'm kinda sorry for her. But the point is, she's not the Archon. Original Archon जो थी, उसने अपनी consciousness और divinity निकाल ली उस body से, जो कि body बनाई थी पहले previous Archon ने, और खाली human form रह गया उसका. तो ये Archon थी नहीं कभी, ये normal human थी who was forced to act like an Archon without any choice. उसी चीज का एक साथ टोल हो गया इस पे इतना तगड़ा. I want to tell someone, anyone about this. But would that not destroy all I've done so far? भाई, और ये चीज इसको और सैड बनाती है भाई. बट स्टिल शी सफर्ड. यस, आर्कॉन नहीं है तब भी इसको सफर करना पड़ा. दैट्स व्हाई भाई फुरीना एक्ट्स दिस वे. फिशल जैसी. फिशल भी ड्रामेबाज है, इसको भी ड्रामा करना पड़ा. I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. मुझे 2 मिनट लगा, वहाँ पे सिल्वर लिखा है. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Opera House, Furina, and अब क्या हो रहा है भाई? Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Shit. मतलब जैसे इसने ट्रस्ट किया हम लोगों को, वैसे ही बिट्रे कर दिया यार हम लोगों ने इसको. डूड नहीं, मुझे टाइम में पीछे जाके चेंज करने दो ये. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Shit. That's my voice. Is this some form of weaver within the giant box magic? This is great. I didn't think that this scene would replay in her inner world. Surely I'll find out what she wanted to tell me this time. Shyam bro, welcome to the stream. Share my burden. पर Streamlabs तो भाई इसको कोई वेलकम करेगा. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Streamer busy, so I'll welcome. Okay, bye. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. Dude, अब बहुत बुरा लग रहा है भाई. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes.
In other words, you never belonged here. Bro, उसको लगा she can finally share with someone. But जैसे उसने trust किया धड़ाम धोखा. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina. You shouldn't be selfish. But what if it's really alright, Farina? You've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. और जब इसने ये सोचा हमने तभी धोखा दे दिया भाई. Such an outrageous thing to do anyway. To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows. Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. And all you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. ये यहाँ कैसे आ गया? Fine. जो खुद वहां जाके खड़ा हो गया कि अब पता लगेगा क्या और फरीना ने भगा दिया. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? Who's the best Hydro character in the game now overall according to you? अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं न्यूवलेट को बोलूँगा still. बहुत ज़्यादा ही strong character है. For me, I'll go with Nivlet. Hi-Fi. The sorrow in his voice. वही ना यार. How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Ooh. Oh. मतलब
इसने लिटरली अपनी डेथ खुद प्लान की हुई है. Beg your pardon? Oh, you have it. And to Shit. be more precise, not only will the oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? तो ये मरेगी और फुरीना को फ्रीडम वापस मिल जाएगी अपने. My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the oratrice. इंडेमनिटियम, ये वो पावर है जो लोगों के फेथ से मिलती है आर्कॉन्स को. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. आर्लेचीनो ने यही पकड़ा था भाई उस आर्कॉन क्वेस्ट में कि कहाँ जा रही थी पावर. पीछे सोफा कैसे उड़ रहा है भाई. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. Bro. Mind blown भाई. So the oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. ये तो जोंगली वाला सीन हो गया भाई. ओरिजिनल आर्कॉन इज स्टेपिंग डाउन और न्यूविलेट को सारी पावर दी जा रही है भाई, जो कि वैसे ही होना चाहिए क्योंकि वो ड्रैगन है यहाँ का. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. सी हाइड्रो ड्रैगन ओरिजिनल वो थे भाई, एलिमेंट के अथॉरिटीज. नाम अगर इतनी रात नहीं हो रही होती ना मैं बेटर पुट कर पाता अपने वर्ड्स को. मुझे नींद आ रही है. But... Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. कभी इतना खराब नहीं है. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. बड़ी गलत टाइमिंग है भाई. I must say, had it been within my rights,
I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. जैसी हेवनली प्रिंसिपल आई थी भाई, सारे ड्रैगन सुप्रीम से पावर लेके नोसिस बनाया था उनके पावर का. डूड, मतलब द डेप्थ इन दिस क्वेस्ट मैन, नेक्स्ट लेवल है यार. बहुत सारे लोर को ये लोग कंफर्म कर रहे हैं भाई. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Damn. Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice. And to me, justice is the continuation of that existence, defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Dude, बहुत ही घुमा फिरा के भी हाइड्रा ऑर्गन अपना काम कर रही है. Cry louder, saying wanderer, not me. Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. ताकि अटैच हो जाए भाई फॉन्टेन के लोगों से, और नोसिस जब इसको वापस मिले खुद से बचाए. एक बार इसको अगर नोसिस मिल गया तो आई गेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये प्राइमोर्डियल वाटर को भी रिपेल कर सके, क्योंकि इसको अथॉरिटी वापस मिलने वाली है. क्या बात है यार. I now understand the true purpose behind this position. भाई फुरीना तो गीगा चाड़ है यार. Damn. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. Dude. And I have even attempted to feel as they feel. Why cheese? You are a devious one, Fussalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Wow. Before 4.2, Furina is bratty bitch. After. भाई लिटरली एकदम ही स्टोरी पलट दी यार इन लोगों ने. Okay. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common.
Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. I, Eudex Nuvilette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. I see the value. अभी भी पानी का पीछा नहीं छोड़ेगा ये बंदा. Dude. भाई लिटरली मास्टरपीस है. भाई कितना डिफरेंट है सुमेरो की आर्कॉन क्वेस्ट से. मतलब लोगों की फेथ की पावर इन्होंने बिल्डअप की 500 सालों तक, जिसके ऊपर फेथ हो उसे मारने के लिए, और फिर गॉड की पावर उसको वापस की जहां से चुराई थी. हार्ट्स ऑफ मैन जिसने भी ये स्क्रिप्ट सोची है. कसम से मूवी होती भाई, मैं खड़े होकर सीटी बजा रहा होता थिएटर में. What just happened? Has the death sentence been carried out? भाई great story man. Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? वो मर रही तू सीटी क्यों बजा रहा? For the story, for the writer, डायरेक्टर. भाई इतनी engaging story बनाई है यार इन्होंने. I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. इसे देख. ओ हाँ टूड कितनी आगे की सोची है ये फॉसल हॉर्स ने. ठीक है फॉसल हॉर्स वो सफेद कपड़े वाली है भाई.
उसको पता था ये वेल उनकी डिवाइन पनिशमेंट थी डूड, ये वेल डिवाइन पनिशमेंट थी। डैम, ड्रैगन के पास पावर थी इनको अपोज करने की, तो उनसे पावर छीन ली। तो फॉन्टेन सेलेस्टिया के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है भाई। फॉन्टेन अपोज भी नहीं कर सकता इस नेशन को, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन इज बैक मैन। डैम, We should seize the opportunity to pursue our quarry. Obtain power. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy, its name is the all-devouring narwhal. Finally, भाई। कब से लाइव हूँ मैं? 9 बजे से। 10, 11, 12, 1, 2, 3। After 6 hours. Come with me, traveler. The hour of execution has come. After 6 hours. अब उस वेल की बजाएंगे हम लोग। सिल्वर भी रात में नींद नहीं आ रही, क्या करूं? क्वेस्ट देखो जो मैं कर रहा हूं भाई, ऐसा मास्टरपीस है भाई ये। काश ये मुझे पार्टी सेटअप चेंज करने देते। We're going to execute it? But how are we going to do that? It's huge! I've already done my best to separate the power of the primordial sea. हीलिंग देती रहनी है। Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless कैसे मारूं? from within. I shall share a part of the ancient dragon's power with you. We shall look for an opening together. I can feel its sorrow turning into hostility. Silence! Shower me with praise! Time to shine! ये क्या है? The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. किधर 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 किधर? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं भाग सकता मैं इससे। ड्रैगन अब्सॉर्ब कर सकता है नोसिस की पावर, ड्रैगन से ही निकाली है पावर, उसका नोसिस बनाया है भाई। ओह म्यूजिक, अब आएगा ना मजा। ऑल डिवाइन मैं बाद में पढ़ूंगा इसका नाम, अगर फाइट पे फोकस करते हैं। ओ बफ मिलने वाला है। I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Let the mighty be humbled. Bow your head. May I present? Say cheese!
Silence! भाई इसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग भाई. The heck? ये क्या हुआ? अबे मैं लड़ रहा था. भाई ड्रैगन्स आर्कॉन से पावरफुल है. ये तो ब्लैक होल बन गया. ओह स्कर्क. द हेक, उसे क्यों फेंक दिया वहां पे? कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा भाई. कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. सी मास्टर्स पेट, मैंने ये बात तुम्हें सबसे पहले बताई थी. इट्स लाइक सारी बोली हुई चीजें कंफर्म हो रही है. दिस क्वेस्ट नाहिदा वन एंड कैज़म आर्कॉन. भाई ये क्वेस्ट अलग लेवल पे है. मतलब हर आर्कॉन क्वेस्ट के साथ ये लोग एक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं यार. चाइल्ड को तो ऐसा फेंका जैसे कचड़ा हो बेचारा. भाई साहब दिस इज चाइल्ड यू नो. कहाँ है चाइल्ड? गया वो तो. ये कहाँ है? आर्कॉन क्वेस्ट का पार्ट है ये. वीकली बॉसन है. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. तो सारी मतलब एक मिनट, ये वेल सेलेस्टिया का वो नहीं था पनिशमेंट? That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? In fight inside the veil, it was child. Fight inside the veil, it was child. You fought, but different skin. Okay, ये नहीं पता था मुझे. चलो गुड नाइट. राधे राधे. तुम्हें भी राधे राधे भाई. जीरो भाई. It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. What sort of person would take the all-devouring narwhal as a pet? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have Miss missed the Skirk. point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. Exactly. वो थोड़ी भूल जाएंगे बस हम. राइडन वाला सीन थोड़ी है कि माफ कर देंगे ऐसे ही. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. Nice question. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. भाई इसका डिजाइन कितना अलग है यार. लग रहा है ल्यूमीन को भाई स्टेरॉइड्स पे करके और गुलाबी गुब्बारा फेंक के मारो. His name is Sertologi. हैं? ये कैसा नाम है? Who? I am unfamiliar with that name. क्योंकि ये इस वर्ल्ड का है ही नहीं. Huh. So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? The foul?
Have you heard of the name the Fowl? हाँ वो चिड़ियों को मार के मिलते हैं. चाइल्ड के आर्मर का नाम है. The fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfilnir then? Or Gold Rhine-daughter? ये किसी और गेम के रेफरेंस तो नहीं है? Ooh, that one we've heard. Rhine-daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? The heck? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine-daughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their— Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. गोल्ड नहीं पता तेरे को, मुझे क्यों पता होगा? एलिस के एक्वेंटेंस होगा इसका. अरे वो छोड़ो, हम कौन सी जगह में यार? ये अबिस, मुझे लगा हम लोग पहले अबिस में जा रहे हैं ये, पर ये अबिस नहीं है. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. डूड पता है मुझे आइडिया नहीं था कि लास्ट में स्कर्क रहेगी, न्यूबलेट रहेगा. थंबनेल बनाते मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, पर थंबनेल क्या परफेक्ट बना है भाई स्टोरी के हिसाब से. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. मतलब मेन एक्शन फुरीना, न्यूबलेट और ये. The prophecy that you have been fretting over should now be in full swing. ये राइडन जैसे अलग स्पेस है, प्लेन ऑफ इथाइमिया. सही है भाई. इट इज प्राइमोर्डियल सरफेस ऑफ सी. वो भी सही है भाई. डिफरेंट डायमेंशन. That's little to be surprised about that. It is natural after all. The prophecy will surely come true. We knew this and accepted it. However, Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. nice. Hi, hey Aloo ka juice. Welcome to the stream. क्या हाल चाल? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Prophecy. Only then लगा ही था ये असली में नहीं होगा. will the fontaine be washed away. ये क्या है? डूड, ये गेंशिन ही है भाई. हाँ, प्राइमोर्डियल वाटर उसने खत्म कर दिया न्यूबलेट ने. नाइस. क्या सीन है भाई. एंड फॉन्टेन और ऊपर आ गया. नहीं नहीं नहीं. ओ, रायसली की शिप, रायसली की शिप. All hands initiate emergency rescue. Hurry! Hey, lend a hand. डैम भाई, क्या सीन है. ये ग्राफिक्स देख रहे हो इसके? ऐसा लग रहा है स्ट्रेट मूवी से आया हो. Nivellate the sigma male in every situation. The water's
भाई ड्रैगन्स कभी स्किप मत करना आते हैं तो ड्रैगन्स ओवर पावर्ड है भाई इस गेम में आर्कॉन से भी ज्यादा। पानी वापस कम हो गया। We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Are you alright? We're safe. The prophecy was wrong. Wow. The soil renewed. The Spina Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina Rasula. Old soil can still give birth Wow. to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Did you notice there is still a change in Furina's voice after death of Fossilors? हाँ क्योंकि अब उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी ना उसका एक्टिंग का वो खत्म रीजन वो तो उसने पुटअप की थी पर्सनालिटी। फोसलॉर्स अलग है पुरीना अलग है हाइड्रो आर्कॉन के पर्सोनिफिकेशन अलग है उसकी। हाइड्रो आर्कॉन इज डेड। उड़ने वाली शिप भाई वन पीस की याद आ गई। They might have been big shots from the start. We just didn't meet them in the capacity. Pretty enthralling, huh? The value for these big... Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship. The articles do make me curious about how things will play out. And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Nebulet is Hydro Ardapon, Dragon plus Archon. Nebulet Archon नहीं हो सकता। तुम्हें पता है आर्कॉन बने कैसे थे? ड्रैगन से उनकी पावर ले ली, नोसिस बनाया और जो उस नोसिस को वील्ड करेगा वो आर्कॉन, लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट एलिमेंट। आर्कॉन्स वीक है भाई ड्रैगन के आगे। जब फोसलॉर्स गई ना तो उसका नोसिस की पावर सीधा गई न्यूबुलेट में। देखो कितना क्रैक्ड हो गया भाई वो। Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. और पता है सेलेस्टिया में क्या व्यू गया होगा कि हाइड्रो आर्कॉन खत्म, तब ये रीजन उनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। आगे देख, यस देख रहा हूँ। ड्रैगन इज इन दिस केस ड्रैगन इज स्ट्रॉन्गर नहीं, ड्रैगन को उसकी पावर वापस मिल गई भाई। ड्रैगन्स वर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, उनकी पावर स्टील कर ली थी। गो टू पॉइसॉन। खत्म कर दो यार, सोना है यार, 4 बजने वाले अब। भाई सही में ये क्वेस्ट फीस थी भाई, आई फीस जिसको कहते हैं, आई कैंडी। मज़ा आ गया यार। ओ हाँ, कहाँ जाना है मुझे? भाई बिल्ड भी नहीं थे कैरेक्टर। ठीक है भाई, अब इसमें बिल्ड करके ले जाएंगे अच्छे से। कहाँ जाना है मुझे? अगर नोसिस आ गया मतलब फॉन्टेन भी खत्म, लाइक कांड्रिया। उनकी आइज में, अब तुम समझ रहे हो, सेलेस्टिया या फिर हेवनली प्रिंसिपल की नज़रों में फॉन्टेन खत्म। आर्कॉन गया, नेशन डूब गया, खत्म।
अब वो इसको देखेंगे नहीं नेशन को, और देखेंगे भी तो न्यूबलेट है भाई, ऑल पावरफुल, उनको भगाने के लिए फटुई। Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. No, this is totally At different. work as well. Thanks to everyone. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your reports? I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbor? That would be fine. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go. Huh? You're here too, Clarence? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt It is more 1 hour quest. What do you mean? Forget अभी it. भी बची है I'm quest. sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And वाह, Was it a good shot? Did Paimon look cute? थोड़ी सी बची, फिर ठीक है। हिडन वे पॉइंट स्पॉटेड। डरा देते हो यार तुम तो क्रेजी भाई। addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clorand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. Why what? मैंने कैसे डराया? अरे तुमने वो ऊपर पूछा था ना, शायद तुम पूछ रहे थे कि ये 1 घंटे की क्वेस्ट है क्या या उससे ज़्यादा। मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो कि इट इज़ मोर देन 1 hour क्वेस्ट, कि यहाँ से अभी 1 घंटे की और क्वेस्ट बची है। मुझे लगा तुम वो कह रहे हो। guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. You already knew she was going. Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Nervillet, and he. That's a. In truth, I told him that it. मुझे इनकी कॉन्वो में कोई इंटरेस्ट नहीं है Stay safe भाई। now. And Go to the Fortress of Meripede, ठीक है। तू क्या कह रही है? हिडन वे पॉइंट स्पॉटेड। तो एक तरह से फोसलॉर्स मर भी गई और जिंदा भी है। कितना कॉम्प्लेक्स है भाई। अरे नेविगेशन क्यों नहीं ऑन कर रखा है भाई? ना फिर ठीक है। राइसली, लेनी, नेव और न्यूविलेट से कौन वो करना है? ओके बताओ मत भाई पर, या फिर अब तो आई गेस मेजर चीज हो ही गई है। ब्रो इट इज द स्टार्ट। Too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Is the story that all talk with Nivelet take interest.
समझा नहीं मैं कह रही मैप पे एक वे पॉइंट शो नहीं होता, वो मिला मेरे को। अच्छा पूरा लिखा कर। इसकी टोपी गिरी क्या? रस्सी पे मारू तो नहीं गिरी। यार और वर्ल्ड क्वेस्ट आ गया यहाँ पे। चाइल्ड क्या होगा अब? चाइल्ड सेफ है, चाइल्ड सेफ है। Looks like you've been missing us. मास्टर के साथ है वो और पेट के साथ खेल रहा है। No need to thank. Of course. All right. हमें चाइल्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके विजन की टेंशन लेने की है। विजन का क्या करो उसका? क्या हो रहा है ये? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her. Sir, please. But it looked. No, I just. Now, I might not look it, but I actually... The boat that brought... Still, if I'm not... I have to apologize, but that ship is Really? You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or... Did you really have to use the word couple? Well, then, 2 solo Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came पेट के साथ खेल रहा है लॉल। कौन खेल रहा है पेट के साथ? Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty... sure. Come on, Miss Siegeween, over this... Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the... Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind. You're too kind, sir. Pet child. हाँ वो पेट अच्छा got it. Not that you would want that. मैं वो पेट पढ़ रहा हूँ भाई। पेट के साथ खेल रहा है वो। यस मैं पेट पढ़ रहा हूँ। I see. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad... Oh! What change can there be? The fortress will keep chugging along, and as to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. ये भी सही है भाई। Good. In that case, let's call it a day here. You know, Lenny and Child are all, huh? Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. Till next time, everyone. 6-7 hours continuous streaming का टोल कह सकते हो। There'll be a next time. पर मजा आया यार। मजा आया यार आर्कॉन को इस करके। Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory. All right. Last stop, the docks. जर्नी खत्म। चले ना अटलान अब। इतनी जल्दी कहाँ? अभी 0.8 तक वेट करो। अच्छे से पक जाओ इस मैप से। इतना वेट कौन कर रहा है भाई? Navia mentioned that she stayed... Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte. Would you like a magic pocket? What sort of gadget? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? ये भी सही है भाई।
Is this what you meant by I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. ये तो शर्मा गया भाई. ये क्या डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे? You sure are working hard to help Fermine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later... That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Lynette, could you come... Got it. Honda naughty हो रहा है. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. Father Damn. says that you... That's all right. Oh, I get after Lady for... A diplomatic... Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. Well, that's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? नोसिस चला गया फटुई को. मैं सोचा था नोसिस खत्म यार. I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Nervillet has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Nervillet knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. Well, I guess I can now call him one of my war buddies. उसके विजन का क्या हुआ? विजन अभी भी हम पे ही है. Diplomatic gift. So shocked by such a simple switching of sides? Knave. Knave, yes, knave. Father! Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers. Yes, don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Will you keep up to your Well, that position? depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. हाँ मुझे लग ही रहा था. इसको देंगे. Actually, I just remember something. Please help us deliver this. A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. Finally, vision की सिरदर्दी खत्म. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Look, Carlo, welcome to the stream, भाई. क्या हालचाल? Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze Bye. is quite pleasant. Charlotte की फट गई भाई. Walk while the weather remains so agreeable. Hi and bye. Good night. Good night, lo Carlo भाई. Thanks for joining the stream.
Farewell, father. बस सोने जा रहा था, ऑनलाइन देखा तो हाय बोलने आ गया। क्या बात है। गुड नाइट लगा लो भाई। Oh, she has such an intimidating presence. इंटिमिडेट हो गई ये। Dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This will be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. भाई बट गुड मॉर्निंग हो रहा है, वो भी तो है यार। Here, traveler. ये क्या निकनेम रखे हैं भाई तुमने एक दूसरे के? सुप्रभात, तुम्हें भी सुप्रभात। Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see how Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. कौन कह रहा था पानी पे चल के दिखाओ? ये लो देख लो, ऐसे चलती है पानी पे ये। वेट, इसके पास नोसिस नहीं है तो ये हाइड्रो एलिमेंट कंट्रोल कैसे कर रही है? विजन है इसके पास? कहीं पे विजन दिख रहा है तुम्हें इसके पास? देयर इट इज। अभी नॉर्मल ह्यूमन है। कोकोमी अपग्रेडेड भाई, कोकोमी अलग ही अलग। अभी भी क्लियर नहीं है क्या है हाइड्रोनोसिस या विजन, या फिर आई गेस आर्कॉन को इसके बाद खुल जाएगा ये। जहां तक मुझे लग रहा है विजन। वहां पे कैसे जाऊं मैं? नियर नेक, हाँ देखा मैंने अभी। भाई फुरीना जब कूद रही है वो इंद्रधनुष बना रही है पैरों से। ये और कोई नहीं करता, बाकी सब नॉर्मल। ये गुब्बारे बना रही है। भाई कितनी छोटी डिटेल है ये, पर भाई मजा आ गया देख के। ब्रो ऊपर से जाओ, मतलब ड्रेस चेंज करो। क्या बोल रहा है भाई ये बंदा? मुझे मेरा नया टाइम पास मिल गया इस गेम में। अब देखो तमाशा। चलो खत्म करते हैं, कुछ बहुत मस्ती हो गई। अबे यार कुछ तो होगा यहाँ से। रुको, मैं यहीं से जाऊंगा। यहाँ से भाई जहाँ चाय वाय रहा है भाई हम कर लेंगे। यहीं से ऊपर जाएंगे हम। वो देखो मिल गया रास्ता। ओ बोरा न्यू मिलेट। क्या कर रहा हूं मैं भाई? मैं एक चैलेंज करोगे? डिपेंड्स अपॉन योर चैलेंज ब्रो। हाँ बस थोड़ा और पहुंच जाएंगे यहाँ से। सी क्या बोला था मैंने, मैं यहीं से जाऊंगा। कट सीन को मत देखो, मैं यहीं से आया हूँ। So, you really are here, Neverlet. Paimon didn't think you were
तक पहुंच जाता। देखो वैसे ही पहुंचना था, वैसे ही पहुंचना था, पर मैं अपने रास्ते से आया हूँ भाई, हम रास्ते खुद बनाते हैं। Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. फाइट शोगन विद ओनली वन कैरेक्टर है नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा यार, अभी मैं बहुत ड्रेन डाउन हूँ। I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may Yeah, on second thought, I haven't had the time to before. निवलेट से सोलो करेंगे शोगन। ओ ये वो वाला सीन है जब क्वेस्ट खत्म हो जाता है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग लाइन्स आती हैं वॉइस की। It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Nivelate sighed softly before telling you the truth concerning what saw that day. Fossil was deceived, heavenly principle, and used for an endless performance to save Fontaine. So that's what happened? I only saw Furina's part myself. Fossilor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. Damn. तो इसने ओशनॉइड को लिटरली कन्वर्ट कर दिया ह्यूमंस में, जो कि ओशनॉइड की विश थी। भाई फुरीना क्या मस्त काम करके गई है यार, मतलब फोसलॉर्स। In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Dude. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. God, वही तो यार। You could say that it was at the moment that the Fontanians were truly born. Yeah, and in a manner of speaking, Fossilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know. Yeah, ये स्क्रीन चाहिए थी रुको नोसिस के बारे में। Oh, that's right. They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something. Do you know the dress Fossilors wears is of old Archon? क्या बात कर रहे हो? Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. Shit, इसलिए Gnosis अलग कह रही थी तू। As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. Nice. Considerations. Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. The next stop नहीं यार, इतनी जल्दी मत खत्म करो यार, 4.2 ही है अभी ये। About the initial verdict that was passed on Child. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the Oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Fossilor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Fossilor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. हाँ भाई सही बोल रहा हूँ। Okay. वॉइस लाइन है कोई इसके रिगार्डिंग? They had also transformed Oceanids?
life has always flowed like water. Do you recall how Fontainians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. क्या बात है? Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. यूफोटेबल का जो आने में आ रहा है फॉर आर्कॉन शोड ऑल आर्कॉन. क्या? कहाँ से ला रहे हो तुम अपने ये इन्फो? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Fontaine's future. वही बचा है. About that. Risley said Farina has already left. What's that all about? What? फुरीना कहाँ गई? With the whole Electro Archon dead and A near her. Did they reveal their faces? क्या बात कर रहे हो? हाँ, यूफोटेबल का जो एनिमे आ रहा है फॉर गेंशिन शोड. पता है गेंशिन इम्पैक्ट का मतलब है गॉड्स के एक्शन से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है. गेंशिन मतलब गॉड्स की कुछ करनी. एनिमे की स्टोरी अराउंड गॉड्स है कि दूसरे वर्ल्ड से गॉड्स हैं और उन्होंने टेक ओवर कर लिया ये वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के गॉड्स को हरा के. मतलब काफ़ी जिसने भी स्टोरी बनाई है भाई, हार्ट्स ऑफ उस बंदे को. नो फेसेस नहीं हुए. सोर्सेस बताओ अपने. फुरीना के पैर को पार्टी में, हाँ पार्टी में धक्कों की इफेक्ट नहीं है. मतलब Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. चलो कुछ तो अच्छा हुआ. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? ये भी सही है. दैट मेड, हाँ वो तो पता है यूफोटेबल. पर ये कहाँ से ला रहे हो तुम अपने सोर्सेज? कोई पोस्ट है, कोई वीडियो आई है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं. देखो कि इफेक्ट नहीं है. फुरीना के पैर जो पार्टी में, देखो कि इफेक्ट नहीं है. ओह अच्छा, पार्टी वाली स्क्रीन में गॉचा. जैसे नाहिद और राइडन का है. But this power अभी देखता and हूँ. this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. वीडियो आया है यूफोटेबल के चैनल पे. ओ देखेंगे उसको.
I have no more questions about next step in my journey. You'll soon be heading to Natlan, I presume? Yes. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. The land of dragons. As far as the I'm aware, people and dragon live Natlan together. can be said to be a nation of dragons. Dude. काफी फ्रीकी है यार. डायलॉग आने से पहले मैं कैसे गेस कर रहा हूँ. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. तभी नाटलान का कोई एनपीसी नहीं दिखता. ड्रैगन्स है वहाँ पे और जो ह्यूमंस है शायद उनको नहीं पता. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. 3-4 monथ पहले आया था. ओके, मैंने कैसे नहीं देखा. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. The captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. खत्म by Archon I will quest. tell you the truth as I know it. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you... No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? You know, we are not even powerful as an Archon. Why though? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Okay. Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? Whoa! What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. Huh? It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains of third descender on your person. Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Okay. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. Okay, objects. हाँ यार, जहाँ जहाँ नोसिस है वहाँ उस नेशन में कुछ ना कुछ हुआ है भाई. This really confusing, too much confusing. No, it makes sense, perfect sense. To live in itself is a blessing. But once a person dies,
The bonds he once had with this world shall all turn to curses. The life is in itself a blessing, but once a person dies, bonds he once had with this world shall all turn to curses. Dude. ये लाइन कितनी खतरनाक है भाई. कितना डीप मीनिंग है भाई इसमें. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. बेचारा चाइल्ड फटुई के लिए भी काम कर रहा है, स्कर्क के लिए भी काम कर रहा है, घर के लिए भी काम कर रहा है. बड़ी मेहनत कर रहा है भाई वो बंदा. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. मतलब थर्ड डिसेंडर ने नोसिस बनाया है. The remains of the third descender? थर्ड डिसेंडर्स के रिमेन्स नोसिस है. That's what the gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. तो थर्ड डिसेंडर मर गया, उसकी बॉडी से नोसिस बना दी आर्कॉन्स को पावर देने के लिए. ये तो सी नहीं हाँ क्या लिख रही है भाई, क्लियरली लिख. मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ. She said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. सही बात है. A descender, she means one of them. I am fourth descender. For me, this information means two things. One, that the gnosis are related to descenders, and two, that the one who came before me has already died. Sheesh. Descender wala part is confusing. Me sleepy, don't expect clear at this time. Chal theek hai. I guess that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Yes, उसको जरूरत ही नहीं एलिमेंट्स की, मतलब विजन की. ऐसे एलिमेंट काम करते हैं इस बंदे के साथ. Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? भाई अब चलता हूँ, तैयार वगैरह होना है स्कूल जाने के लिए. ओके बाय. थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस स्ट्रीम. No, let's not think about this stuff right now. मिलते हैं बाद में. Creepy, comparing the traveler to the dead third descender and all. Don't worry, I won't die so easily. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. Bye. Bye. मिलते हैं कल. Alright. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god. Silver and she rep. suffered through all those years
जिंदा हूँ मैं भाई. Was that really what she wanted? Paimon actus there and avoided it. I suppose that would be the mystery of a god's will. Hey, worried about this. Can you understand the will of the gods? I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Now we are a servant. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Wow. भाई बहुत ही प्यारा आर्कॉन क्वेस्ट था यार. She human. भाई इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही यूनिक है. ये यार हम पे तो है ही ना. ये आई गेस इसके स्टोरी क्वेस्ट के बाद सिल्वर और दादाजी रे ये ना उसकी स्टोरी क्वेस्ट के बाद खुलेगा यहाँ पे. मैं सोता हूँ यार. Parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमें मिली है आर्कॉन वो हाइड्रो आर्कॉन है ही नहीं. ह्यूमन है ये. सो जा यार बेचारी. जा जा मैं भी सो जाऊंगा अभी. 7 hours 15 मिनट की स्ट्रीम जी जी भाई. आर्कॉन क्वेस्ट खत्म किए बिना नींद नहीं आती यार मुझे. चलो फिर दैट इज इट फॉर द स्ट्रीम. अब मैं निकलता हूँ. इतना काफ़ी है भाई. बाकी कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे हो आर्कॉन क्वेस्ट के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ सकते हो कल की स्ट्रीम में. तब मैं ज़्यादा बेटर फॉर्म में रहूँगा एक्सप्लेन करने की. मैंने कहा था बहुत लंबा है भाई. ये बतख ने इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया भाई? बतख ने सुबह शुरू करे ख़त्म भी कर दिया था भाई आफ्टरनून तक. मेरा दिन चला गया. इसमें स्पीड रन मारा होगा भाई. बहुत सही स्टोरी है भाई. तो चलो विद दैट अब मैं स्ट्रीम को ख़त्म कर रहा हूँ. सो जाओ सब जाके. और भाई इतनी रात तक जो रुके हैं भाई थैंक्स अ लॉट. आप चलेंगे मिलेंगे कल. क्या दूँ इसको? पाइप फार्म कर ले जैसे मैंने किया वो पकड़ा दे. नहीं तो वो जो वेपन तेरे स्काईवर्ड वाले इसको भी दे सकता है टेम्परेरी जब तक तू पाइप फार्म ना कर ले या तुझे आलस आ रहा हो तो. नहीं तो फवोनिया सॉर्ड भी अच्छी है इस पे. पर तेरे पास वो एक ही है आई गेस. ऑलराइट अब हम लोग मिलेंगे कल. गुड नाइट.